key event information, including schedules, prizes, results, news reports, player bios, tiebreaks, and more. Even compete by voting for your predicted results. Explore chess.com/events today on web or with our iOS and Android apps and experience chess like never before.
धुलाई करी ओपोनेंट्स की और आज होगा डे 2। वेलकम राकेश जी, वेलकम साहा जी। साहा जी, क्या फीलिंग आ रही है आज, कैसा लग रहा है? क्या आज भी इंडिया बस चलता जाएगा ऐसे ही? I think so, yeah. I mean, I know we're playing Iceland today, but I think in every single board we are like up by at least 200 points. So I think we are heavily packed. So I think आज का दिन is looking really really good. What do you think, राकेश भाई? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स इंडिया वर्सेस द वाइकिंग्स, सहज भाई जैसे आपने बोला, एंड डेफिनेटली बिग बिग फेवरेट्स। और कल क्या ही बढ़िया जीते इंडिया, 4-0 से जीता है भारत कल, एंड आई होप आज भी रिपीट हो। चैट, आप बताइए आज का प्रेडिक्शन, और टिको भाई आपको क्या लगता है? भाई बहुत मजा आने वाला है। एंड एग्जैक्टली क्या होगा, चैट साथ में बैठे प्रेडिक्ट करते हैं भाई। नीरी भाई, एक बार ना पहले वुमेन सेक्शन की पेयरिंग और फिर ओपन सेक्शन की पेयरिंग दोनों दिखा दो, ताकि हम लोग गेस कर पाए कि भाई कौन कितने पॉइंट्स मारने वाला है। चैट, आपकी वाइब क्या आ रही है? एक बार इंडिया ओपी स्पैम कर दो चैट में जल्दी से। लेट्स गो एज वी हैव द ओपन सेक्शन पेयरिंग इन फ्रंट ऑफ अस। भाई गायब भी हो गई, देखा भाई, इतना डर रहा है। ओबीएस आ चुकी है वापस। एंड साहज भाई, राकेश भाई एंड चैट, भाई राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, राइट लेफ्ट राइट देखो, बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल को अच्छा लग रहा है यार। देश हमारा प्रगति कर रहा है। सहज भाई, क्या प्रेडिक्शन है आपकी स्कोर की? एक सेकंड, देश हमारा क्या कर रहा है? अरे यार, आगे बढ़ रहा है। एंड क्या आगे कैसे बढ़ नहीं रहा है? नहीं, you used a word. I नहीं would नहीं, वो like to वर्ड just नहीं नहीं, आई थिंक बाय द वे चैट, इंपॉर्टेंट न्यूज, गुकेश इज बैक इनटू द टीम। आज प्रग रेस्ट करेगा। आई थिंक कल विदित रेस्ट कर सकता है, एंड परसों हरिकृष्णा, एंड वील सी हाउ इट टर्न्स आउट। बट फिलहाल के लिए गुकेश बैक फॉर हिज फर्स्ट गेम, एंड ही विल हैव द ब्लैक पीसेस अगेंस्ट अ 2550 जीएम। एंड राकेश भाई साहब, हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आज 2500 से मैच पड़ सकता है, एंड पड़ गया राकेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल, गुकेश प्लेइंग 2500, अर्जुन इज प्लेइंग अ लेजेंड, और बहुत सारे ओलंपियाड्स खेले, अराउंड लगभग 17-18 ओलंपियाड्स खेल चुके हैं स्टेफानसन। वीडी विद द ब्लैक पीसेस अगेन, एंड लास्ट में हरिकृष्णा प्लेइंग 2450 ओवरऑल। सहज भाई, heavy favorites on all boards. Your score predictions, please. So, you are absolutely right in saying Stefansson is the veteran of this team for sure. 17-18 Olympiads से खेले होंगे इन्होंने. And I think Gretarsson also, if I'm not mistaken, is also a veteran from the Viking team. I think I would assume he has played many Olympiads as well. स्कोर की बात करें, देखो 4-0 तो मुझे फीलिंग आ रही है, बट समहाउ मुझे लगता है 3.5 हाफ भी हो सकता है, क्योंकि even though हमारा डिफरेंस बहुत ज्यादा है, these players when they reach a certain level, of course they are they are not easy opponents, so to speak. तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक बोर्ड पे ओपनिंग के बाद वो सॉलिड सी पोजीशन आ जाए, and the person is able to hold it. As usual, I would say कि जिनके ब्लैक हैं, I would focus on those boards, क्योंकि वहां पे अपसेट्स के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं यूजुअली. तो आई वुड से 3.5 हाफ या फिर 4-0. दैट वुड बी माई लाइक ओवरऑल प्रिडिक्शन. साहिल भाई, व्हाट डू यू थिंक? आई एम गोइंग इन 4-0। मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-0 से नीचे हम आने ही नहीं वाले, बिकॉज अभी क्या है कि गुकेश और हमारे जो टीम प्लेयर्स है ना, देयर इन सच ग्रेट फॉर्म कि मतलब दे आर गोइंग टू क्रश इट। एंड ऑल्सो जो डे 1 था, जहां पे हमने देखा वेस्ली सो का ड्रॉ हो गया, बाय द वे अरोनियन तो बाल बाल बचे हैं, मतलब बाल्टी पानी की सर पे गिरने वाली थी, वो हट गए। एंड इतने सारे प्रॉब्लम हुई बाकी टीम्स को, ममिदारोव का ड्रॉ हुआ एंड सो ऑन। नाउ ऑल दीज प्लेयर्स विल स्टेबलाइज, दे विल टेक इट अ बिट मोर सीरियसली। कल वो शायद थोड़ा रिलैक्स थे, आज अपसेट्स होने के चांसेस और कम है, एंड आज इंडियन टीम 4-0 करेगी। चैट, अपना स्कोर एक बार फिर से लगातार स्पैम कर दो। 4-0, 3.5 हाफ, 3-1, 2.5 हाफ, 2-2, 1.5, 2.5 वाला, इसको तो बैन ही कर देना, जो भी है स्कोर स्पैम कर दो। एंड एज यू कैन सी, हमारे सामने कैमरास भी बहुत जल्दी थे। एंड वुमेन सेक्शन की पेयरिंग्स, भाई क्या मजा आएगा। हरिका इज बैक इनटू द टीम, वो भी एक रेस्ट करके वापस, एंड नाउ वैशाली इज द वन हु इज रेस्टिंग। एंड सहज भाई, Vantika is there. She has a very good opportunity to get her confidence back. Divya and Tania as well. And पूरी टीम ऐसे shuffle होती रहेगी until you figure out the perfect combination. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई थिंक वंतिका का बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने, बट आई थिंक टुडे शी इज प्लेइंग अगेंस्ट अ 2150 opponent with the white pieces. So I feel like this is definitely something that we can I feel like she should be able to convert very very easily, क्योंकि white से 200 point का difference. I mean, I think theoretically she should not be having any troubles, but of course we'll see how this game goes. By the way, Harika is playing, I believe this is Yulia Movsession. This is Sergei Movsession's wife, if I'm not mistaken. अरे Correct, वाह, correct.
Czech Republic having two players जिनके husbands grandmasters हैं. Teresa Rodstein also married to Israeli GM Maxim Rodstein. तो दो players हैं वहां पे जिनके पति ग्रैंड मास्टर्स है. बट आई होप वो ज्यादा हेल्प ना करे उनको. Good point, भाई. Good point. By the way, उनके पति को हेल्प ना करे. Anyways, by the way यार कैमरा से हमें दिख रहा है प्लेयर्स एडजस्ट कर रहे हैं. कल हमने मोमेंट मिस कर दिया था एंड टुडे वी आर नॉट गोइंग टू मिस इट चैट. बिल्कुल भी नहीं. आज हम देखेंगे. बड़ा मजा आएगा. एंड या वी आर वेटिंग फॉर द Pico bhai, you can see Iceland की टीम है. Just Gukesh, there you see top left corner. Gukesh ने हैंडशेक कर दिया and he is on the board. बाकी के तीन इंडियन out of action. Pico bhai. अरे गुकेश भाई एंड यू नो दिस इज अमेजिंग. ही विल बी द फर्स्ट वन टू अराइव, लास्ट वन टू गो. सारे पीस एडजस्ट करके वेरी रिस्पेक्टफुल एंड आई एम श्योर द प्लेयर्स आर राइट बिहाइंड हिम. अभी आएंगे सारे के सारे. देखो कैसे कामली ही विल टेक अ सीट. ये दोनों कैमरास में लैग है भाई 5 सेकंड का 3 सेकंड का. गुकेश लग रहा है कि बट ओके इट्स अमेजिंग मैन. बड़ा मजा आने वाला है. एंड उनके ओपोनेंट्स यार कितने नर्वस होंगे ना भाई. लाइक दे आर प्लेइंग सच अ स्ट्रांग इंडियन टीम. इट्स नॉट आई मीन दे लुक वेरी टफ राइट नाउ बट कल हम जैसा अर्जुन की मूव के बाद देखा द नर्व शो अप. एंड यू नो हमारे एडिटर्स ने एक बहुत एपिक रील बनाई थी जहां पे अर्जुन के जो ओपोनेंट का बगल वाला बंदा था ही नोटिस्ड कि भाई क्या कर रहा है भाई, तू मार क्यों नहीं रहा भाई, ये फ्री का पीस क्यों दे दिया वापस. सही में that was epic. पर you know, I think Arjun का I still maintain. By the way, ये thumbs up क्यों आता रहता है? I feel like there is like a voice command जिसके साथ वो thumbs up आता है. But anyways, you know, I feel जो भी you know sacrifice जो कल जो अर्जुन ने किया था, I know it was a bit risky, but I still feel like based on the situation, I think it was very very well calculated and well understood. तो मुझे नहीं लगता कि there was ever any moment जहाँ पे अर्जुन was ever in any trouble. So I hope we can maintain that consistency even today. So yeah, let's see what happens. Yeah. But I think Sahaj, some questions in chat for you. Like Hitesh bhai पूछ रहे why Prag and not Harikrishna are resting today? Any insights there? I don't have any like insight for this, but I think to be honest, the opposing team, I mean they are strong, but I don't think unke liye it matters much whether we put Praggnanandhaa or whether we put Harikrishna. I think they're both extremely strong players who are very well capable of, you know, scoring a 4-0 upset today. So let's see what happens. And you know, I think it's also important to make to have the players get some rest. You know, पहले राउंड में हमने गुकेश को रेस्ट दिया था, सेकंड राउंड में प्रग को रेस्ट देंगे, मे बी थर्ड राउंड में इट कुड बी विदित, मे बी इट कुड बी समवन एल्स, बट इट्स नॉट अ गिवन यार कि किसको रेस्ट देना चाहिए बेस्ड ऑन द रेटिंग्स. ऐसे हो तो मतलब रिजर्व्स कभी भी नहीं खेलेंगे, you know. But of course each player has a, you know, a very very important role to play, and I think we will see that in this match itself. I'm super confident. And the main thing is कि they will keep resting each player in every round and they will see कि कौन कितनी फॉर्म में है. That's very important to judge. So आज जैसे कल बोर्ड 1 रेस्ट पे था, आज बोर्ड 2 रेस्ट पे है, कल शायद वीडी को रेस्ट मिलेगा and then Harikrishna, and then they will decide कि based on the 4 rounds कि भाई critical rounds में US के साथ कौन खेलने वाला है, चाइना के साथ कौन खेलने वाला है. So it's going to be based on the form as well. And there we see a chat clock adjust हो चुकी है. गुकेश से हैंडशेक हो रहे हैं लोगों की, क्या पता कोई फैन ही हो भाई, who knows, you know कि oh my god congrats for the world championship, right? Because कई लोग होंगे ऐसे वहां पे. अरे और लोग आ गए शायद गुकेश के. Must be. I mean, he's a star, yeah. He's a star. He's, you know, it must be so nice. Also, Yeah. Olympiad की vibe अलग होती है ना. I mean, you're just walking around and you see 2700s just chilling. अभी मैंने कुछ टाइम पहले लेक्वांग लियम को देखा था, like on the camera itself. It was, you know, I think this is so normal here. Yeah, and you see, I think एक player from Djibouti, एक African country, वो भी आके गुकेश से मिल रहा है. सच में यही है ना ओलंपियाड का मजा. like these like amateur or semi-professional players can meet their idols, their stars under one roof. Yeah, exactly. Why exactly? That's why Olympiad is such an important event. I think I think to have. I mean, सबके लिए यार, सबके लिए. I mean, I wish, you know. I mean, you know, कुछ करते हैं राकेश भाई. जब आप आओगे ना, हम जाएंगे एक बार, घुस जाएंगे एक बार. बिल्कुल. And chat, there are few updates. आज Magnus Carlsen आज भी रेस्ट पे है, but we do have Caruana joining the US team on board 1. So and Ding. Yeah. Ding Liren, world champion, makes his debut for the Chinese team as a world champion. So वो दोनों games
बहुत क्रूशल रहेंगी राकेश भाई, देखने में मजा आएगा कैसा खेलते हैं कारुआना, बिकॉज यूएस टीम को उनकी फॉर्म में होने की बहुत जरूरत है। अगर वो पिछले ओलंपियाड जैसा खेले जहां पे वो उतनी फॉर्म में नहीं थे तो ऑलरेडी दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर द यूएस टीम। एंड डिंग की फॉर्म पे तो हमारी खूब नजर रहेगी, एक्स्ट्रा नजर, अभी के लिए ही नहीं बल्कि नवंबर के लिए भी। तो क्या मजा आएगा। एंड देखते हैं भाई बाकी प्लेयर कहाँ है, वेयर इज हरिकृष्णा, वेयर इज, वी आर वेटिंग फॉर देम, एंड बोलते ही आ गया कोई और। I think that's Arjun. I think we just saw Vidit as well, and I think Hari would be joining right after. Yeah, yeah. You see Harikrishna bottom right corner there. और बहुत मजा आने वाला है वैसे टिक्कू भाई आज। एंड एंड चैट, मैं रिसेंटली नेशनल चैंपियनशिप कवर करने गया था, मैंने देखा इतने लोगों ने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया है जस्ट बिफोर द गेम, लाइक विदित हैज स्टार्टेड अ ट्रेंड। सो लेट्स कंटिन्यू द ट्रेंड एंड जैसे ही वो आएगा वो मोमेंट कैप्चर करना बहुत जरूरी। एंड यू कैन सी सो मेनी प्लेयर्स, ओ माय गॉड यार, कितने लोग, कितने सारे प्रोफेशनल्स हैं, इट्स इनसेन। भाई कल ढूंढ रहा था मैं इंडिया का फ्लैग, अगर वो पिछले वाले ग्राफ इस पे जाए तो दिख गया, ये वाला नहीं, अगर फुल सेंटर वाले से अगर देखेंगे तो वी कैन सी द इंडिया फ्लैग। आप देख सकते हैं लेफ्ट में सेकेंड रो, लेफ्ट हैंड Oh, I see. साइड, एकदम हाँ आइसलैंड के वहां बाजू है। में ना, आइसलैंड के बाजू में, हाँ आइसलैंड के बाजू में आई कैन सी करेक्ट इट। याप करेक्ट। याप याप। एंड सहज भाई, टिक्को भाई और चैट, मजा तभी आएगा जब भी 22 सितंबर को क्लोजिंग सेरेमनी के इंडिया का फ्लैग हॉइस्ट करेंगे और जन गण मन बजाएंगे वहां पे एज द गोल्ड मेडलिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, दैट विल बी द ड्रीम। एंड देखते हैं चैट, एंड यू कैन सी विद इट मेडिटेटिंग ऑलरेडी। एंड हमें पता है गुकेश भी कई टिक्को बार भाई क्या करते हैं भाई। आपने अपने तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया? हाँ। भाई ये तो मोस्ट ऑब्वियस फ्यूचर इन द वर्ल्ड भाई। भाई ओपोनेंट थोड़ी सी आंख साफ कर रहे हैं, थोड़े स्ट्रेस में ऑलरेडी लग रहे हैं, अरे यार सोता रहता कहीं हार ही ना जाओ वैसे भी। देखते हैं, आई थिंक इट विल नॉट बी इजी दो, आई थिंक जितना हम ऐसे ऐसे मजाक कर लें, बट दिस वन विल नॉट बी एज इजी, बिकॉज यू हैव टू नॉट फॉरगेट कि सामने में से चार में से तीन प्लेयर्स तो ग्रैंड मास्टर्स हैं। So करेक्ट। they can easily, if they have, especially if they have the white pieces, so they can easily, play a equalish line जहाँ convert करना, as black you sometimes don't even want to take the risk because you feel like ठीक है black drawish equal है। So let's see how they kind of push। And Sahaj, मेरा सवाल आपसे एक है कि from the Indian team's perspective, let's say you're having black pieces, ठीक है, is there a Yes. difference between like a score of 3-1 and 4-0 at this point? Because round 2 aa chuka hai. Would the players go aggressively over a 4-0 score, or if they're getting 3-1 or 3.5, they will take it and say, I think that's a good day? I think that also depends कि who the player is, but I think knowing our team, I think सारे के सारे players will be extremely aggressive from the first move itself. So I think this is going to happen. No matter what. क्योंकि हमारे प्लेयर्स एकदम अगर ड्रॉ भी चाहिए होगा तो आई मीन दे विल स्टिल प्ले फॉर अ विन। आई फील ये हमने गुकेश के साथ देखा, प्रग के साथ देखा, विदित के साथ देखा, सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन आल्सो। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, बट आई फील जो बोर्ड के जो पॉइंट्स हैं दे मैटर लेस देन द टीम पॉइंट्स। ऑफ कोर्स बोर्ड पॉइंट्स जो है वो एकदम एंड में मैटर करेंगे, बट शुरुआत में जस्ट टीम पॉइंट्स आर द वन दैट काउंट द मोस्ट। सो 3.5 half or 4-0 have very little effect, I think, on the overall standings of the tournament. And एंड आई kitna, थिंक पहले ना गोल होगा कि 2.5 कर लो, फिर उसके बाद जिसको जितना पुश करना है या मस्ती करनी है वो कर सकते हैं। Right, right, right. and यहाँ पे कोई टाई ब्रेक नॉकआउट नहीं है, सो टाई ब्रेक्स मैटर। सो अगर आप स्टार्टिंग में कोई पॉइंट ड्रॉप कर दो राकेश भाई, दैट विल बी रियली बैड फॉर योर टाई ब्रेक, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड दोस माइट कम इन हैंडी। एंड हमको पता ही है कि भाई लेटर स्टेजेस में ना कोई टीम 4-0 से नहीं जीतने वाले हो आप, तो यही चांस है पहले 2-3 राउंड्स की आप ज्यादा से ज्यादा बोर्ड पॉइंट्स इकट्ठा कर लो, ताकि फिर आगे इसके बाद आपको सिर्फ 2.5 पॉइंट या 2 मैच पॉइंट्स जीतने का मौका चाहिए। Yeah, with it going there, talking to, I don't know who it is, the captain, I don't know who it was, but anyways, we have Arjun, Harikrishna, हाँ Gukesh sitting, and यार ये अलग ही feel, I don't know यार, we need more team events, साज भाई, नहीं ना टीम में अलग ही feel, you feel more like India, you feel more complete, like cheering for the team, you don't have to choose between the Indian players, सारे साथ में मस्त candidates में ना, it was like कई बार लोग कहते थे why are you cheering for Vidit, why not Gukesh, why not Prag, like यहाँ पे तो है भाई सब एक तरफ है कोई स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल। करेक्ट। एंड या एक्शन विल बी अंडर वे वेरी वेरी सून। तो
We should see the move soon. Opening ceremony, मतलब ceremonial moves have been done. ऐसे सुनने में आ Is there any dress code? I believe the dress code is रहा है. you have to dress formal, yeah? Correct. Yeah. Formal या No फिर tracks smart or casual. shorts allowed. हाँ, Yeah. shorts No allowed नहीं shorts होते allowed हैं. for the open section at least. Hmm. Crazy. And by the way, chat, not to forget कि World Championship का जो sponsor है, it's apparently the title sponsor is Google now. So that should lend. I mean, उसमें क्या भाई YouTube वाले कुछ करेंगे भाई top पे डाल देंगे भाई. So that will be amazing. That should give us a lot of publicity. The game of chess overall. तो बड़ा मजा आएगा. अब YouTube Premium खरीदना पड़ेगा. भाई अब तो भाई वो सीधा सर्च टॉप पे डाल देगा ना भाई. वर्ल्ड कोई भी कुछ क्रिकेट में सर्च करेंगे तो भाई चेस आएगा ऊपर. अब तो YouTube Premium फ्री में मिलना चाहिए ना. अब बात करो यार साहिल भाई. नहीं पता है कोई सर्च करेगा क्रिकेट वर्ल्ड कप, वहां पे आएगा डू यू मीन चेस. तो मजा आएगा भाई देखने में. Let's go. And we can see, I think it's Arjun, right? And मुझे Arjun का personally, I'm very curious. How does he handle it? Because even though, he was never under trouble, as you said, Saj bhai, I think कहीं ना कहीं पे he clearly underestimated that position from his opponent's perspective. There's no doubt. He would have not played if he knew it was +3. So कहीं ना कहीं पे, I feel he should kind of, go back, relax, not worry too much, and would love to see whether he will play the same risky chess today or not. Let's see क्या होता है. Strategy. That's what makes champions. On the field. ये क्या आवाज आ रही है भाई? मुझे कुछ क्रेजी आवाज आ रही है भाई. Same. Something about strategy. ये strategy कौन बोल रहा था भाई? Anyways, speaking of growth in chess, craziness हो रहा है because I Show Speed, one of the very famous YouTubers, is playing the boxer Manny Pacquiao in a chess match live with Really? 200,000. Wow. That's insane, bhai. That is insane. Wow. बहुत ही बढ़िया. Matches will start this. If the rule is touch to move, can we adjust piece by touching it? Yes, you can adjust a piece, but आपको बोलना पड़ता है. I adjust या दूब या क्या मैं उसको सीधा कर दूं, whatever it is. हाँ, तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा. So you cannot just touch it and then say adjust. That is not really the rules. Right. Tomorrow, Arjun will be given a break. Yes, I think tomorrow we'll see Arjun or Vidit get a break. Also depends on the results today, how they pan out. मान लो कि कोई player कुछ गलती से draw कर लेता है, then ideally, just like Vantika played today, they might get another chance. Let's see क्या होता है. And it will be very interesting to also see कि how does the US team play, how does the Norway team play. ये सारे teams के results बहुत. China especially, I'm curious because they had a great performance 4-0 yesterday, and Ding is back today. तो क्या कुछ नर्व्स दिखेंगे हमें डिंग लिरन के. इमेजिन राकेश एंड साहज भाई एंड चैट, इमेजिन अगर वो गलती से 1-2 2500 से यहां पे हार गए. हिज लास्ट इवेंट बिफोर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, नॉट ओनली विल ही माइट बी रेस्टेड फॉर द क्रिटिकल मैचेस अगेंस्ट इंडिया, बट उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप का कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाएगा यार. सो दिस कुड बी वेरी रिस्की फॉर डिंग. बिल्कुल, but I think the same can be said for Gukesh as well. अगर Gukesh के अगर आज, I mean, he's playing black against a 25-30 player. If this doesn't go, I mean, I don't think it will, because I think Gukesh is in a very, very different place in that sense. So I don't think it's going to happen. But if it does, then it definitely hampers his confidence. So, I mean, both players are taking a very big risk for their country, which is it's definitely something to applaud for sure. By the way, मैं दोनों chess.com India और chess24 के chats पढ़ रहा हूँ, and chess.com India वाले, you should also join chess24 India की जो stream है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास scams भी हैं. तो you'll be able to see the players, you'll be able to see live action. जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखेगा. तो you're not just looking at our faces. I'm sure getting some in live action can be very, very good. उसमें chess24 का पिन कर दो बेशक. I think that way what will happen. मैं सोच रहा था मैं लिंक डाल देता हूँ. हाँ, मैं डाल Chesscom देता पे पिन कर दो ताकि लिंक डाल दो, मैं पिन कर दूं. बढ़िया. Why is Magnus not playing today? So I think Magnus ने सोचा होगा कि यार आज के लिए team has got it, like they will win today, and he will come and play from tomorrow, and then वो end तक एक भी game नहीं छोड़ेंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है. So that is the logic there, and of course he really wants this victory. अगर उनको medal मिलेगा, उनका सपना है, तो he will take this absolutely seriously. तो फिलहाल के लिए I think he feels कि the Norway team is strong enough to win on their own, and yeah.
Let's see कैसा होता है. Man, let's go, bhai. Let's go. Let's go, let's go. So I think we have about 10 more minutes before the matches begin. I think matches तो already शुरू हो गए होंगे. मैचेस शुरू हो गए. आई थिंक अगले 5 मिनट में हमारे पास मूव्स हो गए. हाँ. Okay, अगले 5 मिनट में moves होंगे. Yeah. Yes, message pinned on Chesscom India. By the way, Stiku bhai or Sahaj bhai, blue color की shirt है, bleeding blue today for India, and of course I have the अरे वाह. तिरंगा. अरे. So इन्हीं. let's go India. Yes sir. And मैंने black shirt इसलिए पहनी क्योंकि गुकेश black pieces से खेल रहा है. And we are टिकू भाई rooting for तूने क्या गुकेश. किया है? तूने क्या आपने क्या टिकू किया भाई है? इंडिया के लिए? आपने क्या किया? टिकू भाई is loyal. ब्रांडिंग करा है उसने. Branding. कोई तो करेगा भाई. कोई तो लॉयल रहेगा यहाँ पे इस बेदर्दी दुनिया में. No, I think. Oh man, I think. First of all, can we have full look at Gukesh for a second, यार? वो calm and composure अलग ही है बंदे में. I don't know, like we can't even properly see him, but वो अलग ही level का. Look at a play on the left. आंखें left, light, ऊपर नीचे. He's trying to hide the nervousness. हाथ shake हो रहे हैं, अंगूठा shake हो रहा है. Look at Gukesh on right. कोई कुछ हिल ही नहीं रहा है, हाथ वाथ कुछ भी नहीं. He's so still, so calm. I think that's his skill, man. He can control his nerves perfectly. जैसा उसने कहा ना कि like he has them, but he doesn't show them. And गुकेश का वो concentration and intense focus देखे आइसलैंड के लोग पिघल रहे हैं. Oh, by the way, ये इनका ये निकी है हरीका. आप भी पिघल गए क्या? वो हेल्गी इनका नाम है क्या? हाँ, नहीं वो बोर्ड 4 नहीं जो बोर्ड 1 है वो हेल्गी नहीं है. अच्छा नहीं, the guy who's playing Hari is playing Helgi Gretarsson. हाँ, वो थोड़ा हेल्गी और ग्रेटारसन के बीच में कुछ अजीब वर्ड है ना, वो देख रहा था. हाँ कुछ गलत वर्ड आ गया वहाँ पे. ठीक है, इग्नोर करते हैं इसको. Why don't players make eye contact before and during games? Sahaj Grover, Firearm जी पूछ रहे हैं. I think they do. I mean, वो जो cold stare होता है, मतलब sometimes you do it, but I think both players just want to get the game going. यहाँ पे psychological games जो होते हैं, जो एक दूसरे को देखना होता है, that happens more I think during the game, क्योंकि उसका effect ज्यादा होता है तब. तो I think right now they are just both focused. भाई मैंने preparation क्या करी थी? That's what they're thinking about. आज क्या खेलना है? And Gukesh is thinking, भाई E4 खेलेगा या D4 खेलेगा, and he's going through his lines. Yeah. And Iceland's population is 382,000. मतलब 3,80,000 total population Iceland की. Is that true? That's literally the population of the building I live in, by. So, can somebody confirm if that's the population? Yes, that is true. Wow. I also did some research by इसके बारे में. तो it looks like, Sahaj bhai, more people in Chennai know how to play chess than the entire population of Iceland. Wow. What? No ways. That is a crazy stat. Stat. Wow. Ceremonial move हुआ, white player ताली बजा रहा है, गुकेश को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. He is too focused. तुम खेलो. Wow. And also like another. हाँ टिकू. वहां से कोई कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, भाई कौन है ये जो उसके पीछे छुप के रिकॉर्डिंग कर रहा है? नहीं, they are just doing an Uno reverse card, तुम मुझे रिकॉर्ड करो, हम तुम्हें रिकॉर्ड करेंगे. It's like कैमरा मस्त. बट सामने से क्यों नहीं रिकॉर्ड करे, सिर्फ छुप के क्यों रिकॉर्ड करे? I don't know कौन है actually. But also एक fun fact है, the largest difference in distance between two countries is China versus Chile, जिनके बीच में ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर का फर्क है. तो काफी ओलंपियाड यूनाइटिंग कंट्रीज इन अ वे. Yep. Let's see, man. This is going to be epic. Gukesh, board 1, coming in round 2 to play for India, and I think मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो एंड तक खेलेंगे. I really don't see Gukesh taking a break unless his form is an issue. What do you think about that, Sahaj? So मुझे लग रहा है कि I think he will continue playing till the end now, all the 10 rounds.
I would say so. I would say so. It's possible एक round और break हो सकता है. I think he might play 9, but I think on all the main rounds, I think Gukesh will play for sure. I mean, he's the board one, so of course he will. So I think we'll see more of him for sure. Also board prize यार राकेश भाई, so that's an important element because players के individual भी goals हो सकते हैं कि मुझे board prize लेना है, so they might actually genuinely want to play more themselves. but I don't think anybody remembers a board prize that much. मेन तो होगा कि इंडिया का गोल्ड आना चाहिए. So just a question to the both of you and chat as well. अगर एक draw होगा आज में open section में, तो who has the best chance amongst everyone? Let's say Iceland की टीम में किसके पास best chance है एक draw करने का? Good question, yeah. I think it has to be Wigner, मतलब top board, Wigner, Watner, Stephens. Exactly, that's what I was thinking as well. मुझे लगता है गुकेश का, क्योंकि गुकेश black भी है and उसका opponent is a 25-30 player. I mean, you can technically, be very, very solid against Gukesh and see what happens. Correct. So it is possible. And Gukesh has to hide his prep as well, Sahil. Why Sicilian खेलेगा I think Gukesh has. But yeah, go ahead, Sahil bhai. Gukesh इनका हेल्गी नाम है, इनको ऐसे धोएगा आज कि मतलब डिंग बेचारा एक और ब्रेक ले लेगा अगले राउंड में. एक राउंड के लिए मुझे लग रहा है हेल्गी नहीं है उनका नाम भाई. हेल्गी नहीं है उनका नाम. जो भी नाम है आई थिंक स्टेफेंसन है उनका नाम. स्टेफानसन विग्नेर पूरी तरह धोएंगे. ड्रॉ के लिए मुझे मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं फॉर सम रीजन. आई थिंक इट्स हरिकृष्णा. कल की गेम के बेस पे मैं जा रहा हूँ. हाँ, कल की गेम के बेस पे दैट वाज द गेम व्हिच वाज ड्रॉ टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम. And मुझे लग रहा है कि that might give Harikrishna is the one who is less likely to take a risk to win and he might be comfortable with the draw. So that's my logic. But let's see. मेरा गलत होने का पूरा chance है. मुझे 1% नहीं लगता कि हमारे दोनों white players I mean किसी का भी draw होगा. I don't think so. अर्जुन तो no chance. चलो भाई, let's see. Let's see. And the games are beginning, chat. I can see the games begin. कुछ US team की games start हो चुकी हैं. So it will be just 30 seconds as the games begin. Yeah. Final predictions. राकेश भाई, final score क्या लग रहा है? भारत 3.5 0.5 से जीतेगा. सहज 3.5. Me as well. चलो, I'll go 4-0 भाई. Let's see क्या होता है आज. Ah man, come on. Game should start any moment to chat. Any moment. Come on. Let's go. An opening choice, by the way, very interesting. Yeah, from Gukesh, because as you said, Saj bhai, hide करनी है prep. That is not an easy task. कौन सी first move खेलेंगे? क्या लगता है? E4 मान लो, क्या खेलेंगे? C5. I think Sicilian हो गया आज. E4 E5 तो नहीं खेलेगा Gukesh. No ways he goes for E4 E5 against a player like that. I know Gukesh primarily, especially in the candidates, he played only E4 E5 if I'm not mistaken. And I think very, very good chance of that. E4 C5. D4 में भी मुझे लगता है King's Indian will be most likely. Like if he wants to play for a win, then he has to show it with his opening choice as well. क्योंकि black से अगर आप कुछ भी solid खेलते हो against a player of this level, then and you don't get into like a complicated middle game battle जहाँ पे बहुत सारे pieces हो और बहुत सारे imbalances हो, तब तक you won't have a real chance of winning. Yep. And women's section, by the way, chat, all the 4 players are playing roughly 2-1-5-0 22 के level के players. And the games have begun. We have D4 on the board, Sahaj bhai. And H6 played by Gukesh. Already a sign कि भाई कुछ reveal करने के mood में तो वो नहीं है. Oh, by the way, Arjun has played the London. Arjun What? board पे चलते हैं. अरे Let's go. Arjun जल्दी टिक्को. हाँ भाई, ये कल की गेम आ गई भाई, रुको. अरे भाई टिक्को यार. No, you are just showing us कि जो होने वाला है, That's Hari. It's the future, bhai. It's the future. And D4, knight F6, knight F3, bishop F4, London system on the board. Opponent already stressed में भाई. Already. भाई मैं भी stress में रहूंगा the moment I see London, because for Arjun to play London, I think he's one of the best players in the world inside the London. So it's a very, very scary feeling indeed. Yeah, it's going to be epic, but also would be very interesting to see कि कोई नई novelty क्या. Hi Arjun, क्या हाल-चाल? कुछ मतलब prepare किया उन्होंने कि क्या idea है उनका. Let's see how it turns out. And let's go board by board, Saj bhai. What do you think? राकेश भाई, एक board करके चलते हैं.
and we start from board 1 and then we move through all the boards. क्या बोलते हो? भाई एक सेकंड ये कैमरा और बोर्ड में थोड़ा डिले है क्या? कल नहीं था ये, आज है क्या? Because the Delay board was मतलब? already showing bishop f4 and Arjun जो कैमरा में दिख रहा है वो सिर्फ knight f3 दिख रहा है मुझे, तो is there a delay अच्छा, with the thing Yeah, या नहीं? कोई बात नहीं, होगा yeah. भाई. There Unless the is, bishop there on is. f4 is invisible. I think कोई बात नहीं, वो हैंडल कर सकते हैं हम लोग. So नीरी भाई, Okay. I think we can start with board number 1, that is Gukesh, and जहां पे हमने देखा d4 knight f6 c4 e6 knight f3 and h6 on the board, and white already deep thought में है. So कैसे यहाँ पे हैंडल करना चाहिए सहज भाई white को if you are playing the world championship challenger? क्या खेलना चाहिए white को? So h6 का आइडिया ये है कि you are making me you're preventing me from playing bishop to g5. अब बिशप g5 के बहुत यूजेस होते हैं, you can take on f6, you can try to push e4, जो भी क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वाली जो वेरिएशंस होती है उसमें व्हाइट का बिशप 99% ऑफ द टाइम्स g5 पे जाता है. तो विद h6 he has prevented that, and also what he has done is he has also gotten him completely out of preparation. अब उसका ओपोनेंट बिशप g5 नहीं खेल सकता, which is like the hand move in this position. अब उसको सोचना पड़ेगा कि what should he do? Should he go for Catalan, which can be g3, or should he go for knight c3? That's the big decision. So I'm not sure what he's gonna choose. If I was thinking here as white, मुझे bishop f4 interesting चाल लगती, because that's like saying कि भाई g5 पे तो मेरा bishop जा नहीं सकता, उसको f4 पे रख देते हैं, problem solved, and then I develop normally. And also with bishop f4, I'm not really saying what my next few moves are going to be like. So it keeps me in the dark a little bit. But that being said, I mean h6 looks like a very, very smart choice to me. Because already, you're not exchanging anything. You're keeping more pieces on the board, which I think is the ideal situation for now. Absolutely agree. साज भाई, राकेश भाई, ऑपोनेंट की शक्ल से लग रहा है कि ये चॉइस बिल्कुल सही है. सही में भाई, उसका वो ऐसा होता ना कि वो रात भर ना कल उसने QGD लाइंस प्रिपेयर करे और अभी आके इसने h6 खेल दिया. वो ना मन में ना बहुत गालियां दे रहा रहेगा उसके कोच को, उसके हेल्पर्स को, बिल्कुल कि यार इसकी तैयारी नहीं करवाई मुझे यार. Yeah, but I think, of course, as you said, Sahaj and Rakesh, कि ये इतना आसान नहीं होगा, and the highest chance you mentioned of a game ending in a draw is on this board. So white is a strong player. 2-5-3-1 rating है यार, that's not easy. Clearly, Sahaj भाई की तो गिर गई वहां से. तो देखते हैं क्या होगा. We'll come back to this very, very soon. Board number 1. You know what? Jokes on you. मेरी rating कभी 2-5-3-1 थी ही नहीं. यार. That's a self diss. Let's go. That's a self diss. Let's go. इसमें कोई opponent 2200 है नहीं, तो I will not get roasted somehow. 2-5-3-2 थी by the way. वहां से गिरी थी. So chat, यहाँ पे I think यहाँ white, g3 by the way played, so he goes for the Catalan structure, Sajid bhai, and bishop b4 instantly played by Gukesh. क्या लग रहा है इसके बारे में? This is the Bogo Indian, पर लेकिन ये थोड़ा delayed Bogo Indian हो गया क्योंकि white ने g3 already खेल दिया. And black ने h6 खेला जिसका अभी कोई यूज मेरे को देख नहीं रहा है, because बोगो इंडियन में usually white bishop d2 से निकालता है. d2 से निकालने के बाद you usually trade this bishop या you play queen e7 to make white trade this, but at the same time h6 का जो point है वो ये था कि to not allow bishop g5. अगर bishop ऐसे change हो जाएगा तो I don't see the point of playing it, but it could be कि वो because he made him play g3, उसकी वजह से उस white को bishop g2 से निकालना होगा, which might not be something that he wants. That could be some crazy deep prep. Yep. And यहाँ पे दिख भी रहा है टाइम पे 7 मिनट पीछे है व्हाइट. सो फिलहाल के लिए गुकेश का प्लान सीम्स टू बी वर्किंग. हम एक नेक्स्ट गेम पे चलते हैं. नीरी भाई, एक नजर मारते हैं अर्जुन एरिगेसी की गेम पे, अब जहां पे लंदन सिस्टम हमने देखा था. एंड आफ्टर e6 बिशप f4 d5 खेला है ब्लैक ने. सो राकेश भाई, आई मीन फिलहाल के लिए तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग गेम, नॉर्मल गेम, बट लंदन में कई बार विन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. डू यू थिंक यहाँ पे अर्जुन को ऐसे इश्यूज फेस करने को मिलेंगे या फिर ही विल जस्ट इजीली क्रॉल थ्रू हियर? नहीं, आई डोंट थिंक कोई इश्यूज फेस करने पड़ेंगे. शुड बी केक वॉक फॉर अर्जुन, स्पेशली विद द व्हाइट पीसेस. आई थिंक मेरे को सर एक चीज जानते हैं सहज में, आप बहुत बार खेले हो आई थिंक आइसलैंड ओपन वगैरह, ये हैंस स्टेफनसन और जो टॉप बोर्ड है, क्या वो फादर सन डुओ है बाय एनी चांस? I actually don't know, because last time I played in Reykjavik was in 2013, and that point this player was not, I think, grandmaster strength.
So I'm reading हाँ, ये about तो him for the first time. 10 साल का था ना, 2003 born है ये, बोर्ड 1 जो है, अच्छा हो सकता but है they फिर, that's a both very have very good choice. Stefansson. Yeah, Hmm. it might be they are a father-son duo, But किसी भाई पर. in Iceland or in Viking culture, at least that's what Yeah. I know, जो भी इनका नाम रहता है ना उसके आगे सन लगा देते हैं, तो उसके बेटे का नाम स्टेफानसन नहीं होगा, हानिस सन होगा. ओह Ah, okay, तो okay, correct. इनके फादर और सन का कभी भी सेम नाम नहीं होता. तो इट्स लाइक जो भी आपके फादर का जो पहला नाम होता है दैट्स द फादर्स नेम, दैट्स योर ओन नेम. जो सेकंड नाम है वो आपके फादर का नेम, उसके आगे सन, दैट्स इट. एंड दैट्स हाउ एंड इट अगर गोस. लड़की हो तो डॉटीर आ जाता है, पापा के हाँ नाम के डोतीर आ आगे जाता है. डॉटीर. एग्जैक्टली बट करेक्ट. ऐसा ना, मेरे को एक दोस्त, मेरा एक दोस्त था चेस में, ही इज आल्सो फ्रॉम आइसलैंड, उसका नाम था विग्नस सन. मैंने कहा ये तो पूरे लिनिएज का नाम पता लग गया आपकी. तो अगले मतलब 5 जनरेशंस का नाम सेम रहेगा. ट्रू ट्रू. एंड स्पीकिंग एंड ऑफ फैमिली, अतुल जी बहुत सही पॉइंट बोल रहे हैं कि प्रग एंड वैशाली रेस्टिंग टुडे, मतलब वो फैमिली को आज दोनों ही आई थिंक होटल से फॉलो करेंगे आज मैचेस. सो बिल्कुल बिल्कुल. दैट विल बी क्रेजी. सो फिलहाल के लिए लंदन सिस्टम पे ओपोनेंट स्ट्रेस पे है क्योंकि इसने कोई कोर्स नहीं देखा. तो हम चलते हैं बोर्ड नंबर 3 पे जहां हमारे विदित गुजराती खेल रहे हैं. ही इज प्लेइंग द लोएस्ट सीड ऑफ द ओपोनेंट टीम एंड उनके पास ब्लैक पीसेस हैं एंड वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन जहां पे e4 c6. आई थिंक वीडियो कोई कैरोकन का कोर्स भी उसने कभी कोई किया था. e5 बिशप f5 नाइट d2 e6 नाइट b3 नाइट d7 एंड नाइट टू f3. साज भाई क्या इनसाइट्स है इस पोजीशन के जो आप चैट के लिए कर सकते हैं यहाँ पे क्लियर पोजीशन के बारे में. सो दिस इज बाय द वे, किसी को इस लाइन का नाम पता है? यू ओके, आई विल गिव यू हिंट. यू नो दिस प्लेयर रियली वेल. यू नो शिरोव दिस है क्या? प्लेयर रियली वेल. नहीं नहीं, शिरोव नहीं है. वेरी क्लोज दो, वेरी क्लोज, बट नॉट द सेम कंट्री. बट नाम का जो पहले 2 लेटर्स है वो दैट इज द सेम. दैट इज द कुछ सेम. तो लंबा या छोटा इन इन इंग्लिश. हाँ. राकेश भाई, यू विद योर इनसाइट्स, आई मीन इनसेन भाई. इसका नाम है शॉर्ट वेरिएशन. इट्स नेम्ड आफ्टर नाइजल शॉर्ट. एंड ये जो व्हाइट खेल रहा है, बाय द वे, ब्लैक इज प्लेइंग द कैरोकान, व्हाइट इज प्लेइंग द शॉर्ट वेरिएशन. ये बहुत क्लासिकल सेटअप होता है व्हाइट के लिए. व्हाइट का बिशप E2 से निकलता है, व्हाइट प्लेस कासल. इस लाइन में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि बहुत सारे पीसेस रहते हैं बोर्ड पे दोनों साइड्स के लिए. यू विल नॉट एक्सचेंज pieces or pawns. You will exchange them a lot less than in comparison to many other variations. So it's a very very good choice to play against a low rated opponent, क्योंकि ज्यादा pieces होंगे तो गलती करने के chances ज्यादा रहते हैं. तो I think I really like it. And also let's not forget Vidit, your job course कर रहे थे. He did that course for I believe it was for chess base. जो course, but it was published in like 2011-12. I don't even know, आपको याद कैसे है साहिल भाई? It's 11 such 12 a थोड़ी था भाई. इट वाज लाइक it 18 was or an 7 16. नहीं, Not it's an old भाई. course. मैंने लिया है वो भाई. मुझे पता है ना भाई. आप क्या बोल रहे हो? Seriously, I मेरा remember डेबिट that हुआ है course. भाई. मेरा उसने डेबिट सिर्फ हुआ है. मुझे लिया पता है है, कब डेबिट हुआ है. अगर आपने उसने लिया सिर्फ है लिया है, तो उसने I will. यूज नहीं करा. हाँ, यूज नहीं यूज करा किया उसने. होता तो यूज किया भाई तो नहीं, यहाँ ना होते. नहीं मैंने यूज किया बट ओपोनेंट ने दूसरा कोर्स लिया था भाई. उसको कैसे हराना है? तो दैट्स द you are प्रॉब्लम. saying, oh wow. Okay, that makes sense. But लेकिन Vidit, I think is a specialist of Caro-Kann, also of the French. I mean, दोनों setters वो बहुत बहुत बड़े से, and he's been playing Caro-Kann for a very very long time, so he should feel quite comfortable in these positions. And I think he's very much in prep even now. I know time वो दिखा नहीं रहा है. Because it's possible कि Vidit ने exactly ये opening ना preparation ये opening ना prepare करी हो, on the day itself, but he is very very familiar with these structures. There are many different ways that black can play. You can go for this h6 g5 वाले ideas, you can go for c5 ideas, you can push f6 at some points, you can go एक ऐसा भी idea इसमें भाई जिसमें knight e7 के बाद c8 पे जाता है. वो क्यों जाता है I don't know. वो क्यों जाता है I don't know, but I know it goes there. So there are many many different options that he can choose for himself. So let's see what he does. यार चैट मजे ले रही है भाई. कुछ चैट तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी है. चैट इतने क्रेजी काम करने हैं तो भाई एक लाइक बटन बता दो. लेट्स गेट टू 500 लाइक्स जल्दी से भाई, है ना, बहुत जरूरी है. एंड विदित की आंखों में भाई अभी ओपोनेंट को उसने आई थिंक स्टेयर दिया बड़ा खतरनाक सा. एंड ही इज लुकिंग वेरी एनर्जेटिक भाई. कॉन्स्टेंटली शेक कर रहे हैं यहाँ पे, टांगे हिला रहे हैं भाई. ज्यादा ही फुल ऑफ एनर्जी लग रहे हैं बबली बबली से राकेश भाई. बिल्कुल बिल्कुल. और आई थिंक चैट में कोई एक फन फैक्ट बोल रहा था कि सहज has defeated Vidit 11 years ago in September.
आई थिंक वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप था शायद, अपन खेले थे वहां। अरे यार वो तो ओपी टूर्नामेंट यार, द बेस्ट, आई थिंक द बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ माय लाइफ यार, लाइक इन टर्म्स ऑफ कितने मजे किए थे हमने वहां पे यार। एंड यस वहां पे आई डिड बीट हिम, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट यू नो इट डिड हैपन। दैट्स माय ओनली विन 18 अगेंस्ट हिम बाय द वे। सितंबर 18 18 September. सितंबर I have to, आरव इन द I चैट, mean, शाउट आउट टू आरव। shout out by shout out. Let's go. ठीक है, तो knight e7 I think is very हाँ logical. या I think we should, or you can also play a6 by a6 is a, you know, more like an ultra, what do you call it, like a hyper modern variation. You know, आजकल ही खेली जाती है क्योंकि ब्लैक का आइडिया होता है उसको c5 खेलना है, बट c5 में ना प्रॉब्लम ये है कि आई विल रिकैप्चर ट्वाइस, सो लेट्स से c5, आई विल गो d takes c5, knight takes c5, knight takes c5, bishop takes c5, अब ना bishop b5 चेक आ जाएगी एंड आपका king e8 से हट जाएगा, मतलब आप कास्टलिंग नहीं कर पाओगे. So to avoid that, black can also play something like a6, which is a nice prophylactic move. But I think he's thinking because maybe he was taken aback by his opponent's prep, क्योंकि ये main line है कैरो खान के अगेंस्ट, ये white की main line है, but it is possible वो कुछ और खेलता हो, you know his whole life, and he has and he just on the board he decided to change his prep. Yep. So VD के यहाँ पे VD सोच रहे हैं, I think he's not played for a while, तो थोड़ा as you said साल में, it might be true कि this is not the line he expected. तो देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे. एक नजर मारते हैं बोर्ड 4 पे भी जल्दी से, जहां पे हरिकृष्णा इज प्लेइंग मिस्टर हेल्गी, जिनका नाम इंटरेस्टिंग है. सो d4 d5 knight f3 एंड एक और स्लाव जो हमने कल देखा a6 a4, एंड दिस इज द करंट पोजीशन हरिकृष्णा के व्हाइट पीसेस. राकेश भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? आई थिंक फेयरली ओपन, मतलब वेरी ओपनिंग स्टेज है अभी तक, कुछ ज्यादा मूव्स नहीं चले एंड प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर बोथ साइड्स हियर. एंड हम देख सकते हैं कि दोनों ही प्लेयर्स थोड़ा टाइम ले रहे ओपनिंग में. सच व्हाट कैन बी द रीजन? क्योंकि आई थिंक 5 मूव्स हुए, बोथ ऑफ द प्लेयर्स नो द ओपनिंग. क्यों सोच रहे हैं दोनों? So I think first of all this is the Chebanenko Slav. ये बड़ा एकदम I think it's like a side step of the actual Slav variation जो d takes c4 होती है, e6 होती है. Chebanenko is like more recent. And जो हरी की जो response है a4, I have never seen this before. Usually you play e3, फिर उसके बाद bishop d3 से निकलता है, queen e2 से निकलती है, and then you try to push e4. Or you can also go pawn takes pawn, that can go into the exchange Slav. But a4 is definitely something new. तो मुझे लगता है इस board पे भी already we are seeing something new being played. Or from the looks of it, a6 black इसलिए खेलता है, the whole Chebanenko Slav, black plays it because black को dc4 मारना होता है and b5 से उस pawn को protect करना होता है. तो by playing a4 from the white side, white is already preventing वो जो b5 का जो push है. तो it's very likely कि black अभी भी dc4 मार सकता है. It's very likely, और ये गेम बहुत जल्दी डायनामिक बन सकता है. But I think a4 is something he doesn't know. इस ओपनिंग का नाम चेसकॉम मुझे बता रहा है क्या कैमिलियन वेरिएशन, कैमिलियन बोलते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं उसको? तो Chameleon नाम variation. कैमिलियन वेरिएशन, तो काफी इंटरेस्टिंग नाम ऑलरेडी है इसका भाई. तो वील हैव टू जो आप है ना गिरगिट, वो भाई ये क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक, क्या है इसमें भाई? कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं. एक्चुअली आप दल तो नहीं बदलते हो, आप नहीं बदलते भाई. हो. देख लो भाई, दल नहीं बदलते भाई. Also, by day one of knowing कि Girgit is a chameleon, I knew the word Girgit, I knew the word chameleon, I just never knew they are the same words. रंग बदलू गिरगिट बोलते हैं ना, इसके लिए. हाँ, I know. मुझे सब लोग बोलते हैं, पता नहीं ऐसे आज क्यों. तो अपन क्या हिस्ट्री और सारे ज्योग्राफी सारे लेसन्स दे रहे चैट को, बायो, मतलब एंड वाइकिंग्स वाले बहुत सही इंफॉर्मेशन था सहज में. एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इट्स केविन राइट, आई थिंक वो करवा रहे हैं ऑर्गेनाइज सिंगापुर में. वो खुद यहाँ, वी कैन कीप द कैमरा मे बी ऑन गुकेश भाई, विल कम बैक टू गुकेश आफ्टर दिस गेम. सो बोर्ड 1, he himself is playing the US team right now with the white pieces. So that is interesting, no? Like he himself is playing in top board पे US team के साथ. Singapore, right? Board 4 of Singapore. Yeah, so he himself is playing this, and we can see him playing his rare option. And US की team भी बहुत strong. Caruana, by the way, chat is back with the white pieces. तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. And as we go to Gukesh's game, मुझे एक चीज पूछनी है भाई, US team का क्या लगता है?
साज भाई, ये क्या स्कोर रहेगा उनका फाइनल? बिकॉज कल उन्होंने आधा पॉइंट ड्रॉप कर दिया, ऑलमोस्ट डेड कर दिया था, और आज तो उनके ओपोनेंट्स आर मच स्ट्रॉन्गर. 2 प्लेयर 2500 से ऊपर है, एक तो 2580 है, एंड चारों प्लेयर 2400 से ऊपर है. तो क्या लग रहा है आपको, आज कोई ड्रॉप कर सकते हैं पॉइंट्स? I think because कल का game was not going their way, I think that would be like a much needed wake up call for them. तो मुझे लगता है आज का दिन will be a much more convincing victory for each of these players. अब मुझे ये नहीं पता कि whether it be 4-0 or whether it be 3.5-half, but I know कि this round will look a lot more convincing for them than it did yesterday. तो that would be my thing. Also यार chat में कोई बोल रहा है सहज defeated Vidit Gujrathi in 2014. नहीं भाई, the only time I defeated Vidit was in the World Junior Championship in 2013. Every other time that I've played with it, we have drawn. So there was only one time that happened. एंड वी कैन सी यहाँ पे गुकेश की गेम अगर हम जाएं, हमने कहां तक देखा था? हमने देखा था बिशप b4 चेक तक, बिशप d2 आया, बिशप को स्टॉप किया चेक से, बिशप वापस ड्रॉप किया, बिशप g2, कैसल्स d5, क्वीन c2, c6, रुक d1, पुटिंग द रुक ऑपोजिट द क्वीन, नाइट d2, एंड बिशप फाइनली निकलता है f4 पे. एंड दिस इज नाउ अ टिपिकल ऐसे वो कैटलन सी फीलिंग आ रही है अब राकेश भाई. एंड गुकेश टाइम पे 17 मिनट आगे हैं, दैट इज अ गुड साइन. Yeah, 1 hour 34 minutes. टिकू भाई bullets खेल रहे हैं गुकेश. I think he's so well prepared. He's so focused that I think white player would like to chicken out and try and equalize things. जो कि normally black player करता है. I think what I really like about this opening choice is that कि गुकेश ने अभी तक एक भी pawn तक नहीं exchange किया है. That I think is a very very I think it's a very positive sign for the stronger player, क्योंकि धीरे धीरे करके every player makes a mistake as many pieces there are on the board. So I think this is definitely prep. Of course 1/3 जो 1 घंटा 34 मिनट दिख रहे हैं हमें क्लॉक पे, that is a very very definitive sign कि he's still in prep, and I think it looks really good for him. Yep. एंड चैट, आई थिंक याद रखना भाई, हर 1000 लाइक पे चैलेंज है. सो डायमंड मेंबरशिप आपका इंतजार कर रही है भाई, गर्मा गर्म. जल्दी से स्ट्रीम लाइक करो, लेट्स गेट टू 1000 लाइक भाई. जल्दी से जाने चाहिए यार. एक लाइक बटन है, दबाओ एंड डायमंड मेंबरशिप ले जाओ भाई. इतना सिंपल मैथ्स कहां मिलेगा राकेश भाई? नहीं मतलब अभी हमारे पास तो भाई क्वेश्चंस का भंडार है टिकू भाई, बट लोग लाइक ही नहीं कर रहे तो क्या ही कर सकते हैं ना. हाँ, लेट्स गो भाई. And by the way, chat, how many players do I need to beat in tournament? अरे यार सबको हरा दो भाई, सबको हरा दो, खत्म कर दो. And फिलहाल के लिए knight comes out to c3 and Sahaj भाई, I don't think we'll see something like this. That looks very very risky. So Gukesh का plan क्या होगा? Is it going to be b6 and bishop b7? Will he just play it flexible like rook e8 या क्या करेंगे? या फिर वो usually knight h5 is also an option, but I don't think कि वो reputation के लिए यहाँ पे खेलने वाले हैं. I somehow feel d takes c4 would be logical here, unless कुछ like immediately मर रहा है, because in Catalan structure whenever white plays, yeah, there we go, d takes c4 already on the board. तो like मुझे लगता है जब भी knight c3 खेलता है ना white, तो black हमेशा d takes c4 मारता है इस position में. तो I think this is, and it looks dangerous, but I think that's what Gukesh wants. No, this is exactly the type of position he wants. He wants to get into the danger ताकि opponent तभी तो गलती करेगा. It's not going to happen in like a simple position with like less pieces on the board. भाई बट दिस इज मजा आएगा भाई गेम में लाके जो लग रहा है ना, फील आ जाएगी. बिकॉज कहीं ना कहीं पे अब पॉन मार ली है, वाइट सेंटर लेने वाला है, नाइट d2 से पॉन वापस मारने की कोशिश. डू यू ट्राई टू सेव दिस? क्या करेंगे यहाँ पे? ग्रीडी तो नहीं है यार, मतलब गुकेश आई थिंक तो might give it back. Knight d5 option है, getting the bishop pair. Knight b6 भी option, I think, just to defend your pawn. Yeah. I think both look really good. Knight d5 also looks decent, but I'm not sure if he would be happy to give up the c4 pawn and then go knight takes f4. That would be the idea. But I think knight b6 kind of keeps the tension. मेरा एक extra pawn है position में. I think that looks like a decent move to me. Yep. I'm not sure why he didn't go knight e5. Like, why not knight e5 instead of knight d2? It's like doing the same thing, but my knight is in a better square. Why is this bad? Apparently, knight e5 is a problem here.
and D takes E5 and knight and now D7, yeah? knight D5 now apparently. Oh, I was thinking E4 में Yeah. knight trap हो रहा है, but लेकिन there is knight B4, I think. I missed Yeah, that, yeah. yeah. Yeah, queen barely somehow black survives. And so knight d2 तभी खेला उन्होंने, and I think उन्होंने खेला है, that means he also knows the theory, तो देखने में बड़ा मजा आएगा. एंड निधि भाई, अगर हमारे पास वुमेन सेशन के कैमरास हैं तो एक नजर वहां भी मार के आते हैं जल्दी से चारों गेम में कि कैसी शुरुआत हुई है पोजीशंस की, एंड देन वील जंप बैक टू दिस बोर्ड, टू गुकेश's बोर्ड. सो फर्स्ट गेम इट वुड बी हरिका की भी पहली गेम है. साज भाई क्या लग रहा है, टाइम बराबर है, अगर हम ओपनिंग मूव से जाएं तो एक और बिशप G2 पे आ चुका है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करें सेंटर में. I think it's a pretty nice position to have, and I think this is a very, very Harika type position. हमेशा वो knight f3 g3 something Reti related she always does. I think she looks pretty confident to me. Usually यहाँ पे knight a3 पे इसलिए बैठता है कि you want to play ed4 cd4 and knight को c2 पे बिठाओगे आप या फिर आप b5 पे बिठाओगे. Also, it is worth mentioning that this position is like playing Benoni but with the white pieces. इसको रिवर्स बेनोनी भी कह सकते हैं. सेम पोजीशन ब्लैक से भी खेल सकते हैं हम, बट उसमें एक टेम्पो कम होगा. ओके, डी टेक्स e3 इज व्हाट शी टेक्स. नहीं भाई वो मेरा माउस था भाई. ओह, मैं डर गया एक सेकंड के लिए. मैंने कहा भाई डी टेक्स e3 तो बहुत खराब होता है यहाँ पे. बट एक्चुअली इसका टॉप की टॉप प्रेफरेंस है भाई अभी के. रियली इट इज. I wouldn't expect this, but maybe it is. क्योंकि usually d takes e3 ठीक नहीं होता है यहाँ पे. Usually ed4 आप allow करते हो, फिर bishop g5 bishop f6 मरता है, and then it's a normal Benoni type की position. But yeah, let's see what she does. Definitely one thing is for sure कि she is out of prep. Yeah. But I think Harika 25 है राकेश भाई. I am guessing this should be with white pieces. She should be the clear favorite, and यहाँ पे मैं कोई issue face नहीं होगा. नहीं, नो चांस. एंड वो ना होता है ना कि शुरू के गेम्स में एक अगर विन मिल गया, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा हरिका जी का इसके साथ. Yeah, absolutely chat. And Harika is a clear favorite. Second game है दिव्या देशमुख की, जो कल काफी देर तक थोड़ी वो विन कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, पोजीशन में अटकी हुई थी, एंड फाइनली शी काइंड ऑफ पुल थ्रू. यहाँ पे शी हैज द ब्लैक पीसेस. साज भाई क्या लग रहा है स्ट्रक्चर के बारे में? आई थिंक मुझे याद है कौन सी लाइन से आया, ये भी कैरो कैन से आया होगा. क्या लग रहा है स्ट्रक्चर के बारे में? ब्लैक के पास विनिंग चांसेस कितने हैं यहाँ पे? I must say कि I love this setup as black. जब भी मैं हमेशा भी कैरोकान होती है ना, I really avoid this playing with the white pieces. And क्योंकि इसका रीजन ये रहता है, जो वो f6 f7 h7 वो जो ये जो स्ट्रक्चर है ब्लैक का किंग साइड का, इट मेक्स श्योर कि व्हाइट के पास कोई अटैकिंग चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. तो ब्लैक्स किंग इज अल्ट्रा सेफ. कहते हैं डबल पॉन्स आर वेरी वेरी गुड डिफेंडर्स, एंड इन दिस पोजीशन यू कैन सी दैट. In many positions you can also play a move like h5. Maybe not immediate, not anymore, but कभी-कभी आप castle करने के बाद black से h5 खेलते हो. Like imagine that is such a weird that is such a weird idea in this position, but it does work. Usually वो bishop g4 से आपका g6 पे बैठेगा, आप exchange करोगे, and then you will have some double pawns, and eventually black king side पे थोड़ा queen side पे थोड़ा materialize करने की कोशिश करेगा with c5 or some break like that. So I really like this position from the black side. I think this is very very good prep. ये game मुझे बहुत convincing लग रहा है black के लिए. That is amazing, bhai. Let's hope so Divya pulls through somehow. And unka bhi, again, her opponent is around 2150, so she is the clear favorite by 300 plus points. Rakesh bhai, we have Vantika with the white pieces now. ये पोजीशन है, बार ऑलरेडी चीख के कह रहा है कि शी इज बेटर. तो मेरे को तो ऑलरेडी देख के मजा आ रहा है. शी इज द ओनली इंडियन प्लेयर राइट नाउ हु इज बेटर अपेरेंटली आफ्टर 9 मूव्स. भाई ऐसी कौन सी चिगोरिन खेला उनके ओपोनेंट ने यार? ये ओपनिंग ओलंपियाड में थोड़ी रिस्की लग रही है. सही में, मतलब that is why white is completely better. Double bishop advantage, open b file, better development, everything but is going in white's favor. And bishop h3 पे आके आपका long castle रोक सकता है. queen b3 के बाद आप b7 के pawn को कैसे बचाओगे? So many questions black को आंसर करने. And जैसे सहज भाई आप बोल रहे थे कि कल के अपोनेंट्स ना की रेटिंग टिक्कू भाई के आसपास थी, आज वुमेन सेक्शन में इंडिया के अपोनेंट्स की रेटिंग टिक्कू भाई के आसपास है. तो भाई मतलब ओलंपियाड में भी एक राउंड तो जीत जाऊंगा ना मैं. बस काफी है भाई. 100%. बस ठीक है. बिल्कुल. But actually I did a chessable course on this exact opening with Abhijit Gupta. He's also a grandmaster with the black pieces. Actually, I did a course on this, and you are right in saying, tactically
sorry, positionally, white has the center, white has double bishops, and the bar always says that white is better. But at the same time, if you get caught in this opening with the white pieces without any preparation, white के गलती करने के chances बहुत high रहते हैं यहाँ पे, बहुत हाई रहते हैं. लाइक क्योंकि टैक्टिकली ना, लाइक कोई सैक आ सकता है D4 पे, कोई मतलब देयर आर मेनी डिफरेंट वेज दैट यू कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो वंतिका को शार्प रहना होगा यहाँ पे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस गेम. On that note, Sahaj bhai, do you think Chigorin is a good opening for rapid and blitz format than the classical? I think it is good in a situation जहाँ पे in classical, I think the best way you can play Chigorin is against someone in a classical match, चाहे वो higher हो चाहे वो lower हो, and the player did not prepare this opening before the match, then it's the best. क्योंकि तो आपके पास भी सोचने का टाइम ज्यादा है. क्योंकि don't get me wrong, ये पोजीशन ब्लैक के लिए भी आसान नहीं है. ब्लैक को भी वो रिसोर्सेज निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा. साहिल भाई, आप क्यों इतना हंस रहे हो? हमें भी बताओ. यार जब बोल नहीं देते मैं चैट पढ़ लेता हूँ, फिर चैट हंसा देती है भाई. तो मैं ना मैं डीप एनालिसिस करने वाला हूँ चैट के कमेंट ना पढ़ने के लिए. सो नाउ वी विल गो 29 moves deep chat. Someone just call you a WNM. But WNM Anyways, I think Chigorin usually risky दोनों तरफ से, as you said. I think यहाँ white के पास भी अच्छे चांसेस है. दोनों रुक्स यहाँ पे जब बाहर निकलेंगे ना, तो बड़ा मजा आने वाला है. एंड किंग जहां पे भी जाए एक रुक उसका इंतजार तो कर रहा होगा. That is the beauty. So Vantika looking great, and finally we have Tania. That is also looking great, yeah. Currently. क्या यार? Yeah, that is, like 20 plus years of playing chess, and I never thought that there is a WNM title. So yes, chat, OP भाई. भाई WNM की बेइज्जती मत करो यार. कोई ना कोई तो होगा WNM भाई. ऐसे नहीं. I don't. Is that a title? I didn't know that was. भाई होगा ना भाई. जब मैंने तो WNM भी होगा ना भाई. ये क्या है भाई? I didn't know that. I never saw Raju? one. सहज यार, गजब बेइज्जती है. गजब बेइज्जती है यार. Elitist GM. Yeah. And by the way, chat, Tania Sachdev has the black pieces again, and कल उन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेली थी, and she has the black pieces here. And okay, काफी लॉजिकल सिंपल स्ट्रक्चर लग रहा है. ओपनिंग फेज ही है. शी इज बिहाइंड ऑन द क्लॉक, बट नथिंग टू वरी अबाउट सो फार. या राकेश भाई? Yeah, she's just thinking pawn से recapture करूं या bishop से. And she's in the tank for a while. अब देख सकते हैं 15 मिनट सोच लिए already, 10 मूव के अंदर आसपास. So both options look good. Maybe there is an idea कि ये E4 pawn को target कैसे किया जाए, rook E8 bishop F8 करके फटाक से after the recapture of course. So she's just thinking कि देखो डबल pawn तो होना है, तो bishop trade करके डबल pawn करवाऊं या सीधे करवाऊं bishop रख. That is what she's thinking. Yep. And by the way, नीरी भाई ने अभी जल्दी से सर्च कर दिया भाई. There are 3 WNMs online on Chess.com right now. So it's like there are a lot of WNMs भाई. ऐसे रोस्ट नहीं करते भाई. And I genuinely didn't know. क्योंकि all the other titles are FIDE recognized ना. NM is just the US title. So I thought maybe it's just like for both it's the same. हाँ. And chat, not to forget भाई, 1000 लाइक पे होने वाला है मेंबरशिप चैलेंज भाई. क्वेश्चन राकेश भाई 100 लिख के बैठे हैं, बस लाइक कर दो भाई. लेट्स गेट 1000 लाइक जल्दी से भाई. एंड 50 के सब्सक्राइबर्स भी आज ही पहुंचना है राकेश भाई. हाँ सच्ची 50,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए चेस को, चेस 24 इंडिया पे. बट मैं क्या बोलना चाहूंगा, आप ना वो चैलेंज बहुत सही करते हैं टिप्पू भाई. कैन वी डू अ क्विक चैलेंज फॉर चैट? भाई चैट ना हाथ थके हुए चैट की और नहीं कर पाएगी यार. आई कैन ट्राई. ठीक है. सो चैट चैलेंज करते हैं. हमारे चैट को अंडर एस्टिमेट मत करो. चलो एक मौका देते हैं चैट को भाई. चैट देखो 11:30 वॉचिंग है, पॉसिबल है. अगर भाई अगले 6 मिनट में 1000 लाइक हो गए, तो हम एक बंदे को भाई 2 महीने के मैच देंगे. 1 महीने के, तो 2 महीने तक वो बंदा चिल करेगा भाई. सो चैट, लेट्स गो 6 मिनट्स. इफ वी गेट टू 1000 लाइक्स डॉट 1001 शगुन के लिए, तो एक बंदे को हम 2 महीने के देंगे 1 महीने के लिए. लेट्स सी चैट क्या होता है. एंड फिलहाल के लिए आई थिंक इट्स टाइम टू जंप टू द ओपन सेक्शन बैक. वी हैव गुकेश ऑन स्क्रीन, एंड जहां पे 9 के बाद 9 D5 खेला है. आई थिंक राकेश भाई आपने मूव बताई थी 9 D5 के बाद 9 टेक्स C4, 9 टेक्स F4, और ये बिशप पेयर ब्लैक ने ले लिया है. व्हाइट का किंग भी थोड़ा सा वीक. एंड अभी यहां पे आता है नाइट टू F6. एंड राकेश भाई, दिस इज द काइंड ऑफ पोजीशन, डायनामिक पोजीशन, जहां पे ऑल रिजल्ट्स आर पॉसिबल, एंड ऐसी ही पोजीशन गुकेश को चाहिए. बिल्कुल. And things like if you go queen C7 from the black side, F4 के पॉन को बचाने के लिए E3 खेलेगा व्हाइट. मैं अगर व्हाइट प्लेयर हूं तो मैं ना
बिशप F3, किंग H1 और रुक G1 लाना चाहूंगा क्योंकि ये G फाइल खुल गया है तो G takes F4. दैट इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया क्योंकि आप देख सकते हैं करेंटली 8 का रुक बिशप ऑन C8 इफ यू हाईलाइट दैट टिप पॉइंट दे आर कॉट ऑफ साइड, मतलब एकदम एक साइड के बोर्ड पे अटक चुके हैं. एंड ऑन दिस साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड, आई कैन क्रिएट सम काउंटर प्ले. बट मेरे सामने तो कोई बैठा नहीं है वर्ल्ड नंबर 5-6 वगैरह, तो गुकेश के सामने ये करने में आप बहुत डरेंगे शायद. Actually, but I think regardless, I think the idea is, I think, very nice because double pawns तो है, but you're using the double pawns to your advantage. क्योंकि double pawns के साथ साथ एक फाइल भी खुल जाती है. You're using that file to create some kind of an attack. I know, but अगर आप board से उठोगे, then you see the player, you're like, okay, maybe I shouldn't. Yeah, maybe I should play a bit more safer. That's probably what I would do here as well. E3. E3 just by safe. E3 जैसी चाल यहाँ पे खराब नहीं हो सकती व्हाइट के लिए. साहिल भाई, I can't hear you. वाह भाई वाह, आवाज ही बंद कर दी साहज भाई यार. लोअर टेक्निकल को बोलना ही नहीं स्ट्रीम पे यार. Rakesh bhai, when you don't say anything, I'm thinking कि only I can't hear him. So I was fixing things on my end and seeing कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं. But राकेश भाई मजे ले रहे. ये एक ऐसा आदमी है टिक्कू, मतलब इसके प्रॉब्लम के वजह से अपन अपने डिवाइसेस चेक करने लगते. नहीं भाई, नहीं यार, साहज भाई बोले ही नहीं दे रहे थे मुझे यार, म्यूट कर दिया था. Magnus by the way is not playing today chat. So Magnus ने आज भी रेस्ट लिया है, so he'll be relaxing today. He'll be joining tomorrow from round 3 जहां पे नॉर्वे टीम को उनकी सख्त जरूरत होगी. तो मैग्नस आज रेस्ट पे है, तो he'll be back tomorrow. देखो भाई, speaking of rest, I thought अनीश गिरी रेस्ट लेंगे क्योंकि I don't know if his luggage has arrived from KLM airline अभी तक. भाई आई थिंक आ गया होगा लगेज, बिकॉज आई एम गेसिंग कि कपड़े तो उन्होंने चेंज कर लिए होंगे, वरना उन्होंने ले लिए होंगे. विदित को शॉपिंग पे लेके चले गए होंगे, यार चल भाई अच्छे कपड़े लेके आते हैं थोड़े से. या चैट क्या कह रही है भाई? Gukesh is the most chill player in the tournament. I think tournament I don't know, but he's the most relaxed, the one with the most calm nerves. There's no doubt about that. वो तो है 100%. Vidit भी हो सकता है. I think Vidit is also right up there. I think Vidit को भी बहुत एनर्जी है भाई. Vidit आज full of energy है. आज तो वो काम नहीं है, एक बार नजर मार ही लेते हैं, बस उसका नाम आ ही गया, तो let's go to Vidit's camera and have a look. I just feel कि Vidit is a very, because of the whole meditation stuff, I think he has come a very, very long way, and I think he remains very calm. I think always, which I think is a very good quality to have. Taj bhai, knight is on E7 now. तो अगर आपको याद नहीं था ये क्यों खेलते हैं, आप याद कर लो भाई, बिकॉज आने वाला है नाइट C8. आई थिंक भाई नाइट C8 आएगा. नहीं, वो नाइट ना F5 पे भी जा सकता है, वो नाइट C6 पे भी जा सकता है, और C8 पे भी जा सकता है. I think H6 खेल लिया तो वो G5 खेलेगा पक्का. बिशप H7. I think he will play a G5 at some point, yeah. And G5 के बाद किंग कहाँ जाने वाला है? Will it go to the queen side, Saj? Yeah. That's the idea. Yes. You can also put. I mean, I think I don't necessarily believe कि Vidit is out of prep. I know time देख के लग रहा है ऐसा, but I think Vidit spent quite a bit of time thinking कि भाई इसने ये खेला है मेरे साथ, तो he must be going through his games in the past कि उसने क्या क्या पहले खेला हुआ है. Because of course I think he would know multiple lines here जो उसको पहले से पता होगी. तो based on what his opponent has prepared, probably he played something that he wouldn't have seen on this day itself. इसलिए मुझे लगता है कि उसका टाइम कम है अभी के लिए. By the way, Niri bhai updating us कि knight goes to C8 to facilitate C5 and then sometimes goes knight A7, knight C6. भाई बड़ा ही लंबा प्रोसीजर है भाई, if you ask me भाई. ये तो कान ऐसे पकड़ने वाली बात है भाई, सीधा पकड़ लो. Boy, even I didn't even know that. Yeah, that does sound believable though. That does sound believable. It's a weird opening, yeah. And I think यहाँ पे सोच, yeah. And पीछे अर्जुन भी दिख रहे हैं. He is also looking. I think अर्जुन के एनालिसिस करने का तरीका अलग ही भाई, वो दीवारों पे देख के एनालाइज करता है. So maybe it's time to go to Arjun's game. नजर मारते हैं भाई वहां पे क्या चल रहा है. He is just winning, I think, क्योंकि ना लंदन ओपनिंग हुआ है. And look at Arjun's position, सहज भाई. बाप रे. Oh, look at this. So bishop D6 पे he played 95. Castle yes. Bishop D3. Recommended by yours truly, by the way. Wow. तो क्या लगता है आपका कोर्स देखा होगा इसने अर्जुन ने भाई?
थोड़ा डर लग रहा है अर्जुन के लिए। जीतेगा भाई जीतेगा भाई भाई जीतेगा यार आई डोंट नो यार, मतलब 2500 रेटिंग तो होनी चाहिए थी यार खेलने के लिए भाई, ए, थोड़ा सा लग रहा है। नहीं नहीं, उसका अपोनेंट भी 2500 से कम है ना, तो ही नोज कि इट विल वर्क, ही नोज इट विल भाई वर्क। ये हाँ। साहब भाई जब 4 पॉइंट कम हुए थे वो यही ओपनिंग खेली थी उन्होंने, एग्जैक्ट 95 थम्स लाइक। डाउन क्यों किया टिप्पू? थम्स डाउन क्यों किया अर्जुन के थम्स कैप्टन डाउन को? क्यों किया अभी? थम्स थम्स डाउन डाउन, क्यों किया अभी यार? हाँ, ये टिक्कू भाई कर रहे हैं तब से, पता है मेरे को थम्स डाउन क्या कि हुआ? टिक्कू भाई तब से टिक्कू टिक्कू भाई कर रहे हैं, क्योंकि पहले मेरे को थम्स अप दिखा था कुछ टाइम पहले, वेरी रैंडमली, एंड अभी जब मेरे कोर्स की बात कर रहा है, आई जस्ट रैंडमली सी ए थम्स डाउन। वाओ भाई ये थम्स अप थम्स डाउन की कहाँ दिख रहा है तुम्हें? मुझे यही समझ नहीं आ रहा, दिख कहाँ अरे रहा है भाई? मेन मेन कैमरा पे, मेन कैमरा अर्जुन तो के कैमरा। कैमरा में मेरा क्या कंट्रोल भाई? कैमरा तो बाहर से आ रहा है ना भाई, फीडे से आ रहा है। मैं एमएल टॉस कह रहा हूँ भाई, अब थम्स अप छोड़ने का एक, अब थम्स डाउन छोड़ने का तो टॉस कीजिए। ये क्या लॉजिक है? एंड बाय द वे ये बिशप एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द मेन अटैकिंग पीस, एंड ऑफ कोर्स मारा उन्होंने, कोई तरीका है नहीं, अगर बिशप पीछे लगे तो कैसल करना मुश्किल हो जाएगा। मारा नाउ द नाइट इज ऑकवर्ड, बट एटलीस्ट एक अटैकिंग पीस जा चुका है। एंड नाउ पॉन टू h4, बाप रे। सो वी आर स्टिल इवन विदाउट द बिशप लॉन्चिंग टुवर्ड्स एन अटैक। h4 is a very very nice move. The idea of h5 h6, ताकि दो चीजें हो सकती हैं, तो ब्लैक h6 खेलेगा, उससे हमें वो h6 पे एक छोटा सा हुक मिल जाएगा, जिससे द क्वीन कैन मे बी गो टू g3, यू कैन कैच सम बिशप h6। भाई थोड़ा एरोज भी दिखा दो यार, हाँ ऐसे हाँ, बोलो समझ बोलो थोड़ी ना आएगा। बोलो बोलो। h5, लेट्स से व्हाइट प्लेज h5 एंड ब्लैक कैन गो h6। अगर ब्लैक h6 नहीं खेलता तो हम h6 खेल सकते हैं, एंड देन वो परमानेंटली वो पॉन h6 पे विल हैव सम मेटिंग थ्रेट्स। अगर ब्लैक h6 खेल लेगा तो हम अपनी क्वीन g3 पे बिठा देंगे, यू नो एंड एक बार या अगर क्वीन g3 पे बैठ गई, then you will always have that x-ray over the black king. This is like the general idea with behind this plan. But I think he looks really good, यार. I think he looks really good. Also, question, अर्जुन किधर कैसल करेगा? आई थिंक He's not डिले। castling king side. क्या, आई डोंट थिंक इज कैसलिंग क्वींस आल्सो। आई थिंक डिले करेगा जितना पॉसिबल हो, देयर इज नो स्ट्रेस राइट नाउ, सेंटर काफी सॉलिड है, एंड नाइट बिल्कुल स्टूपिड लग रहा है। सो ब्लैक को भी ये देखना है कि भाई ही इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू चैलेंज दिस एट सम पॉइंट, एंड उस टाइम पे हाउ इज अर्जुन गोइंग टू हैंडल दिस नाइट बीइंग ऑन c6, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सब कुछ एक्सचेंज हो गया तो भाई फिर तो दिस पॉन h4 मेक्स नो सेंस एंड ब्लैक इज एब्सोल्युटली फाइन। Yeah, true. True. That makes sense. Also, Chad, Sahaj notices everything. You just can't notice his rating. True, भाई. True. अभी क्या इस टूर्नामेंट आज के बाद अच्छे से नोट करूंगा मैं अपनी रेटिंग को, ठीक है? फिर उसके बाद विल टॉक अगेन, ठीक है? पर अभी के लिए भाई सहज का रिवेंज आर्क स्टार्ट होगा अभी। भाई सारे भाई ऑपोनेंट्स का तूने अभी से सारी तूने लंदन 3 में पॉइंट एकदम। लिए थे, तूने 3 पॉइंट लिए थे। तूने 2 लिए थे, तुझसे 4 लूंगा भाई। चैट आजकल मे रोस्ट बी मोड में ही रहती है यार। बाय द वे एक और वेरी साहिल गुड को देखती इंपॉर्टेंट, रहती है ना। वेरी गुड इंपॉर्टेंट बाय हितांश भाई, आई थिंक हर्षित भाई, कि बेसिकली शायद वो कैमरास आईफोन्स होंगे, एंड आईफोन्स में कुछ डिफॉल्ट होता है कि मतलब वो थम्स अप थम्स डाउन चलता रहता है। आई डोंट नो, किस मैंने कभी आईफोन यूज नहीं किया है, तो आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्स इट, बट या आई थिंक दैट्स व्हाई यू विल सी दो थम्स अप जो भी आ रहा है। या फिर सलमान खान इज अ ब्रांड एम्बेसडर, कोई कुछ तो है भाई, देखना पड़ेगा कैसे होगा। क्या पता। मैग्नस आज क्यों नहीं आ रहा भाई? वो कह रहे हैं कि नॉर्वे टीम मेरे बिना जीतो फिर मैं रीइंफोर्समेंट की तरह आऊंगा। कल अरन तारीख का ड्रॉ हो गया तो लाइक यार ऐसे नहीं चलेगा, पहले 4 पॉइंट खुद से लेके आओ फिर मैं खेलने आऊंगा। तो वो कल आएंगे फिर से खेलने के लिए, कल और स्ट्रॉन्गर टीम होगी। बाय द वे कल क्या पता इंडिया नॉर्वे का हो जाए भाई। आई वुडंट कंप्लीटली डिस्काउंट दैट, राइट? इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इंडिया नॉर्वे का, डू यू हाँ थिंक गुकेश डिफिकल्ट, प्लेस? डू यू थिंक ऑफ गुकेश प्लेस? कोर्स ऑफ कोर्स हो सकता है यार, एंड ऑफ कोर्स मैं क्योंकि गुकेश खेलेगा। आई थिंक प्रग वर्सेस मैग्नस माइट बी क्योंकि मैग्नस हैज दैट साइकोलॉजिकल थिंग अगेंस्ट प्रग, नो? तो आई थिंक दैट कुड बी आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच टू सी ऑन बोर्ड वन। एंड बाकी के, आई मीन मैग्नस को छोड़ के ऑन एवरी अदर बोर्ड वी आर अहेड इन रेटिंग, तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच कि बाकी के प्लेयर्स कौन है। तो आई थिंक आल्सो रेस्टिंग गुकेश ऑन दैट डे माइट नॉट बी द वर्स्ट आइडिया। Yeah, but I think my angle is because we are going to see the top 4 players. If everybody is in form, I think Magnus के सामने कोई भी हो, he would be the favorite. Also depends on the colors, right? So colors white किसके हैं? I think that's also an important factor. कल Indian team के white आने हैं likely, तो अगर white है, then maybe giving Gukesh the white pieces against Magnus, he would look forward to it. He would say, भाई मैं rest, कौन सा rest? काहे का rest? What do you think, Rakesh भाई?
नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत आगे का सोच रहे हैं हम, क्योंकि कल तो नहीं हाँ खेल सकते हम नॉर्वे के साथ. नॉर्वे इज आल्सो गुड, हैज अ गुड सीड इन लाइक 7th सीड है हाँ टूर्नामेंट. हाँ 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 मे बी राउंड 4 या राउंड 5 हो सकता है, बट आई थिंक वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी गेट देयर. हाँ हाँ हाँ. एंड चैट फिलहाल के लिए भाई क्वींस का जहाँ पे अर्जुन की गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग. कैन वी गो टू किस गेम पे चले साज भाई? एनी प्रेफरेंस? फिलहाल तो रफली सारे बार्स इवन स्टीवंस ही लग रहे हैं. नोबडी हैज अ क्लियर एज. मे बी वी कैन गो टू द गेम ऑफ गुकेश अगेन. एक नजर मार के आते हैं उधर भाई क्या चल रहा है गुकेश में. Oh, एंड he actually white ने किंग एच वन रुक जी वन नहीं खेला, ब्लैक ने किंग एच एट खेल दिया. राकेश नहीं, आई भाई. थिंक हद है वाइट यार, वाइट हद ने है. भी खेल दिया भाई. वाइट ने ओह भी अच्छा खेल दिया अच्छा. किंग एच वन एंड देन ब्लैक रियलाइज कि भाई अब किंग एच एट भी खेलना पड़ेगा. सो बोथ द किंग्स आर ऑफ द जी फाइल. रुक जी वन इनकमिंग. एंड देन लेट्स सी क्या होता है. एक एक प्रिडिक्शन बताओ इस गेम की राकेश भाई, एंड देन वील चेक आउट अ कपल ऑफ गेम्स ऑफ द अदर अदर कंट्रीज. डिंका गेम देख के आते हैं, कारुआना गेम देख के आते हैं. व्हाट डू यू थिंक इस गेम में रिजल्ट क्या होगा? I think it's going to be a draw in this. पहले प्री गेम प्रेडिक्शन के साथ स्टिक करना चाहूंगा, because I think knight e4 can follow with a series of exchanges, and white is super solid. Double pawn है agreed white के पास, but Sahaj, I don't see any weaknesses in white's position. हाँ, I think that's a fair assessment. और I think अगर कुछ रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो तब आएगा जब वाइट थोड़ा ओवर पुश करेगा, which Hmm. I Correct. don't see. I mean, if I think he was playing against someone else, I think maybe that the chances of that are a bit higher. But अभी के लिए I don't see that happening. Yeah. I think he would be more than happy to play solid against this player, क्योंकि it's also very much possible कि Gukesh is the one who ends up pushing. तो I would like to stay with my original thing too, कि मुझे लगता है इस गेम में ड्रॉ के चांसेस काफी हाई है. एंड साहिल भाई, देखते हैं व्हाट डू यू थिंक? भाई. आई एम तो इन फॉर द विन भाई. मुकेश निकालेगा किसी तरीके से. लेट्स सी. ये रुक को कहीं ऐसे जैसे ही आएगा यहाँ पे पकड़ लेगा, कहीं पे ट्रैप कर लेगा. लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. आई डोंट नो हाउ ही विल विन ये बट तो होप हो गया भाई ना भाई. ऑब्जेक्टिव एनालिसिस गया तेल लेने, भाई मतलब भाई आई देखो होप ही विन. भाई भाई बीकन हो ऑफ गई होप. हो गई हो गई, जीत. भाई तू छोड़, जीतेगा वो बस. नहीं 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 भाई, वो जीतेगा भाई. पूरा भरोसा है भाई. वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीतनी है तो ये भी जीतना ही पड़ेगा भाई. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. विल कम बैक टू दिस एंड चैट. एक बार नजर मार के आते हैं यूएस टीम में. हु इज द फर्स्ट सीड? बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम. हियर इट इज. इट्स टिन जिंगजाओ वर्सेस फैबियानो कारुआना. निधि भाई डू चेक इफ वी कैन हैव द कैमरास. अगर आ जाएंगे तो बढ़िया है, वरना वी कैन स्टिक टू गुकेश अंटिल देन. एंड दिस इज द पोजीशन. बोर्ड 1 कारुआना की पहली गेम. क्या लग रहा है? और ये पॉन मर रहा है तो क्या हम E5 मारेंगे साज भाई? Yeah. आई थिंक इफ ब्लैक क्वीन डी थ्री तो मारना फोर्स्ड ही है ना भाई, अदरवाइज यू जस्ट लूज द पॉन फॉर फ्री. तो क्वीन डी थ्री तो मारेगा ही. And I think 95 is also very very likely. Sorry, did he just take? या हमने मारा No, वो. that's me. That's me. Okay. Now maybe queen f5. Yeah, I think you have to figure out where the queen is best placed. Queen f5 looks logical. Hmm. अब थोड़ा मुझे f2 का pawn आपका अटैक्ड है तो उसको बचाना जरूरी है. Knight f3 is a good move. Yeah. Maybe now rook e8. I don't know. यहाँ पे this is the type of positions जहाँ पे black के लिए next 3-4 चालें निकालना बहुत बहुत मुश्किल है. If you make a mistake here, then you are going to be in a worse position for the remaining part of your match. But लेकिन yeah, if you find the best move, then I think you can maintain equality. But let's see. This is not an easy position to be in, especially against Caruana. एंड राकेश मेरा सवाल ये है कि फ्रॉम कानूस पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है ना ये गेम जीतना उनके लिए, बिकॉज ही नोस कि यूएस स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ तो उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर होगा क्या यहाँ पे टू विन फॉर द यूएस, एंड कुड दैट लीड टू समथिंग जहाँ पे ही इज ओवर पुशिंग एंड देन मेक्स अ मिस्टेक? नहीं, आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा प्रेशर होगा, और वो हारेंगे भी. प्लस ही इज प्लेड ना वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब उससे तो कम ही स्ट्रेसफुल है ये ओलंपियाड. सो he'll be very objective. अगर ड्रॉ हो रहा है तो he'll take a draw, क्योंकि उसको पता है पीछे के 3 बोर्ड्स पे काफी बड़ा एडवांटेज है यूएस का. एंड टीम टूर्नामेंट्स थोड़ा हिट ले लो रेटिंग के लिए, बट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है 2.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 4. तो आई थिंक he'll play objective, he'll try his best of course, बट जैसे कि हम इसके ये गेम के बाद देखेंगे, वो जो रेटिंग डिफरेंस है ना बहुत बढ़ते जाएगा बिटवीन द यूएस टीम एंड द सिंगापुर टीम.
एंड ऑल्सो उनके ओपोनेंट भी ही इज लुकिंग लाइक अ यंगस्टर, तो कुछ भी हो सकता है. तो कारुआना फिलहाल क्वीन D3 मार दिया ओपोनेंट, देखते हैं क्या होता है. हिज ओपोनेंट इज क्लियरली पुटिंग अप अ फाइट हियर. एंड देन वी हैव डोमिंगेस. भाई ये कैसी एंट्री है यार वाओ साज भाई. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन टिकू भाई. भाई ये क्या था? ओ भाई ड्रॉ 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 भाई ड्रॉ. So, I mean, isn't that really? I mean, if US draws this, that would be kind of a slight disappointment for them, no? Oh, this is the नहीं नहीं, player, yaar. This is the guy who actually played in Budapest like 3 events, and he scored a Grandmaster nom in one of the events. I'm Yeah, not sure if he's a GM already. Yeah, he is. He is. Yeah, he he is is. he is he's a GM. Yeah, yeah, yeah. He's 17-year-old Siddharth Jagdish of Indian origin. yes, yes, yes. And So and I remember when I played him, he was around 2450 or so, but उसने वहां पे GM nom किया था. He's a very very talented player. एंड आई थिंक जैसे हमने डिस्कस करा था भी पहले कि इट लुक्स लाइक वाइट प्लेयर्स नॉर्मली पुश करते हैं स्ट्रॉन्गर टीम्स में, एंड ब्लैक प्लेयर्स विल बी हैप्पी फॉर अ ड्रॉ. डोमिंगेस का भी अभी हल्का सा 2-3 पॉइंट शायद घटेंगे रेटिंग के, बट उसको पता है कि बाकी की टीम तो जीत जाएगी व्हाइट से, स्पेशली फाबिया या फिर लेवॉन है. सो नथिंग मच डोमिंगेस के डोंट. सहज ने आई थिंक स्ट्रीम के स्टार्ट में बोला था, if a white player 25-50 plays really solid, it's very difficult to beat them, right Sahaj bhai? Yes, of course. I mean, this is an example of that. But I think uske saath saath, like look at what Gukesh did, for example. He went into a, look at what Vidit did. Vidit went into like probably not as comfortable opening for himself either, ताकि गेम लंबा चले, ताकि ताकि गलती करने के चांसेस ज्यादा. बिकॉज अगर आप इफ यू प्ले द बेस्ट चेस, देन दिस इज व्हाट हैपेंस, स्पेशली अगेंस्ट अ लो रेटेड ओपोनेंट. सब लोग ऐसा ही करते हैं. तो आई थिंक Correct. यहाँ पे जीतना, आई एम नॉट इवन श्योर इफ इवन मैग्नस कार्लसन कैन विन दिस पोजीशन एज ब्लैक अगेंस्ट दिस अपोनेंट, क्योंकि कुछ इम्बैलेंस नहीं है भाई. मेरा बिशप भी सेम कलर का है, हमारा बिशप भी सेम कलर का, पॉन्स भी सेम है, सेम पीसेस हैं. कुछ इम्बैलेंस नहीं है बोर्ड पे, तो यहाँ पे जीतना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. And that is great news for Singapore. जहाँ पे first board पे भी position अभी technically it's complicated, but it's at least it's close to equality. Second board पे तो they are very likely to have a draw, and third board पे Levon, who, well, I don't know how he survived yesterday, but for now this position looks very good for Levon. I love this position. Maybe knight f3 is his last hope, but फिलहाल के लिए yeah, Aronin is back. Yeah. Yes, sacrifice an exchange. देखो भाई, आप तो बोल देते हो, मुझे और सहज को ही सोचना पड़ता है पोजीशन के अरे भाई भाई एक्सचेंज छोड़ो ना, ये रुक क्या करेगा भाई. किंग देखो भाई, किंग उफ क्या ही काटा है भाई किंग को. Yeah, one option will be bishop f6 hitting that. bishop f4 से पिन भी कर सकते हो आप नाइट को with the queen. But yeah, I agree. And look at his time, Tiku bhai. 1 hour 34 minutes for Lev. This is like in his laptop, in his preparation for sure, मुझे लग रहा है. बिल्कुल बिल्कुल 100%. I mean Aronian, he does this a lot. I think he has one of the best preparations in the world, and I think we are just seeing an example of that. You were saying knight f3 is what the computer you were saying was the best move in this position. yes Raj bhai, बिल्कुल. I see. उसके बाद क्या हो रहा है भाई? queen e3, knight g5, queen g5. Yeah, even this is not so easy to play for black. No, I mean you're still an exchange up. You have captured my dark bishop, पर लेकिन किंग अभी भी आपका खाली मतलब सेंटर में पड़ा हुआ है, कहीं उसको कासल कर, आप कहीं कासल नहीं कर सकते. And I feel like this is very very. Also look at e5, knight e4, knight d6 over. Correct. That is a huge threat. And भाई Lev देखो कल के गेम में he knows he kind of messed up. Look at his focus right now. That is a sign of a superstar. Strong 2700, 2-time World Cup winner. Levon Aureli, he messed up yesterday, but now he's in the zone. He sacrificed an exchange. 1 hour 34 minutes on his clock. And I think Aronin is going to win this game for sure. Yep, he has to do it. And as you said, time पे बहुत आ गया है, तो बढ़िया लग रहा है उनके चांसेस जीतने के. फाइनल बोर्ड पे अगर हम जाए, जहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर केविन खेल रहे हैं अगेंस्ट रेयर ऑप्शन, यहाँ पे भी वही पोजीशन लग रही है यार. ऑल्दो दिस इज अ बिट मोर इम्बैलेंस्ड, यहाँ पे 3-3 वर्सेस 4-2. बट क्या लग रहा है साथ में, यहाँ पे कितने चांसेस होंगे व्हाइट प्लेयर के ड्रॉ करने के?
I think chances जो पहले वाला गेम था, I feel that game is more drawish. यहाँ पे as you said there is a more of an imbalance क्योंकि 4 versus 3 versus 3 versus 2. पर लेकिन still I feel यहाँ पे draw के chances are like 90% and above. You have to be, I mean, something has to go really really wrong. आप कुछ blunder करो या फिर आप कोई बहुत बड़ी mistake करो जिससे आपका opponent grind कर सकता है. अगर कोई जीतेगा इस position में तो वो game बहुत लंबा चलेगा I feel. Otherwise, I think this game also looks like a draw. So I think US team might, अगर I mean, अगर सब कुछ बाकी सब कुछ अच्छा गया तो it could be a 3-1 score, which is I think not which is I think a great result for them, but also a great result for us. एब्सोल्युटली. एंड कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए यूएस टीम के लग रहे हैं कि एक गेम पक्का ड्रॉ, एक गेम के ड्रॉ के हाई चांसेस, कारुआना आल्सो नॉट विनिंग है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है टीम के ऊपर बिकॉज दे डिड नॉट स्टार्ट ऑफ वेल. एंड अरोनियन फिलहाल के लिए ही आल्सो हैज टू प्रूव कि भाई मैं यहाँ पे अटैक करने वाला हूँ. एंड वन लुक एट द डिंग लिरन गेम चैट. एक बार चाइना में कहते हैं बिकॉज अर्जुन के ओपोनेंट ने हल्की सी गलती करी है. सो डू यू वांट टू क्विकली गो टू चाइना बिफोर वी गो देयर? फाज भाई, व्हाट डू यू थिंक? Yeah, let's do it. Let's do it. So Ding Liren playing a 2600 Grandmaster already. So this is already game 1 में ही not like a total cakewalk for Ding. उनको प्रूफ करना पड़ेगा यार यहाँ पे कि okay he is going to win this match and it will be a tough fight. But फिलहाल के लिए पोजीशन काफी अच्छी लग रही है. Yup, definitely. And I also think this is definitely some preparation. Usually ना मैं confused ये हूँ ये देख के कि क्वाइट की कोई D3 पे बैठी है. Usually वो कोई D2 पे होती है. So I'm not sure how that happened. It must be some new preparation. Also, he's playing a 2600 opponent. Yeah, that means this is going to be a tough match for him for sure. Yeah. And टाइम पे लेकिन काफी आगे है. सो फिलहाल के लिए डिंग अटैक की तरफ बिल्डअप करते हुए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सैक्रिफाइस हो सकता है. कभी भी नाइट D5 का भी ख्याल रखना है. लेट्स सी हाउ दिस गोस. सो डिंग पे थोड़ा प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा. एंड कई लोग कह रहे हैं भाई कि अर्जुन ने गलती करी है. चलो भाई वही नजर मार के आते हैं जल्दी से, क्या गलती करी भाई अर्जुन के ओपोनेंट ने. एंड ऑफ कोर्स इट्स द लंदन सिस्टम है. और कहाँ गलती हो सकती है यार, यहीं पे होगी ना. Oh, knight E4 is what he played. Knight E4. Wow. That doesn't look very good. I'm not sure why, because I really want to play knight takes E4. But before you play a move like that, you have to be sure if this move is working or not. भाई रानी को लाते यार, और क्या चाहिए. F6 आ रहा है ना यार. F6. Oh, Queen E6 मर रहा है. Queen E6. Oh भाई चैट को दिखाते हैं ना. F6, Queen G4, F6, Queen E6, King H8. Chat. Wow. Chat, white to play. Chat, white to play. Come on, let's go. White to play, भाई. What is the move? क्या बढ़िया बढ़िया टैक्टिक दिखती है यार. बड़े यही तो देख के मजा आता है यार. This is so nice. And by the way, chat, I think we missed a couple of mods. I think आज हम एक दो mod भी बना सकते हैं भाई. तो आई एम थिंकिंग कि यार 1000 लाइक पे मॉड का चैलेंज कर लेते हैं आज. मेंबरशिप का 2000 पे करेंगे. व्हाट डू यू थिंक राकेश भाई? अरे डन डन, बिल्कुल. मॉड्स की कमी दिख रही है और आई थिंक एग्जिस्टिंग मॉड्स भी काफी रूड हो गए हैं फायर आर्म. एग्जिस्टिंग मॉड मजे ले रहे भाई. सो वी विल हैव एंड चैट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट भाई. सिर्फ हमारे मॉड ने ही गलत आंसर दिया है नाइट F7. बाकी एवरीबॉडी इज करेक्ट. नाइट G6 चेक इज द मूव. द किंग इज ट्रैप्ड एंड यहाँ पॉन से मारोगे तो पॉन से, और ये रुक से हो रही है चेकमेट. तो भाई क्या ही ब्यूटीफुल फिनिश होगी. बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे 1200 नहीं भाई 2500 बैठा है सामने. तो यहाँ पे देखते हैं. एंड ऑफ कोर्स बाय द वे 94 प्लेड एंड क्वीन G4 ऑन द बोर्ड. सो इट हैज बीन प्लेड. सो फायर भाई, थोड़ा अटैक लग रहा है भाई. G7 पे H6 also could be in the air. साहिल भाई, I just want to mention something. अगर ये प्लेयर 2500 है तो मेरे को क्यों तोड़ते हो आप 2496 के रेटिंग में? मैं 2500 क्यों नहीं हूँ फिर? भाई वो ओलंपियाड खेल रहा है ना भाई. ओह अच्छा. ओके, that makes sense. लोकेशन मैटर्स. नो भाई, लोकेशन मैटर्स भाई. लोकेशन मैटर्स. अगर वो ओलंपियाड नहीं खेल रहा होता तो वो भी 2400 होता. भाई लोकेशन मैटर्स. ट्रस्ट नहीं भाई. आज सुबह यहाँ पे ना नोटिफिकेशन आया कुछ जर्मनी टाइप का भाई, कुछ खतरनाक वार्निंग सिस्टम का. राकेश भाई को भी आया होगा भाई साहब. सुबह ना ऐसे नानियां लग रही सुबह भाई. फोन बज पड़ा, अलर्ट अलर्ट. मैंने कहा भाई आ गई मिसाइल. भाई that is such a scary thing to, but it was just a test, right? Like, but that is such a scary thing to witness. Wow. मेरे साथ सिर्फ एक बार हुआ था यूएस में, like when I was in university. तब हुआ था मेरे साथ. Then I was so scared.
तो इसलिए वही ना वो टेस्ट था एंड बिल्कुल वो सर्कल फिर से आ चुका है हमारे पास. तो 9 g6 चेक वाज द मूव एंड मैक्सिमम लोगों ने गेस किया. एंड यहाँ पे क्वीन जी4 के बाद राकेश भाई यहाँ प्रेशर है जी7 थोड़ा सा एंड h6 कैन बी इन द एयर एंड किंग इज टेक्निकली फ्री टू कैसल ऑन द क्वीन साइड इफ ही विशेस टू. अब बात यह है कि आगे अटैक कैसे बढ़ाए. रुक h3 रुक g3 भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. व्हाट शुड ब्लैक प्ले. यहाँ ब्लैक का पॉइंट क्या है भाई. ब्लैक की मूव भी इजी नहीं है निकालना. Very difficult, ideas like h6 भी हो सकता है, forcing black to play g6 ताकि वो darks नहीं, white का भाई, white, हाँ व्हाइट का. हाँ ताकि अभी कौन black ब्लैक को से g6 हाँ force करो black के लिए ताकि वो ना black square सारे weak हो जाए. हाँ So plenty of ideas here. Rook h3, rook g3 also looks good. And actually, if we can show that to chat, rook h3 खेल लिए white से. लेट्स से ब्लैक ने खेला ये and now rook h3. हाँ, rook h3 वापस मे बी rook d8 या कुछ. हाँ, rook g3 एंड now g6 के बाद ना अपना पूरा तोड़-फोड़ कर सकते हो वहां पे. takes knight takes, pawn takes, queen takes and checkmate. So it just shows कि भाई 2-3 मूव में गेम खत्म हो सकता है अगर ब्लैक इज नॉट केयरफुल. ऑफ कोर्स ब्लैक विल नॉट अलाउ दिस, बट वी आर जस्ट शोइंग कि अर्जुन का क्या आइडिया है ऑफ प्लेइंग क्वीन g4. एंड सहज भाई, हाँ, if black plays f5 to kick the queen out, क्या होगा फिर? How will white continue that? I think firstly, that's I think maybe not appropriate क्योंकि आपने वो f5 खेल के तो आप e5 के नाइट को कभी टच नहीं कर सकते भाई. कभी भी टच नहीं कर सकते. तो आई कैन जस्ट मूव माई क्वीन टू e2, आई कैन मूव इट टू g3. अब मुझे ना अटैक करने की उतनी जरूरत नहीं है इमीडिएटली. एटलीस्ट आई कैन जस्ट चिल क्योंकि मेरा नाइट जब तक e5 पे बैठा रहेगा तब तक आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे. मे बी इवन क्वीन e2 साहिल भाई. आई इवन लाइक द आइडिया ऑफ क्वीन e2 क्योंकि बाद में ना आई कैन ऑल्सो थ्रो g4. आई कैन ऑल्सो थ्रो g4 एट लाइक सम पॉइंट. फिर g5 के थ्रू बहुत क्रेजी सा अटैक आ सकता है. आई थिंक बोथ आर फाइन. So, and f5 is just a very uncomfortable move to make as black. Because I get that it may not be the worst move in the position, but still यार f5 के बाद with that e5 का knight, e6 का pawn, इतना सब कुछ वो एकदम weak सा लग रहा है सब कुछ. It's like you are saying कि हाँ भाई मैं nobody is going to mate me in the next 10 moves, but लेकिन for the duration of the game I'm going to have a weakness. That's a very tough call to make on the board. So I don't like the move f5 so much. I agree, Sahaj. Then the another point is, what about a move like c takes d4? हम किससे मार रहे हैं? Because अगर इससे मारते हैं, then suddenly this bishop becomes loose. इससे मारते हैं तो यार ये check से एक आ रही है uncomfortable सी, which I technically don't want to deal with. So how do we grab back here? It's a tough question, and I think उसके लिए कुछ calculation का जरूरत होगा, I'm sure. But if this was a blitz match, I would go ed4 without thinking. क्योंकि first of all, मेरी castling नहीं टूट रही उसके साथ साथ. एंड हमने ये भी चेक किया था कि भाई आप वो जो बिशप f4 की बात कर रहे थे उससे मतलब ब्लैक कभी भी f6 खेलेगा तो वी हैव दैट क्वीन e6 नाइट g6 वाला आइडिया जो हमने अभी चैट को दिखाया. तो आई वुड गो ed4 विदाउट थिंकिंग मच हियर. बट देन एट द सेम टाइम थोड़ा सोचने के बाद ऐसा लगता है कि भाई cd4 भी अच्छी चाल है क्योंकि मुझे कास्टलिंग तो वैसे ही नहीं करनी. आई कांट कासल ऑन द किंग साइड. वहां पे मैं अटैक कर रहा हूँ. क्वीन साइड पे तो इलीगल है. तो इट्स लाइक मैं कास्टलिंग वैसे ही नहीं कर रहा तो फिर फर्क क्या पड़ेगा. तो आई फील लाइक दोनों ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं देख के. But it's about doing proper calculation. But also let's see what black does. Yeah, let's see if black is actually going to take on d4 in this position or not. Yep, that's a very critical choice. Structure भी थोड़ा चेंज होगा. c5 ओपन हो सकती है तो देखना पड़ेगा how does white capture back if black does take. And यहाँ पे डीप सोच में है उनके ओपोनेंट एंड ही नोज कि अटैक आ रहा है. उनको पता ज्यादा टाइम है नहीं. उनके पास 2-3 मूव मिलेंगे. अगर बचा ली तो बचा ली वरना चले घर फिर भाई कॉफी पीने. तो यहाँ बहुत प्रेशर बढ़ने वाला है. टाइम पे भी पीछे है. एंड चैट करिए विदित के ओपोनेंट ने भी विडी ने भी नाइट c8 खेला तो वहां पे भी चलते हैं वीडियो गेम में. देखते हैं भाई नाइट पड़ा हुआ c8 पे. जल्दी से लेट्स गो देयर एंड लेट्स हैव द कैमरास ऑन वीडीज गेम. हमने देखा था भाई यहाँ पे आई थिंक a5 देखा था हमने. बिशप h7 देखा था. देन a4 a5 बिशप d2 एक हल्का सा प्रेशर इसके ऊपर. एंड नाउ नाइट टू c8 फाइनली. ये नाइट यहाँ तो नहीं जा रहा. पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई. राज है भाई. ये निरंजन भाई कह रहे थे कि वो c5 बट c5 अब पॉसिबल नहीं होगा. आई मीन यूजुअली इट इज डेफिनेटली पॉसिबल बट अब c5 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि व्हाइट बिशप b5 खेल सकता है. उससे वो b5 का स्क्वायर एकदम आउटपोस्ट बन जाएगा व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग.
So I'm not sure why he played knight c8 actually now, because now I'm drawing a think- complete blank. हाँ C5 का तो आइडिया नहीं, जो सहज में अपने बचपन में दिखाया था ना, सारा टेक स्टिक से बिशप B5 चेक आएगा, तो Yeah. C5 आउट ऑफ क्वेश्चन, बट मे बी नाइट C8 का आइडिया बिशप E7 करके कासल कर लूं मैं पहले. But भाई, why c8 then? Why not f5 or g6? उसको g4 का डर था क्या? ये राज उसी के साथ निकल चला गया. हाँ, ये नाइट लगता है ये सच में फ्री का मरेगा कभी ना कभी. तो होपफुली विदित हैज अ वेरी डीप प्लान बट हियर. ही विदित नोस व्हाट डाउन ही इज ऑन डूइंग. टाइम, मतलब या टिको भाई पहला शायद इंडियन होगा बुडापेस्ट में जो डाउन ऑन टाइम है इतना ज्यादा. एंड बाय द वे आई जस्ट चेक्ड इस What? पोजीशन से क्या हुआ. भाई क्या हुआ भाई? क्या रुक B1 या रुक C1 खेला अपोनेंट ने? रुक c1 खेला भाई. एंड उसको ऑल्सो C4 खेलना है शायद. अब हाँ, तक टिकू 3 बोलिए. गेमें खेली गई हैं इस पोजीशन से, तीनों में C4 खेला गया था. एक व्हाइट जीता, एक ब्लैक जीता, एक ड्रॉ हुआ. रुक C1 इज द Okay. फर्स्ट लाइक न्यू पोजीशन यहाँ पे. तो देखना पड़ेगा हाउ डज वीडी टैकल दिस. C4 इज इनकमिंग, देयर इज नो डाउट. सो वीडी पे थोड़ा प्रेशर आई थिंक क्लॉक पे तो है एटलीस्ट. एंड देखना पड़ेगा हाउ डज ही टैकल दिस. तो गुकेश ने अपेरेंटली कुछ खेला है. लेट्स गो टू गुकेश इस गेम, एक बार देख के आते हैं क्या चल रहा है. कुछ मूव्स तो हुई हैं. हमने लास्ट देखा था आई थिंक नाइट f6 वाज गुकेश's लास्ट मूव हियर. एंड यहाँ पे आया नाइट टू e5 वापस पॉन खाने के बाद वापस ये डकार मार के वापस आ चुके हैं. बिशप d7 e3 सब कुछ डिफेंड किया व्हाइट ने. बिशप e8 अच्छा देखा था हमने किंग h8 एंड नाउ रुक टू g1 आ चुका है. सो पॉन g7 की तरफ नजर, रुक c8 तो क्वीन की तरफ, रुक 8 d1 क्वीन की तरफ दूसरा रुक. तो पहले ये रुक आया d1 पे, फिर ये वापस आया, फिर दूसरा वाला आया d1 पे भाई. तो ये रिसोर्स एलोकेशन में व्हाइट थोड़ा सा धीरे है भाई, स्लो है. नहीं, but I feel rook d1 is a very very nice move, you know, because if black plays c5, you know, of course आप dc5 तो मार ही सकते हो, but you can also play d5, which is what his main idea है. क्योंकि एक बार d5 white ने खेल दिया, I think white is very very good here. Of course गुकेश ऐसा खेलेगा नहीं कभी भी, but here black has to be very very careful. अरे थोड़ा uncomfortable लग रहा है गुकेश के लिए, नहीं? I agree. You know, just simple moves like bishop f3, rook g2, rook g1. I mean, what are you doing? मतलब क्या आइडिया हो सकता है भाई? हाँ, फिर g6 पे कुछ सैक मारो. हाँ मतलब कुछ ना उसको कुछ खेलना तो पड़ेगा. होगा ही. rook g8. Tico, if you can show the chat. लेट्स से Like queen लेट्स से c7. हां क्वीन c7 नहीं, queen c7, bishop f3. उसने भी ले आया rook d8 मान लो, वो अपना. हां रुक d8, rook g3. हाँ rook g2 भी चलेगा. रुक And g3 आई you थिंक see- मे बी थोड़ा बेटर है, नहीं? क्योंकि रुक h3 भी रहेगा उधर. यस Correct. Rook g3 is better. Rook g8, rook हाँ. g1. Black is kind of stuck, सहज भाई यहाँ पे. But to be honest, so is white, no? हाँ बट गुकेश को जीतना है ना. White is happy with the draw. हाँ वैसे वो तो सही है, बट इट्स दिस इज लाइक अ वेरी लॉन्ग गेम. आई थिंक एक टाइम के बाद, हाँ, अंटिल डबलिंग अप ऑन द जी फाइल व्हाइट हैज अ क्लियर प्लान, पर उसके बाद व्हाइट के पास कोई प्लान नहीं है. इन ऑलरेडी वो दिमाग में वो चीज बैठ गई है. हाँ भाई मेरे पास अटैक है. अगर जब भी वो Correct. बैठ जाती है दिमाग में, तो इट्स वेरी हार्ड टू लेट गो ऑफ दैट. सो यू काइंड ऑफ स्टार्ट ओवर पुशिंग दीस थिंग्स लाइक नाइट e4 h4. क्या हो गया साहिल भाई, क्या पढ़ लिया आपने? कुछ नहीं, ये हमारे अभिषेक जी है, कहते हैं डकार मार के, वाह कितना प्रोफेशनल कमेंट्री, सार्कास्टिक. फिर अगली लाइन लिखते हैं प्लीज पुट मोबाइल इन वॉशरूम. यार मतलब अलग ही लेवल के हैं भाई लोग यार. अभिषेक भाई, अभिषेक इनको भाई, बैन करो भाई अभिषेक, 1 मिनट के लिए भाई प्लीज. इतने इंसाइटफुल हो आप. अलग And लेवल another के. insightful comment भाई. सहज भाई, अश्नीर भाई की कुछ लगता है, मतलब आफ्टर बहुत महीनों के बाद किसी ने पूछा है ये. हाँ. अरे नहीं भाई, अभी पूछा था 3 दिन पहले, 3-4 दिन. अभी गुलशन ग्रोवर था, फिर उसके बाद अश्नीर ग्रोवर. अभी था भाई, पिछले टूर्नामेंट में. हाँ. एंड यहाँ पे एटलीस्ट साहिल भाई को भी मिलता है, लेकिन साहिल भाई के लिए भी बहुत है. साहिल भाई के लिए डिफरेंट लोग आते हैं, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर. हाँ. एंड बाय द वे एटलीस्ट सुकेश पास टाइम ज्यादा है, तो एटलीस्ट ही हैज टाइम टू थिंक अबाउट दिस पोजीशन. देखेंगे हाउ डज ही हैंडल इट. फिलहाल के लिए एज यू सेड कि ब्लैक का प्लान क्लियर नहीं है. बिशप थोड़े से पैसिव है, स्पेशली दिस बिशप जो अपने पॉन्स को देख रहा है. c5 नॉट इजी टू पुल ऑफ. f पॉन मूव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मुश्किल है. आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी यहाँ गुकेश को, बट मौका जरूर मिलेगा भाई. लॉन्ग टर्म मिलता ही है मौका यार. व्हाइट कुछ तो ट्राई करेगा, एंड देन मे बी देन यू गेट अ चांस एज ब्लैक. तो मतलब But पॉइंट ये है कि अपोनेंट को होप दो, ठीक है,
जितनी होप दे सकते हो इतनी होप दे दो कि उसके बाद वो होप वो होप पे रहे कि कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मेरी विनिंग पोजीशन है, until that guy over pushes and then you get him. I think he's already hopeful, भाई. He already looks hopeful, I Yeah, think, है ना? and he's ready for a fight. Viking का खून है भाई उस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Sej, if you are if you are put in Srinath's position, are you a teeny weeny bit worried for Gukesh's board right now? No, no, I don't think so, because मैं ये देख के खुश हूं कि G5 पे डबल करने के बाद भी व्हाइट के पास एडवांटेज नहीं है. मैं ये देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यही यही उसका आइडिया होगा. बिकॉज आई मीन आई एम श्योर समवन ऑफ गुकेश's लेवल ऑलरेडी नोज के यहाँ पे किस तरह से आप अटैक कर सकते हो. एंड द फैक्ट दैट इट्स नॉट वर्किंग मीन्स के ही नोज दिस. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. तो Right. आई थिंक दैट्स व्हाई आई फील प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ही इज काइंड ऑफ प्रोवोकिंग हिम कि हाँ भाई अटैक कर मुझे, जितना ज्यादा अटैक कर सकता है उतना अटैक कर मुझे. कोई कह रहा है मुझे भी चांस मिलना चाहिए ओलंपियाड खेलने के लिए. बिल्कुल भाई. लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन. गिव अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट ऑल द गेम्स. आई थिंक फिलहाल के लिए यार देयर इज नो क्लियर गेम जहां पे इंडिया इज लीडिंग. आई थिंक हर जगह पे ना टेंशन बहुत हाई है. एंड टू बी ऑनेस्ट, प्लेयर्स आर फेसिंग मच मोर रेजिस्टेंस देन दे थॉट. ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है. व्हाट डू यू थिंक, राकेश? हाँ यार बिल्कुल, मतलब आई होप वन ऑफ द गेम्स गोज थ्रू, क्योंकि ना वो एक विन मिल जाता ना कोई अपने टीममेट को, तो हाँ. सडनली ऑल योर टीममेट्स आर मोर कॉन्फिडेंट और अपोनेंट की टीम उतनी ज्यादा प्रेशर में आ जाती है. तो हाँ. पहला विन स्कोर करना तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा. आई थिंक वो पहला विन आएगा अर्जुन के बोर्ड के ऊपर ही, बिकॉज ही इज द ओनली वन right now who has a slightly better position for team India, at least in the open section. And Gukesh फिलहाल के लिए कैलकुलेट करते हुए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यार. एंड सहज, कमिंग टू गुकेश, अगर बाय चांस ये ड्रॉ हो गया, एज यू सेड इट हैज सम प्रोबेबिलिटी देयर, वुड दैट डेंट हिज कॉन्फिडेंस कि यार पहला ही गेम ड्रॉ हो गया, अरे यार ओलंपियाड क्यों खेला मैं? ऐसा तो नहीं होगा ना? No, I don't think so. I don't think so. I think it's pretty normal for also for someone of this level to make a draw against a 2500 with the black pieces. ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि it's unbelievable. We also saw in the US team, yeah, it was I think Robson, and there was another player with the black. I think it was Dominguez, who is pretty much the same rating as Gukesh. He's as around 2750, and he's also making a very very quick draw. So it's not unheard of for this to happen with the black pieces. So I don't think it will affect him in any way. With that being said, I think ये position बहुत ज़्यादा fighting है in comparison to that. So I think still there is a हाँ. lot of chess left. Yep, yep. And by the way, सहज we भाई, all आपने ड्रॉ करी है किसी 2700? हाँ एक बार actually I was white actually, and the funny it was actually happened in the Dubai Masters 2022. I played Wang Okay. Hao. He was 2730 something like that. And Wow. actually, before the game, he offered me a draw, and I was like, no, because you are the only 2700 I will ever play in my life, and I would like a game. And but the last position में भी जहाँ पे हमने draw agree किया, it was a repetition. I was actually dead lost. I was dead Oh, lost, okay. but दोनों को नहीं दिखा कि कैसे. hmm. It was a dead lost position. So it was a very very interesting match. भाई नॉर्वे के बोर्ड ने ब्लंडर नहीं किया है, मैंने चेक कर लिया भाई, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है. कल तो उनकी लॉस थी तब भी वो ड्रॉ कर गए थे. सो आई डोंट थिंक दैट्स द केस. एंड फिलहाल के लिए आई थिंक इट्स टाइम टू गो टू अर्जुन गेम. आई थिंक वहां पे ही कुछ फायर हो सकती है. एंड कुछ खेला नहीं है ब्लैक ने अभी, बट ही इज इन अ वेरी वेरी डीप थिंग. एंड जो पहला पॉइंट आप कह रहे थे ना, पहला विन चाहिए, वो यहीं से आएगा मुझे लग रहा है यार. बाकी कहीं पे भी कोई साइन नहीं दिख रहा मुझे. राकेश भाई कुछ बोल रहे हैं बट शब्द नहीं निकल रहे हैं. ऐसा लग रहा है ही इज लाइक आ रहा है आ रहा है आ रहा है शब्द. नहीं ये यार, क्या था भाई? मैं देख रहा हूँ कि भाई अटैक कैसे मतलब सक्सेसफुल होगा ये अर्जुन के लिए. Vantika शहनाज ये is, तो सोच रहे हैं. yeah, chat by the way कह रही है Vantika is completely winning. We did see that. Just switching for a second, by the way, just a second. One to Vantika's game, जो वो opening itself ही थोड़ी सी ऐसी है. And साज में correct me if I'm wrong, ये Queen F7 lines यहाँ पे थ्योरी ही होती है बहुत बार. And हमने यहाँ भाई तक देखा था Queen B3 that castles.
क्या बात? भाई I don't like this. I don't like this. मेरे को बहुत डर लग रहा है वंतिका के लिए. तो क्वीन ऑफ 7 मारना यहाँ पे was very very brave. It's very वेरी brave. I'm रिस्की. telling you, a very risky. भाई उसको अगर अगर ये if we बोल just रहा look at है. Vantika's with यार अब वंतिका का टाइम अलोन अगर आप देखो ना, अगर उसका टाइम अलोन देखो तो it looks like she has what 40 minutes less than her opponent and she played queen takes f7, which I think is a very also but यार इस पोजीशन में कुछ सेफ ऑप्शन नहीं है व्हाइट के लिए, क्योंकि आप अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो तो व्हाइट का किंग कासल किधर करेगा. लाइक यू कांट गो लॉन्ग साइड, वो तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है. शॉर्ट साइड पे भाई गुड लक टू यू. यू नो सो आई फील लाइक यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है, तो मुझे बहुत रिस्की लग रहा है वंतिका के लिए अभी. You know या what, एंड chat? क्या राकेश भाई? सॉरी टेको भाई, सहज जैसे ही क्वीन ऑफ 7 मारा, ब्लैक ने एकदम नॉन चैलेंजली किंग बी8 खेला, मतलब फर्क ही नहीं पड़ा ब्लैक. हाँ. एंड जो ये गेम के बचपन में आपने बोला था कि d4 पे एक सैक्रिफाइस आ सकता है, those things are going to be the teller in this game. कि can black successfully blow open ये सेंटर वाले फाइल्स और रुक h8 से e8 लेके आए, एंड ये फायर पावर अगर डिलीवर कर पाए, then black is better, or else white will win the game. या you're right भाई, you're right. And also a move like king b8 जो ब्लैक की लास्ट चाल थी, that is perfectly setting up a sacrifice like ed4, क्योंकि अगर किंग c8 पे रहता ना तो व्हाइट के पास चेक्स रहती, और अगर आपने पीस सैक्रिफाइस किया है उसके बाद आपका ओपोनेंट आपको चेक दे रहा है तो मोमेंटम कैन शिफ्ट. इट्स लाइक मेरे अटैक करने की वजह से मतलब यू आर द वन डिफेंडिंग, अगर आप चेक से बचा रहे हो तो अपने आप को बचा रहे हो. आई थिंक किंग b8 इज अ टाइप ऑफ अ वेरी नाइस प्रोफिलैक्टिक मूव दैट सेट्स अप दैट वो नाइट d4 वाला सैक्रिफाइस. भाई वेरी नाइसली स्पॉटेड राकेश भाई. Yep. And राहुल भाई, फॉर्मेट ये है बेसिकली, इंडिया की एक ही टीम है, ओनली द होस्ट टीम गेट्स मोर टीम्स, सो वन टीम इन द ओपन सेक्शन, वन इन द वुमेन सेक्शन, एंड जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे सारे राउंड खत्म है वो टीम जीतेगी. ठीक है? सो 11 राउंड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, दैट टीम विंस. एंड सहज भाई, लेट्स गो विद दैट वेरिएशन कि भाई अब एक पॉन मार लिया है तो दूसरा भी क्यों ना मारा जाए. And maybe now you can show us how black would play here and कैसे वो it will get difficult. So maybe knight f6 से start कर सकते हैं. Knight f6 looks good because that blocks the queen's like way of the d4 pawn. So I think this is why this is looking so risky for me. For white ed4 cd4 knight. अब तो कुछ भी खेलो, अब मैं मारने वाला हूँ knight d4. Like रोक के दिखाओ. Let's say I try to defend. Yeah, let's try to see the problems here. So bishop e2 मैंने बहुत खेला कि मैंने e file block कर रहा हूँ. So maybe rook h8, क्या खेलें, rook g8, options इतने सारे हैं ब्लैक के पास यार. This is very tempting. Rook g8 also looks pretty good. Queen h6 maybe. Queen h6, okay. No, rook g6 भाई सब टेम्पो के साथ ही आ रहा है भाई. Queen h4 maybe. I am not sure. कुछ हो रहा है यहाँ पे, कोई अटैक आएगा यहाँ पे. I'm not, एक तरह से मुझे c5 भी पुश करने का मन कर रहा है, क्योंकि इट्स लाइक अगर अभी सैक्रिफाइस नहीं आया तो इट्स ओके भाई, बाद में भी आ सकता है. इट्स ओके. नाइट a5 c5 आल्सो लुक्स इंटरेस्टिंग, बट ये बहुत बहुत रिस्की हो सकता है व्हाइट के लिए वेरी वेरी सून. I agree. I think black के pieces सारे एक्टिव है. वही है. करेक्ट, ब्लैक के पीछे एक्टिव है, व्हाइट का किंग कहीं भी सेफ नहीं है. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. मतलब बिशप e2 खेल लिया आपने, बट इफ यू जस्ट गो टू दैट पोजीशन, क्वीन g7 नाइट f6 बिशप e2, अभी आपका थ्रेट ही नहीं है, आपका कासल भी आपका थ्रेट नहीं है. सो बिकॉज रुक g8 आ जाएगा, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक यू आर 2 पॉन्स अप. बट अगर बाहर पे कुछ एडवांटेज नहीं दिखा रहा है इंस्पाइट ऑफ बीइंग 2 पॉन्स अप, मतलब ब्लैक के पास कॉम्पेंसेशन तो डेफिनेटली है. Right. By the way, guys, I'll just quickly go and get some water. Please give me like 2 minutes. BRB. बिल्कुल भाई, बीआरबी कर रहे हैं साज भाई, तो बीआरबी करने दो. आई थिंक वंतिका इज मे बी बार बेटर कह रहा है, बट पोजीशन इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. सो लेट्स गो बैक. आई थिंक वी कैन हैव द अर्जुन कैम नाउ राकेश भाई. एंड उनका ओपोनेंट भी बहुत डीप सोच में है भाई. तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि यार, ओके गेस करो कितने मूव चलेगी गेम अर्जुन वाली. एक सेकंड. अर्जुन के हुए हैं 13 मूव अभी ना. आई थिंक अंडर 30 भाई. 13 मूव है अगले 17 साल के 17 चाल के अंदर. आई थिंक अर्जुन विल विन दिस गेम. राकेश भाई रिटायर होंगे इस टीम पे लगता है मुझे. चैट बाय द वे जल्दी से भाई, लेट्स गो टू 1000 लाइक्स भाई, जल्दी से करो भाई, मेंबरशिप आपकी इंतजार कर रही है.
BRB होता है भाई, बी राइट ब्रेव भाई, बहुत ब्रेव है साज भाई, बिकॉज आज उन्हें नई लाइट्स लाई हैं तो उनका स्ट्रीमिंग सेटअप अपग्रेड हो चुका है। एंड यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग अर्जुन, कुछ उन्होंने कार्ड साइड में रखा, कोट का बटन खोल दिया है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। एंड साज भाई, सॉरी कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट यू वेयर, does it have an impact on your play, like the comfortable clothes, or it's the same for you personally? नहीं, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता. It's like maybe how you feel is kind of important, but you wear is like thing. एंड उनका ओपोनेंट सोचे जा रहा है भाई कैसे डिफेंड करूं। आई थिंक CD4 हमने एक ऑप्शन देखा, F5 देखा हमने, आई एम नॉट इवन श्योर और क्या मूव है यहाँ पे, आई डोंट सी इट बिकॉज F6 एज वी सेड इज नॉट पॉसिबल। हाय अथत भाई, नॉवल टीम प्लीज भाई, नॉवल टीम में कार्लसन नहीं आज, एंड नॉवल टीम आई थिंक मोस्ट लाइकली विल कन्वर्ट इट समहाउ, देखते हैं कैसा रहेगा। एंड बात है पीछे देखो इंडियन प्लेयर्स तो है ही नहीं बोर्ड पे भाई, ना फर्स्ट बोर्ड ना सेकंड बोर्ड। थोड़ा प्रेशर है ना, मतलब ये टिको भाई ना वे कि हम लोग की टीम तो चिल कर रही है भाई, आप लोग सोच रहे हो हम लोग तो चिल में. Can we say that the team that has gone to the Olympiad is India's strongest team ever? Yeah, great question by the way, Chad. Great question. And I think that's kind of true, टिको भाई. इतना strong team तो मैंने पहले कभी नहीं देखा Olympiad. मतलब having such a high seed. By the way, CD4 ED4 on the board. थोड़े exchanges हो गए यहाँ पे, but टिको I feel that pawn on E4 ना it becomes that much more weaker now, क्योंकि अभी सीधा अगर रुक आ गया E5 पे, it's going to be attacked directly now. राकेश भाई, एक सेकंड में खेला अर्जुन ED4, एक सेकंड में हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे ये क्या करेगा, वो पहले 100 साल सोच के पहले बैठा है, यू नो डायनासोर एस्ट्रेड का इंतजार कर रहे थे और अर्जुन ने सोच लिया था मैं ED4 मारूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे चैट आपसे सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट मूव जो इंजन कह रहा है यहाँ ब्लैक के लिए, कैन यू थिंक ऑफ दैट मूव, ठीक है, बिकॉज ये मूव मैं तो 100 साल में ना खेलूं। राकेश भाई, व्हाट डू यू थिंक? ब्लैक का बेस्ट मूव इंजन, अगर ये सहज भाई ने ढूंढ लिया तो चैट में अपन एक डायमंड मेंबरशिप दे दे, इतना डिफिकल्ट लग रहा है. क्या व्हाट इज द क्वेश्चन? CD4 ED4 हुआ अर्जुन के गेम में. नाउ इफ यू कैन गेस ब्लैक्स बेस्ट मूव, चैट को हम डायमंड मेंबरशिप दे देंगे किसी को, एक बंदे. Okay, I really want to get this right. Wait. You have 30 seconds, Saj bhai. Knight B8. 20. Is that your final answer? Lock कर दो. Yes. एक आंसर लॉक कर दो. Next answer will be the final one. ठीक है? Okay, bishop H6 का you idea है, have- H6 का idea. You have 21 seconds left. 20, 19, 18, 18. 17. No stress. Come on, 17, come on, come on, 16, come on. 13, 15, Shush, 14, let me focus. 11, 10, 10. 9, चैट B5. काउंट देना आपको. B5. B5. नहीं, अरे आप यार सोच लो. क्या रे आप साज सोच लो भाई. चैट. Is that the best move? नहीं, एक सेकंड. सहज में आप सोच लो, टिक्कू भाई और चैट साथ में काउंटडाउन देते हैं, ठीक है? चैट में भी आप लिखते जाना. ठीक है. 9, 9, 8, 8, अरे फास्ट भाई. 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, No, wait. One. रुक Zero. somewhere, wait. रुक समझ आ गया. रुक B5 नहीं है ठीक है? भाई. नहीं, B5 रुक भी ठीक है? नहीं है भाई. The best move for black is the ridiculous idea of playing H6. What? भाई, what is this? Okay, chat, just so you know, आधे मिनट छोड़ो, आधा घंटा भी होता मैं तो भी H6 ना खेलता यहाँ पे. भाई लिटरली बिशप H6 का आइडिया है और तुम कह रहे हो खाली बिशप H6 नहीं खेलना भाई, तू पॉन भी ले और मेट थ्रेटन कर. मैं सोच रहा था तब से कि नाइट E5 को चैलेंज करना है, और मैं तब से सोच रहा हूँ व्हाइट का आइडिया तो बिशप H6 का है ही, बट आई थिंक व्हाट द मेन आइडिया इज टू नॉट प्ले बिशप H6, इट्स टू प्ले H6. इसलिए हाँ यार अब चैट को यार बुरा लगेगा यार, एक और चैलेंज देना है ऐसे, ठीक है, बट थोड़ा मीडियोकर लेवल वाला, मेरे लेवल वाला. एंड द थिंग इज चैट की कहीं ना कहीं अगर आप खेलते हो यहाँ, मान लो ब्लैक से H6 एंड व्हाइट यहाँ मारता है, ही इज थ्रेटनिंग मेट, बट नाउ आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आप E5 पे मार सकते हो,
एंड आप क्वीन से मार सकते हो. और नाउ इवन f5 बिकम स्ट्रॉन्गर बिकॉज क्वीन यहाँ मेट बचा रही है और रानी पे अटैक. सो कहीं ना कहीं पे या तो h6 बहुत ट्रिकी चाल जो निकालना, अगर ब्लैक ने निकाल दिया तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन फ्रॉम द ओपोनेंट साइड, राइट, कि मैंने h6 निकाल दिया है भाई. मतलब क्रेजी रहेगा. अर्जुन भी शॉक हो जाएगा यार. नहीं बट आई डोंट थिंक वो निकालेगा भाई, इम्पॉसिबल है. मतलब सहज भाई इज हायर रेटेड इस देन अर्जुन का अपोनेंट. आई विल से अगर ब्लैक h6 खेलता है ना तो 1 महीने की मेंबरशिप या तो chess.com की तरफ से या फिर मेरी तरफ से. ठीक है, अगर ब्लैक ने h6 खेला यहाँ पे तो ठीक है. आई किसको, फील लाइक एक स्टेफानसन को रिडेम्पशन. हाँ, अगर या चैट? अगर स्टेफानसन ने h6 खेला यहाँ पे तो आई विल बी वेरी वेरी शॉक्ड अगर इफ दैट हैपेंस. उस मेंबरशिप का हम नाम रखेंगे हैंस स्टेफानसन स्कॉलरशिप भाई. आई थिंक एवरी हाँ भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल. आई लाइक दिस, आई लाइक. है ना, हैंस स्टीफन स्कॉलरशिप के लिए चैट अप्लाई करना है नहीं तो भाई. प्लीज भाई लाइक करो जल्दी से. टिकू टिकू, स्टेफानसन क्यों, हैंस स्कॉलरशिप डाल. If you know what I हाँ, mean. हैंस स्कॉलरशिप. नाइस नाइस I नाइस. like it. I Because like it. I like it. इंजन की टॉप मूव है ना ये. You know, अरे हाँ. आराम से भाई, आराम से यार, आराम से. कोई क्लिप शिप कर देगा तो हम भी शिप हो जाएंगे भाई. चैट जल्दी से भाई, अगर आपको हैंस स्कॉलरशिप का पार्ट लेना है तो जल्दी स्ट्रीम लाइक करो, 1000 लाइक कर दो. एंड देखते हैं कि क्या वो यहाँ पे h6 खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. तो वी आर रेडी चैट टू सी दिस मूव. अगर h6 नहीं खेलते हैं देन अर्जुन विल प्ले h6 एंड g6 के बाद मान लो यहाँ पे वो खेलता है रुक e8, अ रैंडम मूव. नाउ यू प्ले h6 एंड g6 खेलते यू नो सडनली क्वीन h4, क्वीन f6. ये बहुत सारे वीकनेसेस हैं. इवन एंड गेम से ब्लैक वर्स आने वाला है. टिपिकल अल्फा जीरो ऐसे ही खेलता था. सो आई थिंक अर्जुन इज क्लोज टू विनिंग हियर. आई थिंक रियली डूइंग वेल. पर मेरे को एक और सवाल भी है. ये रुकिएट तो नहीं खेला ना? he played Rukiet. Oh, मैं दूसरा बोल क्या रहा They था आपको play यार. H6. मैं बोल रहा था आपको यार h6 पॉसिबल ही नहीं है. बट ऑल्सो एक चाल है मेरे दिमाग में. व्हाई कैन आई नॉट प्ले नाइट c5 लाइक इंस्टेड ऑफ रुके e8? एक What? चाल पहले जाओ, नाइट c5 क्यों नहीं खेल सकते? कि मेरा आइडिया सिंपल है भाई. आई जस्ट वांट टू टेक ऑन e5 Wow. एंड आई जस्ट वांट टू प्ले नाइट d3 चेक. सिंपल. Wow, इसमें क्या दिक्कत थी? that's a brilliant move, Sahaj, and the counter to it is equally brilliant, to be honest. So I'm going to ask you again, Sahaj bhai, what should white play? मतलब टिक्कू का खुद भाई से कुछ मेहनत कुछ नहीं करनी सब. कुछ किंग f1 टाइप का कोई चाल है क्या? No, no, King the move F1. is actually not that crazy. It's queen side castles. अच्छा, वो तो निकल जाती है. अगर आप बोलते रहना कि इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मूव तो आई वुड हैव फाउंड लॉन्ग कासल. बट लाइक किंग f1 लगा के भाई, दैट सीम्स अ बिट ऑड. बट या But he has played Rook E8 now. So I think Rook E8 के बाद it defends E6 and now you know F6 can be an idea in some cases. So I think H6 का time आ गया करने का. This feels like the right moment to do it before Black kind of plays F6 by himself. या that makes sense. h6 तो पॉसिबल ही नहीं था यार. h6 I think is a very very hard move to play. And By Rakesh the bhai, way- look at the time. Look at the time. 37 minutes है opponent के पास and we have played 14 moves. भाई ये गेम Yeah. तो अपने जेब में है भाई. मुझे ऐसी फीलिंग लग रही है. And you know, on that note, Diribhai has come up with a fantastic puzzle for chat. Rook A8, white attacks with H6. हम्म. ठीक है, F5, sorry. Queen G3. Now, ब्लैक को लगता है ना इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए G7 को, तो ब्लैक प्लेज रुक E7. White to play and win. Oh, that is pretty. That is very pretty. That भाई is ऐसा very क्या हो रहा है? pretty. मुझे तो दिख ही नहीं रहा है भाई. That is very pretty. Very double attack, भाई. Double attack. Very weird अरे. double attack. Chat. White to play. चैट क्या में लगता है तुम्हारे साइड आपको? पे भाई. मुझे तो नहीं दिख रहा भाई. 9 G6 लग रहा है भाई. First thought, but Oh, very close. Very close. very close. अच्छा. Very close, भाई. Evil है तो evil. No, I mean, don't tell me it's Queen G6. अरे भाई, गलत जगह ढूंढ रहे हो. Close in the other way. G6 को छोड़ो. G6 को और छोड़ो. सब लोग चैट में नाइट G6 लिख रहे हैं भाई. भाई सब लोग अरे यार. look at the chat. Chat. Everyone is saying knight G6. Chat please, मतलब have some level. टिक्कू को क्या कॉपी कर रहे हो आप? Wow, great graphic here. Knight G6, Knight F7, Knight C6 कुछ लोग बोल रहे हैं. Queen G6 और pawn Chat. to H6. A3.
प्रोफिलैक्सिस कल साथ में गए थे ना प्रोफिलैक्सिस देते रहे But yeah, someone found it in the chat. भाई बहुत लोग लिख रहे हैं अभी यही move. It actually is knight to f7. भाई look at how beautiful that move is. वाओ Just Beauty. look at how beautiful, यार. You are putting pressure on the g7 pawn and साथ साथ bishop on d6 also. So double attack. And एक ना एक तो मरेगा ही पक्का. वाओ दैट इज ब्यूटीफुल Why? What are the odds we see this? वाओ दैट दिस इज आई डिडंट सी दिस Nice. वाओ क्वीन जी7 Yeah. ब्यूटी I think black is as similar ended to you, Sahaj, bhai. So I don't Yeah, think of course. black will allow. Also, like this GM's peak was a lot higher than mine. He was around 2580, if I'm not mistaken, about 7-8 Yeah, years yeah. ago. So he was very very close to hitting 26. I don't think a player like this would miss something like knight f7. For sure, for sure. हाउ इज नाइट जी6 पॉसिबल तो वो ही पॉसिबल था यार आई डू थिंक दैट्स स्टिल पॉसिबल It is possible, but वो कुछ threat नहीं दे रहा है. Bishop f4 मार सकते थे आप सीधा में भी. रुक d7 खेल सकते हो मे बी आप, या रुक f7. But yeah. सो ये था भाई क्या क्या मूव था भाई यहाँ पे व्हाट डिड वी प्ले सॉरी f5 नहीं, f6 था, f5 queen g3 rook e7 rook e7 knight g6. मतलब नाइट से आइडिया था कि इफ यू टेक हियर आई विल टेक हियर विद चेक दैट वाज द प्लान And if I go rook to, ये भी काम कर रही है ना लेकिन. ताज भाई किंग जी8 दस क्वीन जी7 हाँ वो ऐसी. किंग f7 खेला तो भाई मतलब hg7 मारोगे क्या? नहीं Queen queen G7? g7 king e8 नाइट ट्रैप नहीं हो रहा है क्या वो? नाइट आई मीन नो बार कह रहा है +4 और +5 और समथिंग, बट नाइट कैसे बचा रहे हो आप? ओके अब बाहर से पूछ लेते हैं भाई नाइट जी6 इज द मूव ओ Wow, beauty. भाई h takes g6 queen takes f8 check. यस एंड किंग टेक्स King f8 h7 अरे भाई, यार Queen टिक्कू यस तो ऐसे बोल रहा है जैसे उसने देख लिया था. भाई नाइट जी6 मैंने खुद निकाला था भाई नाइट जी6 निकाला ये हाँ। कौन देखेगा भाई फिर मैं नहीं खेल रहा था भाई वहां बैठ के नहीं ये सब होगा तो मजा आ जाएगा भाई लेकिन दैट विल बी अ ग्रेट रिकैप वीडियो भाई लेवी लिखिंग स्लिप्स राइट नाउ अरे भाई खेल दे अर्जुन जल्दी से मजा आएगा चैट ऐसा कुछ हो गया तो ओपोनेंट बहुत प्रेशर में है एंड जस्ट टू पॉइंट आउट बहुत टाइम पे पीछे है सो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी सारी फेवर करती है अर्जुन को बिकॉज ही विल हैव टाइम टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस एंड ऑलरेडी हिज इंट्यूशन इज बेटर एट दिस स्टफ एंड वो तो कल भी सैक्रिफाइस कर रहे थे पीस भाई यहाँ पे तो एक्चुअली बनता है तो उनको तो कोई हेजिटेशन नहीं होने वाली यहाँ मारने के लिए Exactly. एक बंदा कह रहा है अरे भाई मारो मुझे नहीं भाई ये क्या लॉजिक है भाई चैट और एक टिक्कू भाई तो बहुत चैलेंज करते हैं और सक्सेसफुली फेल हो जाते हैं. तो हाउ अबाउट आई होस्ट अ चैलेंज दिस टाइम हाँ कि करो भाई कैन वी गेट 1000 likes before Arjun plays his next move? उसका तो हाथ जा रहा है ऐसे क्या- आगे, उसका हाथ जा रहा है ऐसे, हाँ तो जस्ट बी इसके लिए ना केयरफुल. चैट के 812 लाइक है एंड कैन बिफोर अर्जुन मेक्स हिज 15th move अगली चाल खेलने से पहले. या देखते हैं भाई Let's see. देखते तो हैं 15th मूव है तो ये क्या, ये 1.5 मंथ्स की मेंबरशिप होगी. डन सहज भाई आप ही पैसे दे रहे, तो विदित ब्लंडर ब्रो यार ये कौन सा नहीं गैंग है यार, ब्लंडर नहीं। ब्रो नहीं आई डोंट थिंक सो कि he has blundered I don't think so chat I think वो हल्का फुल्का ऊपर नीचे यार Ooh, या प्लस +0.2 +0.3 इसलिए ब्लंडर नहीं होता भाई correct. भाई we are at 900 getting there. ठीक है। अर्जुन खेल भाई, अर्जुन खेल. वेट, वंतिका ने ब्लंडर किया क्या? भाई कोई कह रहा है What? डिंग ब्लंडर कोई कह रहा है वंतिका ब्लंडर नहीं, हर भाई, कोई blunder ही कर रहा है। वंतिका का पोजीशन बहुत क्रेजी था तो Correct. मैं बिलीव कर सकता हूँ वो. हाँ, Actually, she बिल्कुल. has. She played bishop Oh, c4. no. Oh. And Sahaj, we are gearing up for your sacrifice on d4 pretty soon because it's like, this is ये फ्री का टेम्पो है. जब भी आप d4 पे कुछ मारोगे, this is like, this could be a free tempo because queen तो f7 पे रहेगी नहीं. She will get harassed at some point. तो ये फ्री का टेम्पो लग रहा है मुझे यहाँ पे. भाई सहज नॉस्ट्राडामस ग्रोवर. यार, I don't like being right here. ठीक है, I don't really like it. I want Vantika to win. I want India to win. But यार, Bishop C4 is a very sus move. I think इसका idea ये है
कि वंतिका wants to go into the end game. उसको क्वीन E6 खेलना है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्वीन E6 खेलना है उसको, और उसको क्वीन जस्ट वो एंड गेम में घुसना है, पॉन अप पोजीशन, डबल बिशप्स, बट आई थिंक उसका मौका नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि शी इज वन मूव शॉट. Maybe there is some ED4, CD4, Knight D4 incoming. Maybe it can even happen immediately. ताज भाई, I have a question because मैंने बहुत पहले ओपनिंग थोड़ी देखी थी, and some of these moves shocked me because ये normal की तरह अप्लाई नहीं होती, समझ रहे हो, like हाँ. अजीब सी ओपनिंग है ना. So does this show a lack of understanding of playing as white here? Because मतलब it's the logical try, right? मेरे को queen exchange करनी है and then game is even Stevens, like आराम से जीत जाऊंगी मैं. क्या यहाँ पे ओपनिंग की अंडरस्टैंडिंग की एक प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, there are some openings. I think Chigorin is a prime example of it, जिसमें I think opening की knowledge is very like similar to your chess knowledge. अगर आप एकदम ओपनिंग में अगर आपको नहीं पता कुछ भी, तो you can get into a very very difficult stance जहाँ पे next move निकालना भी even to the best player can be very very difficult. So this is I think another example of this could be Benoni. Benoni में भी ऐसा होता है कि if you don't know some things in Benoni, you can immediately get into a very bad position. But Chigorin is like a prime example. Like it's like the hot shot variation, like the best variation to display that. तो इसलिए मैं कह रहा था कि इस ओपनिंग में फंसना without any preparation is never a good idea. Is never a good idea. Absolutely. And Rakesh bhai, look at the clock, 29 minutes 52 seconds. Almost घंटे का difference है यार. बिल्कुल. अंश and Avengers in the chat वही बोल रहे, look at the time, Vanchika's clock is crying, and I can totally relate. But one thing is that ki Vantika has tremendous amount of experience playing in time pressure, like more than like almost her entire playing career. I've seen her play under successfully, play very good chess under time pressure. So that is the only saving grace over here. But Sahaj bhai, do you think this is a good position to be in when you are down on the clock? No, sadly not, because I feel अगर position materialize नहीं होती, like in the next 5 moves, then it means that she's gonna be facing a very very like hefty attack. And जब भी attack रहता है तो time चाहिए होता है, because one mistake means you get mated. चैट कह रही है कि अर्जुन ब्लंडर यार, अरे रुक, D1 खेला अर्जुन. Oh, he missed the moment जहां पे उनको H6 कुछ खेलना था. He played Rook D1. Now I wouldn't call this a blunder because it looks very logical, right? And London में ऐसे usually खेलता भी है white when the queen is on E2. And chat, the question is कि यहाँ black का equality कैसे है? Because I think black का एक ही idea है F6. And chat, मेरा आपसे सवाल है. I think साज भाई आप तो देख ही रहोगे, white की best move यहाँ पे क्या है भाई? White to play and the only move to not lose the game, to be honest. Basically, अगर knight को मरना ही है तो it has to die on my terms, not on your terms. That's your clue, chat. And the thing is, जब वो मरने जाएगा तो दुश्मन इतना bravery से impress हो जाएगा कि वो मारेगा भी नहीं. Exactly. बॉर्डर मूवी का सुनील शेट्टी है भाई, करके आगे निकल गया भाई, कोई नहीं मार सकता इसको भाई. And chat also, you are हाँ साज राकेश भाई. Yeah, sorry, on that note, अर्जुन ने खेल लिया उसका मूव और सिर्फ 30 लाइक से रह गए चैट की मेंबरशिप साइड. कोई ना चैट, और मौके मिलेंगे. एंड द मूव इज इंडीड नाइट टू G6. एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो बिशप को डिफेंड करना था, तो यही एक अच्छा तरीका था. अगर यहां मारते हो तो नाइट से मार देंगे तो बढ़िया. अगर घोड़ा मारने की कोशिश करते हो तो पहले इसको आप इंटरमीडिएट मूव की तरह खेल दो, फिर H पॉन से मार दो. एंड मान लो यहाँ पे वो कुछ भागने की कोशिश करता है, पॉन टू F5, तो चैट भाई नॉर्मल क्वीन H5 भी है, वरना भाई मजे लिस्ते भाई, रुक H8, किंग यहाँ पे चेक, किंग यहाँ पे, और क्वीन H7 चेक में. तो बड़ा मजा आएगा भाई. लेट्स गो विद दिस. Also, Sahil bhai, just wanted to add one more thing into your analysis. H6 के बाद अगर white H6 मारेगा ना, तो black it's losing, क्योंकि black can play bishop F4 and that bishop sits on H6. Right? Chess is so brutal. Like एक गलती से dead winning position becomes dead losing.
Yeah, you have to interpose bishop d6 बीच में. Mhm. And also one more point, Rakesh bhai, कि f6 is apparently the only move for black to equalize. अगर वो नहीं खेलते हैं f6, then ये सब कुछ is a better version of what Arjun had after h6 with rook d1. समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं पे उनको ऐसे खेलना पड़ेगा, बट f6 के लिए knight g6 देखते ही बंदा कांपने भी तो लगता है यार कि यार इसको मार सकता नहीं हूं. Yeah, And what about true, but Sahaj's idea of knight c5, f6 के जगह? good question, good question. Maybe you just भाई H6 बहुत में ये तो बार बढ़ते जा रहे हैं, रूफटॉप बार बन रहा है ये. अब मेरी बातें इसीलिए नहीं सुननी चाहिए क्योंकि बार never likes me, you know. h6 ठीक है, f6 now. f6. Too complicated, man. That's losing Oh, on the no, spot. you can take everything and go bishop h6 check. Yeah. So maybe I will go g6. Just to point out, chat, ये check आ रही है at the end, and the rook will be lost. So इसलिए यहाँ पे g6 I think is the only move to save the game, and then you play on these dark squares somehow. I don't know how you play. Do you play queen h4 and try to get here? Queen h4 looks good. Black can play bishop e7 maybe. Knight g6 मर रहा है उसमें. भाई बाहर ने छलांग मार दी. बाहर ने छलांग क्या मार हो दी. गया? ओ भाई what? Queen g3 Oh, is winning on the spot. अच्छा क्योंकि मेरा knight तो अभी भी मर रहा है ना. मेरा knight अभी भी मर रहा है. हाँ. Knight g6 is hanging in the next move. Yeah, you're right. Going back. Correct. This is the current position, chat. अभी ये position है. So rook d1 is a very tricky move. Yeah, it's not something which he has blundered. उसने देखा है. And by the way, f6 के बाद there is no other move because the bishop is hanging. तो black को पता है कि अर्जुन ये खेलने वाला है. And knowing that is also psychologically damaging, right? यार ये knight g6 रख देगा भाई मेरे king के बगल में. मुझे नहीं खेलना f6. But I mean, that's why he played rook e8. No, if he doesn't play rook e8, then I mean, rook e8 का idea ये था कि उसको f6 खेलना है ताकि e6 का pawn बचा हुआ है. Now, if he doesn't follow it up with f6, then what's the point? Yeah, that's also true. But राकेश उसके चेहरे पे conviction नहीं दिख रहा है मुझे opponent के दो. He doesn't look convinced कि f6 खेलना है उसको. मुझे तो चेहरा ही नहीं दिख रहा. भाई स्ट्रेस तो दिख रहा है भाई, हाथ है चेहरे पे. अच्छा चलो एक सवाल है. बिटवीन वंतिका और हांस स्टीफनसन पहले टाइम प्रेशर में कौन आएगा? I think Vantika maybe. I think. क्योंकि ये पोजीशन उतनी क्रेजी नहीं है, राइट? लाइक देयर आर स्टिल लॉट्स ऑफ पीसेस लेफ्ट ऑन द पोजीशन. या इट्स नॉट एज क्रेजी. आई थिंक आई वुड एग्री विद दैट. बाय द वे 2 लाइक और बचे हैं 1K से. आई नो टाइम पे नहीं हुआ बट स्टिल 1K पे कुछ हो रहा है कि मेंबरशिप या नहीं? हाँ बिल्कुल, एक चैलेंज होगा ना मेंबरशिप का. राकेश भाई सवाल ढूंढ लो भाई, एक तैयार रखो. हो गए भाई 1K. क्या बात है. चैट तो हाँ, आई थिंक सवाल रेडी है मेरे पास. हाँ, तो चैट जैसे आप लोग रेडी हो चैलेंज के लिए, गूगल खोल लिया हो, जो भी खोलना है, बिंग जिसके भी फैन है आप, वैसे तो टाइटल स्पॉन्सर गूगल है, वर्ल्ड चैट, तो गूगल ही खोलो, बढ़िया है. जल्दी से चैट में लिख दो भाई रेडी, एंड देन राकेश विल आस्क द क्वेश्चन. करेक्ट. सो who is the oldest player in this chess olympiad? ओपन में भी हो सकता है, वुमेन्स में भी हो सकता है, बट सबसे पुराना खिलाड़ी कौन है इस प्रतियोगिता में? यूजीन टोरे? नहीं, वो कैप्टन है. वो खेल नहीं रहा है. अच्छा वो खेल नहीं रहा. बट वाज दैट अ गुड आंसर या नहीं? यू आर क्लोज. एक हिंट दूंगा कि देयर आर 2 players who are aged 80 years and above. उनमें से एक है. और चैट थोड़ा और इजी कर देता हूं आपको वुमेन सेक्शन में. अभी देखते हैं कौन ढूंढेगा, और जो भी ढूंढेगा उसको तुरंत डायमंड मेंबरशिप. आई थिंक शिवांश भाई सेड. नाम बताना भाई. किसी को लिखने दो ना पहले. किसी ने लिखा है अब तक? हाँ. एंड नहीं. एंड ये तो बेस्ट क्वेश्चन है कि भाई गूगल कर लो, जो करना है कर लो. आंसर आई थिंक आई सॉ द करेक्ट आंसर समवेयर. किसी ने साहिल टिक्को लिखा. वो था क्या आंसर? भाई किसी ने ताल या फिशर भी लिखा है भाई, तो यू नो. कार्बन हार्ट इज राइट. दैट इज पोलीन वुडवर्ड, 83 years old, फ्रॉम गर्नसी, जो एक आई थिंक आइलैंड नेशन है यूके में. सो गर्नसी से पोलीन वुडवर्ड, 83 years old. एंड टिक्कू भाई, आई नो आप अभी एनएम, बट डू नॉट, I mean, aim higher, dream bigger, because
83 इयर्स की उम्र में आज पोलिन जी ने उनका ओलंपियाड डेब्यू किया है, पहली बार वाह खेल रहे हैं क्लब्स के। Oh, that's so sweet. वाह दैट्स क्रेजी। एंड Yeah. कार्बन हार्ट जी ने पहले थे जिन्होंने नाम लिखा, तो प्लीज अपने चैट में अपना यूजर नेम डाल दो ताकि वी कैन सी, ताकि राकेश भाई ऐड कर सके। भाई जल्दी से डाल दो नाम यार। Yes, congrats, Carbonate. Very well done. And let us know your username. How do I get my members? Carbonate, just username बोल दो आपका बस। एंड ए जल्दी से बाय द बोल वे, दो। ये मेंबरशिप का चैलेंज है ना, आप कह रहे थे मॉड का करना है। अच्छा मॉड और करना है मॉड क्या? का हम तो कह रहे थे ना, Mod मॉड का का भी कर करना ले, था। मॉड का कर लेते हैं बाद, नेक्स्ट कार्बन वाला हार्ट जी, मॉड का, ठीक है। नेक्स्ट वाला मॉड का। 1500 पे करेंगे ना। हाँ 1500 पे मॉड, हाँ। ठीक है, और डाल दो भाई। 2000 पे फिर से डायमंड। राकेश भाई इट्स कार्बन हार्ट 5 × 2 कर दो भाई ऐड। चलो ठीक है। चलो भाई, सो नेक्स्ट चैलेंज Back to होगा the chess. चैट। हाँ 1500 पे करेंगे मॉड चैलेंज। लेट्स गो दैट लाइव बताते रहो भाई। एंड फिलहाल के लिए भाई अभी कुछ भी नहीं खेला इसने, सो वी आर स्टिल बैक 28 मिनट्स। मे बी वी आर रॉन्ग ऑन द वंतिका टाइम प्रेशर फ्रंट यार। 28 तो इसके ही बचे हैं यार। वंतिका का कितना टाइम बचा है भाई? I'm curious. हाँ वंतिका बाय द वे हैज 29 राइट नाउ बिकॉज़ her opponent is thinking. By the way, chat और सहज भाई टिकू भाई को बताना चाहूँ, कार्बनहाट जी is already a diamond member, but because of his correct answer, we have extended his diamond membership by 30 days. So congrats again. बढ़िया बढ़िया मैन। विदित का बोर्ड दिखाओ। You know what? Let's go to Vidit's board. I think टिकू भाई let's do a roundup सारे boards से हाँ start हाँ करते हैं। हाँ। चारों इंडियंस के गेम देखेंगे। Actually, So- before we do that, I just want to, मैं chess.com India की chat पढ़ रहा हूँ. We do read this हाँ। chat from time to time, but mainly we are in the Chess24 India वाली chat, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास scams भी हैं. वो link भी है आपके पास ऊपर, cool and I'm kids also channel. yes, सहज भाई, exactly. it's the cool kids channel. आ जाओ, So I'm hang out करते हैं, chill करते हैं साथ में। exactly. Chess24. So I'm posting the link if you guys want to join. आप cams भी देख सकते हो, you know, except for just looking at us, you can also look at the players, you know, the venue, all of that. एकदम बढ़िया feeling आती है वहाँ पे. So please do join us there. तो ये channel उससे कम देखा जा रहा है अभी के लिए. एंड सो चैट, Yep. हमने रुक C1 लास्ट देखा था, याद है? वो C4 धक्का लग रहा था अपने पॉन को, और नाइट था C8 का फ्यूचर बहुत ही काला दिख रहा है। और यहाँ पे आता है बिशप E7, कैसल की तैयारी, रुक क्वीन E1, सो A5 मिर्ची पॉन के नजर। पीछे। तो B6 खेलना पड़ा उसको Wow. बचाने के लिए। H3 खेला, काफी एक नॉर्मल चाल, सीइंग व्हाट ब्लैक विल डू। कैसल्स पॉन टू C4, बिशप E4 आए वो यहाँ पे। What is the idea of bishop E4, Sahaj? And white went knight to H2, and शायद वो I don't know क्या प्लान है, कुछ फेंकने वाले F pawn की नहीं, but what was bishop E4? I think maybe to take on C4 and put the bishop on D5, you know, it looks like a good square for the bishop. Maybe that's the Yeah. idea. And it was annoying कि अब knight F3 की जगह पे king H1 खेलिए टिकू जी। तो DC4 अभी आपको प्रॉब्लम है, बिशप C4 हाँ। मारोगे तो बिशप F3 मार रहा है, रुक C4 मारोगे तो बिशप D5 के बाद वो पीस हैंगिंग है B3 पे, रुक C3 को बिशप B4 आ जाएगा फिर से। तो you are getting in that loop unnecessarily. तो व्हाइट ने स्मार्टली नाइट H2 खेल दिया, बट सहज भाई विदित का टाइम भी उतना ज्यादा नहीं है, only 34 minutes for him and he looks a little stressed अगर आप कैमरास देखेंगे तो। Yeah, he does. I mean, Vidit bhi thoda, you know, he's looking hyper focused, maybe a little stressed as well. Also, Vidit का time भी काफी कम है. You know, I think 3 players हमें time pressure में already दिख रहे हैं. You know, Vantika, Hans and Vidit. Yeah. Why he looks really tensed. He looks really tense, yeah, मतलब. He looks very tense, but if he was seeing Chess24 India का chat, he would have a smile on his face because Mr. Digital बोल रहा है शकुनी is the oldest chess player. मतलब भाई इंटरेस्टिंग मोमेंट के चैट। 33 मिनट्स, तो विदित को यहाँ पे कुछ तो खेलना पड़ेगा। कैरो कैन वो बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इवन दो ये ओपनिंग शायद उन्होंने आज ना देखी हो, बट पहले तो पक्का देखी होगी। So he would know what to do here. It's just, yeah, it's not an easy position to play, right? Knight C8 पे it's very uncomfortable. क्या हुआ? स्टेफानसन का ब्लंडर, like क्या legit बात blunder, अरे not क्या बात कर रहे हो? chat वाला। उसने सहज का मुंह खेला, मतलब ब्लंडर ही होगा।
अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, मतलब स्टेफानसन ये 2500 के नीचे जाने वाले हैं, लेट्स गो। तो यार, पहले से ही वो 2500 के 2500 के नीचे ही नीचे है। है पहले अभी और अरे नहीं भाई, अरे नहीं, आई थिंक दिस इज अ साइन कि ही कुड नॉट, लाइक ही वाज स्कैर्ड ऑफ द F6 मूव यार, ऑब्वियस है। हाँ वही अर्जुन टेकिंग एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड नंबर 4 टाइटल रियली वेल, कल भी फायदा उठाया, आज भी फायदा उठा रहे हैं मस्त। ओपोनेंट वो क्रिटिकल चॉइस नहीं खेल पा रहे, दे आर हेजिटेटिंग, एंड दैट्स नॉट व्हाट यू वांट इफ यू वांट टू चैलेंज अर्जुन हियर। और फिर उसके उसके टीममेट्स देखते उसको बुरी नजर देते कि क्या कर रहा है तू। हाँ, वो होते वो भी यही करते भाई, लेकिन दूसरे का देखना बड़ा आसान है भाई। Of course, बिल्कुल of course. बिल्कुल। एंड चैट जस्ट टू पॉइंट आउट पहले कि यार डायरेक्ट क्यों नहीं मार सकते, आई थिंक कई लोग सोच रहे होंगे, बिकॉज ये पॉन नाइट को बचा रहा है, सो ये बिशप से नाइट मर जाएगा एंड सडनली ब्लैक इज लाइक फाइन नाउ कहीं ना कहीं पे, बिकॉज पीसेस एक्सचेंज हो गए, Correct. समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली अर्जुन वांट्स, एंड वाइट पता नहीं बेटर है भी कि नहीं यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। तो ये हमें चाहिए, एंड नाइट d3 भी कंट्रोल है, सो कोई स्ट्रेस नहीं है वाइट को, ही कैन जस्ट प्रोबब्ली जस्ट कंटिन्यू विद अ मूव लाइक h6 इफ ही वांट्स टू, जस्ट h6 खेल के, ये मेट का थ्रेट है, सो ब्लैक को रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा। एंड g6 as we thought earlier कि is the only move, एंड यहाँ पे queen h4 एक प्लान है, and also apparently Sahaj and Rakesh भाई knight g6 is also a possibility. Oh, because you're winning a pawn at the end. Yeah, H6, bishop d6, dc5 and Yeah. queen e4 मर रहा है। Yeah, and then यहाँ पे आएगा भाई dc5, and this h pawn is still alive भाई, this h pawn is still alive. This is a very rare case जहाँ पे एक h pawn है, and it's like interesting situation here. देखो भाई, मजा आएगा but देख। I can play FG6 ना, हाँ, you can play पूरा f6. वेरिएशन खेलो। एंड देखो अब चैट, why you have to be very careful, bishop d6, queen d6, dc5, queen c5, Oh, मत yeah. बोलो हाँ queen e4, हाँ, देखो मैं मारो queen e4 and then queen f2, so be very careful till the end in every variation. yeah, and this is structure पूरा damaged है, but black के pieces suddenly थोड़े से active हो गए भाई, so you have to be careful, and देखना पड़ेगा अर्जुन क्या खेलते हैं। He has not played h6 yet, तो साज भाई क्या probability है he plays h6 now? Ooh. Did you see I think very अर्जुन का high. हाथ ऊपर गया था, he हाँ। wanted to play something. हाँ अर्जुन का I think h6 अब बिल्कुल likely. I feel like he has done everything else that he needed to do. I think he's prepared. He would have definitely seen that वो queen e4 वाली line. So I think we'll see h6 very very soon from him. चैट, मेरा एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, 1800 लोग देख रहे हैं, यू नो व्हाट, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक बंदे के लिए मॉड प्लस मेंबरशिप जीतने का। इफ वी टच 1669 लाइक्स, ये नंबर पता नहीं रैंडमली दिमाग में आया है, इन द नेक्स्ट 8 मिनट्स, तो भाई उस बंदे को हम देंगे मेंबरशिप भी और मॉड भी। तो जल्दी से चलो चैट टीम, मेरे से जाएगी मेंबरशिप भाई, सैलरी से काट लेना राकेश भाई, लेट्स गो जल्दी से भाई, लेट्स गो। 1669 लाइक्स पहुंचना है इन द नेक्स्ट 8 मिनट्स, एंड वन पर्सन गेट्स बोथ मॉड प्लस मेंबरशिप। लकी मौका, आज की बात कभी नहीं होगा ओलंपियाड में भाई, लेट्स गो। Mod be your membership. I don't think भाई we have there. done that before. I don't think we have done that before. नहीं भाई, That's वही तो crazy, रेयर है भाई। ना भाई, रेयर है ना भाई। Hmm. by the way, आप दोनों के घर पे, किसी के घर पे पेट है क्या कोई? नहीं, क्यों? आवाज आ रहा है, मतलब लाइक या स्क्वीकी टॉय ऐसा कुछ है? स्क्वीकी मेरे को टॉय, आवाज वो मैं ही हूँगा भाई। और क्या बोलूं भाई अब मैं। स्क्वीकी टॉय क्या होता है राकेश, व्हाट इज स्क्वीकी टॉय? राकेश भाई ये जापान में चले गए थे आप। Apparently you. अरे वो रबर डक या कुछ होता है ना, जिससे ऐसे दबाएंगे तो आवाज आता है, तो तुम वो बोलता है तो वो तो ऐसे खुद ही करके है। दिया। अच्छा, समझ गया। कैसे नहीं भाई, वो नहीं हूं कैसे मैं। what does a squeaky toy say? इससे You साहज भाई just 2500 का पहुंच रहे हो। you just said it. No? You just said it. No? Something नहीं, there it's was okay a भाई, noise. You just I said. वो एक ही बार होता है भाई, एक ही बार होता है। अरे लेट्स गो चैट, 1669 लाइक्स है, यू हैव 6 मोर मिनट्स, एक बंदे को मेंबरशिप प्लस मॉड। एंड फिलहाल के लिए यहाँ पे मॉड अपनी गेम का करना चाहेंगे ब्लैक यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रगलिंग ही राइट नाउ। बट अर्जुन अभी सोच रहे हैं, जैसा राकेश ने कहा कि उन्होंने हाथ उठाया, एक बार वापस रख दिया, तो क्या ये थोड़े से नर्वस अर्जुन भी हो सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? नहीं, आई थिंक ही नोज, मतलब गेम मेरे तरफ आ चुका है, जस्ट वो फिनिशिंग टचेस कैसे अप्लाई करें। एंड आई थिंक वी वर रॉन्ग अबाउट वंतिका,
Stefansson is under huge pressure both position पे भी और time पे भी. बिल्कुल. Yup, yup. And Chad, यहाँ पे 58 मिनट्स अर्जुन के is clearly like 30 plus minutes ahead, तो कोई स्ट्रेस की बात ही नहीं है यहाँ पे. तो आई थिंक वी हैव ग्रेट चांसेस. यू नो व्हाट, आई रियली वांट टू हेड टू गुकेश's गेम. आई थिंक हमने काफी टाइम से देखी नहीं है, नजर मार के आते हैं वहां पे क्या चल रहा है. दोनों प्लेयर्स के पास दे हैव 43-46 मिनट्स. एंड लास्ट हमने रुक ए D1 पे छोड़ा था, बिशप D6 खेला ब्लैक ने, एंड देन बिशप F3 जो हम एग्जैक्ट देख रहे थे यार. एंड नाउ कम्स क्वीन टू E7 एंड नाउ व्हाइट इज थिंकिंग. मुझे लग रहा है यहां पे भी टाइम प्रेशर आने वाला है यार, बहुत गेमों में देखने को मिल रहा है हमें. एंड नाइट A4, व्हाट? इट्स लाइक यार फ्लाइट टिकट मैंने लिया यूरोप का और मैं चला गया भाई अफ्रीका. भाई थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो गई. ये क्या है? You know, जापान Sahil बोलना bhai, चाहिए था. I have been like commentating with you for like some time now, yeah. हाँ. अभी भी जो आपके जो ये रहते हैं ना, जो आपके जो भाई, connections रहते हैं, वो मेरे दिमाग में बैठते ही नहीं है. Like I have no भाई, idea कि भाई, अगला शब्द साहिल भाई के दिमाग से क्या निकलेगा. I भाई, have no भाई, idea. भाई, इंडिया से नॉर्थ वेस्ट इज यूरोप एंड नॉर्थ साउथ इज अफ्रीका. तो अपोजिट North डायरेक्शन. South. Let me North just say South. North South. East. Sorry. You see, chat. This is what I meant. Sorry, I mean इंडिया से I mean, नॉर्थ साउथ North- होता है अफ्रीका. करेक्ट बराबर भाई है. ईस्ट वेस्ट क्या Sorry, होता है? sorry, ईस्ट sorry. वेस्ट क्या होता है? ईस्ट वेस्ट Sorry, बताओ sorry. ना. बट आई मीन इज कि थोड़ा डायरेक्शन ऑपोजिट है ना भाई इंडिया जाने के लिए. ऐसे है, इट्स सेपरेट. तो वही मैं कह रहा हूँ. तो हमें लगा था किंग साइड पे खेलेंगे, बड़े क्वीन साइड पे खेल रहे हैं. ये क्या चक्कर है यार? I mean, knight a4 looks good यार. उसको c5 stop करना है. That's the idea. बट Knight यू नो b6 साहज भी भाई, फेंक सकता है. हम्म. एक चीज बताऊं, अब तक के लिए C5, एंड दिस इज हमारे सिलिकॉन मॉन्स्टर्स टॉकिंग, C5 कभी नहीं आ रहा था. ठीक है, ड्यू टू रीजन डिस्कस कई बार. D5 है कुछ, जैसे नाइट A4 खेला C5 इज द बेस्ट मूव. तो आई एम नॉट श्योर कि वाइल्ड को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया उसने. Wow. c5 अब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा. अभी भी नहीं आ दैट्स द रहा. बेस्ट मूव भाई. अच्छा. I think that's wait, because. wait. Wait. Think. Yeah. Go ahead. C5, knight B6, rook C7, knight A8 is a repetition. What? Wow. Holy. Wow. I think that's the idea, because he wants to simplify the position and he wants to take a draw. See, that makes a lot of sense to me. Wow. Sahaj, so Wow. Gukesh ke point of view say, should he play C5? And this is the problem of being the higher rated player. You know this is the best move. You know it leads to a forced draw. Bishop is now attacking the knight. So what does he do? Does he take the draw? But he doesn't want to do that, or does he kind of play a second best move consciously? क्या करे Gukesh यहाँ पे? I think he wouldn't want to take the draw necessarily. I think he wouldn't want to take the draw. I think he will play something else. This is Gukesh we're talking about, you know. So I think he will just. I think c5 looks very logical and draw is very, very possible यहाँ पे, but he wouldn't want to do that. And chat, you have just 2 more minutes. आपको चाहिए 350 लाइक. अगर आपने कर दिए 2 मिनट में, तो भाई एक बंदे को मॉड प्लस में जल्दी लाइक कर दो भाई. लेट्स गो. एंड यहाँ पे क्रिटिकल चॉइस है गुकेश. राकेश भाई, व्हाट डू यू थिंक ही विल डू यहाँ पे? I think he'll have a quick look दूसरे बोर्ड्स पे क्या चल रहा है, क्योंकि उसको सब कुछ सोचना है. टीम के बारे में सोचना है. व्हाट स्टेटमेंट इज ही गिविंग टू थिंग एंड द वर्ल्ड, वो भी सोचना है कहीं ना कहीं. आई थिंक he'll have a hard long think, एटलीस्ट अगले 10 मिनट तो वो सोचेगा यहाँ पे, क्योंकि एक बार C5 के लिए देन ड्रॉ उसके हाथ में नहीं है. मतलब ब्लैक कैन इजीली रिपीट इट व्हेनेवर ही वांट्स. व्हाइट कैन रिपीट इट. You can also see how much Gukesh is looking at the other boards right now. Like he is so focused. By साथ में क्या हो रहा है भाई? Let me. He's just. I don't think he just wants to not make a draw. Yeah. I just think he doesn't want to make a draw. I think he will just do anything. Yeah, I think there's an easy way to not make the draw. Which is just not play C5, and I think just not play C5, and that's. But then what do you do? Yeah. He has to stay passive then. I mean, he has a way to get active, but that forces a draw from white. So he has to decide, either I go active right now or I wait for an opportune moment in the future. So ये आसान decision नहीं है, but
ऐसे ही डिसीजंस ले के वो कैंडिडेट जीते थे और ऐसे ही डिसीजंस उनको शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने पड़ेंगे. सो बहुत क्रिटिकल चॉइस है. विल सी, एज राकेश भाई सेड, यहाँ पे 10 मिनट का थिंक लेंगे वो आराम से बैठ के. सो मे बी इट्स टाइम टू चेक आउट हरिकृष्णास गेम, बिकॉज हमने काफी टाइम से वो देखी नहीं है. एंड उनके ओपोनेंट जो हेल्गी है, he seems to have set up the knights on very good squares on b5 and e5. and Sahaj bhai, टाइम पे लेकिन बहुत पीछे, क्या लग रहा है इस गेम के बारे में? I think it looks really, really good for Hari. I think knight b5, knight d5, as you rightly mentioned, bishop's b3 powerfully plays there. The bishop on d3 is a fantastic piece. You know, maybe in the future I can also go some f4, f5 wale ideas. You know, but I have to make sure that you don't take my bishop, you know, before I play that. But you know, maybe I can go bishop b1, f4, f5, something like that. I mean, black ke pieces, I mean, I think the position is balanced. I see the bar says 0.0, but I like this position for white. I think if I had to choose a color, koi bole ki bhai white se khelna hai ya black se khelna hai, I will choose white every single time, just because of the placement of the pieces. So I think, yeah, time also looks pretty good for him. I think this is a good situation. By the way, Hikaru Nakamura has put up a crazy tweet chat. मैं read कर रहा हूँ तुम्हारे लिए. उन्होंने कहा है कि ट्रोल है. Are you sure? नहीं, I read it on his Twitter, Hikaru's Twitter right now. No, it's trolling. वो गलत पीछे है. Let's ignore. क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो हिकारू हैक हो गया क्या? नहीं, वो ट्रोल कर रहा है 2700 चेस. तो अच्छा, ओके, गॉट इट. आई थॉट ओलंपियाड, वुमेन्स ओलंपियाड का एक गेम में उन दोनों की रेटिंग डाल दिया गलती से, तो उसकी वजह से वो अफेक्ट हो गया. अच्छा, ओ, हाँ, आई डोंट नो, इट लुक्स लेजेंड वाइट टू मी. पता नहीं, बट हिकारू इज ट्रोलिंग बेसिकली. अच्छा, गॉट इट. सो वी कैन स्किप इट. ठीक है. Anyways, so chat फिलहाल के By लिए the I way, think Panchul ji in chat is right. Arjun, has not blundered, but big mistake by Arjun. can we If go we to can the game go then? there. Queen g3 खेला. So Wow. you see now he's slightly minus, but Tiko bhai, your favorite thing. Black has only one move to survive the game. Otherwise he's toast. He's butter cheese toast. Yeah, absolutely, chat. Let's try to, I don't know, play a move like knight to a4 कि भाई मैं प्यादा अटैक कर रहा हूँ कुछ भी. Now you have h6, and if you play g6 now, then there is knight takes g6 and the game is over basically, because जब भी आप ये knight मारोगे, चाहे जैसे भी मारो, bishop d6 पे अब दोनों अटैक भी हो रहे हैं and the game is over. So the only move for black, जैसा राकेश भाई ने, is knight to b7, but because he played f6. He played What? f6. He played f6. Erigaisi Arjun is completely winning. Okay, he has to find the only move now. And chat, यहाँ सब कुछ attacked है. He has to take on c5. D takes c5 is the move. And चाहे आप e5 पे से मार भी दो, bishop takes. किससे मारोगे? Let's say queen से मारा, queen takes, pawn takes, and pawn to c6, या even just taking, and ये triple pawns भाई, triple pawns. जमाना हो गया भाई देखे हुए. I think this is just winning. And what if I go f takes e5 instead of queen takes e5? Yes, you can go f takes e5, and again I will just take on b6. You will take on b6, and again it triple pawns वैसे ही है. So we just continue at 6 and so on. Positioning It's kind really of good. But it's kind of hard to evaluate that, no? ये ट्रिपल पॉन्स है ना सहज भाई. हाँ, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा. लोग कह रहे हैं विदित इज इन ट्रबल. ऐसा क्यों भाई? विदित गेम इज गॉन. व्हाट? ओके, सो फिलहाल के लिए चैट, अर्जुन इज नाउ क्लोज टू विनिंग. एक विन आ रहा है, इंडिया का एक विन आ रहा है अर्जुन. सो ठीक है, लेट्स लुक एट दिस गेम. हाँ. What's happening? I see his bar in the middle. I don't know why he lost. Let's have a look. So c5 खेला यहाँ पे विदित ने. So he challenges the center जब knight है c8 पे. That is a risky approach. Can work. Now comes f3, bishop पे attack, and d takes c4. So bishop attack किया, हमने knight attack किया. He takes on c4. Now comes bishop c6. That's apparently a mistake. Apparently he had to go around this path, not this one. Sahaj, what is the difference? Bishop, I think you're not controlling not the same. I think it's because you're not controlling the b1 h7 diagonal. So bishop d3 looks good. Queen आ सकती है कभी इस diagonal पे. I'm trying to search if there is something crazy that I'm missing right now. Sahaj bhai, opponent has played
Knight G4, Yeah, by the yeah. way, in that He position. played knight to g4, which practically is a great weapon. कई लोग chat में लिख रहे हैं, this is a blunder from both sides. It is not a blunder from white. Sahaj bhai and Rakesh bhai and chat. Apparently, the best move was f4. But honestly, think about this logically. ठीक है? Knight g4 के बाद, you know, Sahaj bhai, what is the best move that black, should play according to the engines? H5? Take a No. Yes, Please, no it is H5. Yeah. Oh my God. H5. That is not happening. That is not happening. And now, chat, आपके लिए सवाल. What is the best move for white? Chat, let's go. Let's go. Because I'll show you how ridiculous this is and why Vidit is really struggling in this position. And of course, this is not me, bhai. This is the engine talking. And it's not guaranteed कि ये लोग निकालेंगे ये moves. नहीं But नहीं objectively, वो हमें पता है भाई चैट पे कोई नया बंदा आया होगा ना भाई, नया बंदे को बताना जरूरी है भाई कि भाई, वरना कहेगा भाई कि यार. So chat, what is the best move for white? बताओ भाई, what do you think? Critical moment, because you've just gone to g4. Knight H6 check तो नहीं लग रहा मुझे. Yes, that is यही the है. best move. Yes, takes and queen to e3 apparently. Okay, Queen E3 is ridiculous. Yeah, bishop ये ना, ये g5 ऐसी- f4. You know, ये ऐसी चाल है, like you will analyze it for like a while, and then उसके बाद, you know, like maybe like 10 years from now, you will read it in a book. Okay, you know, Praggnanandhaa solved this position in with like blindfolded, you know, when he was 10 years old or something like that. You know, आपने राकेश भाई आपने वो किताब पढ़ी है प्रज्ञानंदा की? No, it wasn't by him, but a lot of it is about him. It's called Improve Your Chess Calculation. हाँ. You will see Sahaj! many similar positions वहाँ पे ऐसे. No way, Vidit played h5. He played h5. He played h5. Wow. We are either going to see knight h2, knight f2, and then Vidit is maybe actually fine, or we are going to see knight h6 and Sahaj bhai, maybe this might happen. So I will say that Knight H6 check is possible, but Queen E3 हाँ. is ridiculous. I don't think he finds Queen E3. That's a So ridiculous. somebody's move. winning, bhai. Somebody's winning. ये draw होने के chances बहुत कम है अब. ये draw, I mean, perpetual हो सकता है maybe कभी बाद हाँ. में, but in Queen E3 तो नहीं दिखेगी यार. Queen E3 is very very hard. I mean, even if you know there is a tactic, you still won't see Queen E3. I think because there are so many other moves, ना, like Queen G3 हो गई, Bishop H6 हो गई. Those look a lot more logical. So like Knight And- H6, I believe that can happen, but Queen E3, I don't think so. And Rakesh bhai, you know, we are thinking knight h6. There is another crazy move. आपने शायद देख लिया, आपकी शक्ल पे दिख रहा है मुझे. The second best move is Ignore. pawn to f4. Ignore Yeah. the knight. Pawn to Ignorance f4. is bliss. Pawn takes h4 and now f5. भाई क्या position है Wow. ये chat? This is insane. This is Sahaj bhai. completely insane. This is more possible than knight h6 check. हाँ, I agree with that. F4 F5 looks very logical. यहाँ पे And विराट को Nico is careful रहना होगा. Absolutely right. Look at this pawn stop and वो rook a8, knight c8, bishop c6, knight d7 cannot help the black king. तो Mhm. बहुत केयरफुल होना पड़ेगा विदित को. एंड यही आइडियाज आई थिंक f5 वाला स्क्वायर किंग के बाजू में सपोर्ट, इसके लिए वो c6 का बिशप चैट h7 पे चाहिए था. Chat, we are going to see fire on the board because I really can't imagine कि उसने knight g4 खेला है to go back. Sahaj, I don't think that's happening. That's not happening. Yeah. Knight H2 और Knight Maybe F2 तो come- भूल जाओ. नहीं, कम से नाइट f2 था. वो सोचा कि नाइट को इंप्रूव कर लिया मैंने h5 से h2 से f2 तक. मे बी दैट इज अ पॉसिबिलिटी. पर F4 F5 looks very very tempting यार. F4 F5 मतलब वो एकदम हाँ. मतलब खूनखार चाल है एकदम. टिकू भाई रिएक्शन कम दो. अरे भाई मेरी अंदर से लगी हुई है, तुम क्या बात करो, तुमने वेरिएशन ही देखी भाई. नाइट h6 चेक, मजा क्या भाई, फ्री पीस. Also Tikku bhai, if after Knight H6 if I go GH6, would you? हाँ. What if I just go Bishop H6? What happens then? हाँ, so bishop h6 is apparently possible, but there is ridiculous move bishop h4. So ये वो मिस कर सकता है maybe. हाँ. ये वो मिस कर सकता है. Maybe he will go Bishop. अभी लगता है Knight H6 खेलेगा वो, फिर वो Bishop H6 मारेगा, and then Bishop H4 मिस करेगा. Yeah, this But looks good. even- This looks good. Even Vidit might miss bishop h4, right? That is the problem. No. I don't think Vidit is like too strong here. I don't think Vidit will miss things like that. Vidit को ये But- चाल already दिख गई होगी. But you know, Sahaj, what is the next move for white?
Because if let's say I play king h8 and my idea is rook g8, what is white playing? Because he doesn't want to take, right? Because then your attack is over. Yes. So that's why I Queen... think he might not play bishop h6. Yeah, maybe not. So तो it's क्वीन a very g3 चेक, क्वीन g3 चेक खेल सकता हूँ, मतलब वो भी तो सेम ही रहेगा. हाँ सेम हो जाएगा king h8 and it's just a worse version. Yeah. So I think chat यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई. Who knows? He just takes on c5. भाई यहाँ bishop d कुछ भी हो सकता है because this is a complete mess. Bishop d3 भाई, that is crazy. That is a crazy move to find here. कुछ भी. एंड वो समझा क्यों बिशप c6 मिस्टेक था. बिशप h7 में था, ये स्टॉप करता था बिशप d3 में. हाँ. काफी डीप था. Very deep. There is no f5 anymore. Suddenly knight h6 पे bishop g6 आ रहा है to save the king. So that bishop would have been amazing on this diagonal. And chat करिए Arjun game. So let's do one thing. आएंगे अर्जुन गेम पे. एक काम करते हैं ना, जल्दी से रन थ्रू करते हैं बाकी तीनों गेम का, टक 10 seconds each and then we come back to this. क्या बोलते हो? Okay, done. Yeah, and Gukesh के गेम में भी अपडेट है टिकू भाई. We should head there after Arjun's game. Let's go. So पहले चलते हैं हम अर्जुन की गेम पे chat quickly. And after f6 d takes c5 मार दिया है अर्जुन ने. So he is now close to f takes c5. pawn से डायरेक्ट मार दिया. So Sahaj, will we see pawn takes? पर ये तो विनिंग होगी ना व्हाइट की. fg3 भी also looks better. ये तो विनिंग होगी. हाँ, yeah, this is good. हाँ, +2 तो at least this is winning, yeah. But ये तो जीत गया. Go into rook end game though. Like rook end games में ना they're notorious for being a draw. तो क्या वो avoid करने की कोशिश करेंगे somehow? I think in this specific आपको ऑप्शन ही नहीं है टिकू भाई. For example, takes and then coming back. The takes में I can take your bishop also, right? Why couldn't I take the bishop? हाँ, you can take this. अच्छा नहीं, you will take rook d6 also. Rook d6, but rook gf2 and yeah. I think Arjun is just evaluating कि इन दोनों में से कौन सा वर्जन लूम है. पर दोनों rook endings है यार. पर दोनों rook endings है यार. दोनों rook endings. So this will be amazing. Arjun is winning chat. That is great news. Now going to Gukesh game quickly. Let's have a brief look. हमें जाना है वापस विदित गेम पे. वहां पे आग लगी हुई है. And after knight a4 he did not go c5 chat. So नहीं, Gukesh ने कहा नहीं, draw नहीं लेना है मुझे. I'm banking myself to win the game. And उन्होंने rook c7 खेला. And now this can be an idea because there is no knight b6 free tempo. So अब white को निकालना है move c5 रोकने के लिए. Maybe he will play knight d3 या क्या भी खेलेंगे. And time पे थोड़ा सा गुकेश पीछे है राकेश भाई. Yeah, but it's okay. I mean, it's not that big a difference जो Stefansson या वंतिका के है टाइम के हिसाब से. I feel Gukesh, very smartly options open रखे उन्होंने कि अगर टीम को जरूरत है पुश भी करूंगा, अगर डर लग रहा है तो ड्रॉ भी ले लूंगा. And I think more than anybody, Vidit would be thrilled to see कि अर्जुन की पोजीशन विनिंग है. हाँ, because राकेश भाई फिलहाल के लिए it's like slightly worse for Gukesh. Harikrishna is just equal, ठीक है, and Vidit is technically in dodgy waters. तो फिलहाल तो 2.5 ही आता हुआ नहीं दिख रहा भाई मुझे confirmed. So it's a very risky proposition. नहीं, so I think see I think yeah, go ahead राकेश भाई. नहीं, मैं बोलूंगा 2.5 तो आ जाएगा, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट कि हम जो बात बोल रहे थे कि अर्जुन पहले जीत जाएगा तो अपोनेंट में प्रेशर आएगा. इमेजिन विदित जीत गया तो उसको प्रेशर आएगा इंडिया में. भाई बोलो भाई डर गया भाई. नाइट f2 भाई नाइट f2. यस भाई डर गया भाई. मैं भी यही बोल रहा था कि नाइट f2 या फिर वो नाइट f6 खेलेगा, बट समथिंग एल्स, बिकॉज़ क्वीन e3 वाज रिडिकुलस यार. He doesn't play a move like that, and already Vidit is completely fine now. I think he's completely equalized. 21 साल का लौंडा है विदित का अपोनेंट. अगर वो 15-16 होता ना तो मेरी और मुझे डर लगता. राकेश भाई कुछ It's okay राकेश भाई. It's okay राकेश भाई. We both understood. It's okay भाई. It's okay. नहीं, but I feel जो सांस में सांस विदित की आई होगी भाई अभी ये नाइट f2 देख के, जब अपोनेंट उसको हाथ लगाया होगा नाइट को, उसने कहा नहीं, सडनली वापस लिया होगा. हाँ, थैंक गॉड भाई, बच गए. So chat, गुकेश चैट में लोग कह रहे हैं कि गुकेश की एक्यूरेसी वाज 99.5 right before this move. Yeah, now it's 99.
That's Oh crazy no, actually. SRCC में एडमिशन नहीं होगा अब यार. Very disappointing by the अरे way. लग रहा है मुझे भाई. अरे अरे बहुत बहुत. कोई नहीं, उसका स्पोर्ट्स कोटा ही ना, उसको खेलने, उसको ट्रायल्स भी खेलने की हाँ जरूरत नहीं होगी. वो सीधा हाँ. इंटर. निधि भाई, can we have Vidit's camera? Would love to see his expressions कि भाई वो थोड़ा सा relaxed लग रहा है क्या, कि मतलब लग रहा है कि okay, बच गए भाई, बच गए, और क्या situation है. Let's have Vidit's camera there. एंड And देखो हल्का सा डिले भी है अभी. देखो अभी देखा, अभी जस्ट नाइट F2 हाँ, खेला उसने, हमने कुछ एंड मिस नहीं विदित किया भाई. लुक्स रिलीव्ड. हाँ, विदित Uh, लुक्स रिलीव्ड. and Saj, now the pawn is on h5. So यहाँ पे Vidit का plan क्या है? Because if I play g6, then I'm weakening my dark squares again. So how do we handle this? What's White's next move? हमें पहले सोचना पड़ेगा. तो White क्या next खेलने वाला है यहाँ पे, and Vidit को पहले कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके लिए? Like I think white को knight e4 या knight d3 फेंकना है कुछ तो. But I'm not sure how he's going to accomplish this. Whether he waits for pawn takes, क्योंकि हमेशा हर पोजीशन को ना वहां से स्टार्ट करना चाहिए जहां से how can I release tension. So CD4 is like exchanging something that simplifies the position, releases some tension. So CD4 में तो I think there is knight d4 also, there is bishop e6 का idea. Bishop e6 also looks very interesting to me. क्योंकि वो c1 का रुक c6 को मार देगा. Maybe that looks pretty good for white actually. Yeah. तो I mean still अभी के लिए विदित का जो इमीडिएट थ्रेट था, आई डोंट थिंक विदित ने ज्यादा टाइम नाइट f2 के ऊपर लगाया होगा यहाँ पे, क्योंकि नाइट h6 और f4 जैसी चालें वुड हैव टेकन अप ऑल ऑफ हिज टाइम. तो आई थिंक नाइट f2 में उसने बोला होगा चलो ये खेलेगा तो मैं बाद में सोचूंगा. So I think probably he's now creating a plan कि भाई किस तरह से मुझे अपने पीसेस को डेवलप करना चाहिए. Because look at his knight on c8, look at his knight on d7. Those knights are not properly placed. Like they are very very awkward. अगर वो knight अगर उसको बेचारे जस्ट उठा के अगर d5 पे रख देता मैं c8 के knight को, या f5 पे रख देता, तो I think black is clearly better. पर सिर्फ वो एक कहते ना एक मछली something there is a quote like that. It's just the same thing is applied here. एक piece पूरी position को गंदा कर देता है. If I could just remove that, I think he's clearly better. Yep, and ऊपर से रास्ता भी नहीं है कोई क्लियर आने का. तो going to a7, bishop here, c6, बहुत लंबा प्रोसीजर है भाई. एंड इसके लिए टाइम शायद उनको मिलेगा नहीं, बिकॉज व्हाइट अभी के लिए वापस आया है, बट ही विल ऑलवेज ट्राई टू हिट बैक अगेन. तो ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं. एंड टाइम से याद आया भाई, 24 मिनट है विद 22 moves to go. So Vidit is already a minute a move पे आ चुके हैं, एंड सिर्फ इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा है. सो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इवन नाउ. राकेश, बिल्कुल बिल्कुल. बट सहज, 2 questions for you. जॉनी पूछ रहे, सहज यू लिव इन बुडापेस्ट, देन व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग द ओलंपियाड? एंड सेकेंडली मेरा क्वेश्चन है भाई, ग्रीडी वीडी के हिसाब से व्हाई, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद बिशप टेक्स a4 राइट नाउ? मैं पहले सवाल तो बिशप टेक्स a4 देख के डर लग रहा है यार. क्वीन e4, बिशप d3, यू विल गेट मेटेड देयर वेरी वेरी फास्ट. लाइक आई मीन साहिल भाई एक बार दिखा दो चैट को. बिशप a4, क्वीन e4 आई थिंक इज इनकमिंग. एंड देन आई थिंक वो बिशप d3, d5, दैट लुक्स सो रिस्की. एक पॉन के लिए, वो भी कोने वाला पॉन, इट्स नॉट वेरी वेरी यूजफुल. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई वुडंट रियली लाइक बिशप a4 सो मच. बेसिकली जब भी ये बिशप कोई डायगोनल छोड़ता है, व्हाइट खुश जाता है भाई. पहले ये छोड़ा तो अब ये वाला भी छोड़ दिया. तो वो बिशप एकदम यूजलेस बन गया. और why I'm not playing the Olympiad is because I'm not high enough rated. Simply put, अगर मुझे इंडिया के लिए खेलना है तो I have to be 2700 and above. उसके लिए वो तो हो गई भाई. हाँ, वो तो हो गई यार. लास्ट टाइम भी there were 3 teams and last board जो था that was I think अभिजीत गुप्ता. He was board 3 का जो रिजर्व था, जो टीम 3 का जो रिजर्व था, that is a 2600 player भाई. that इतना फायर पावर है इंडिया में अभी इस टाइम पे. It is impossible. आई थिंक इंडिया में इतने, तब से और डिफिकल्ट है. अब तो 2750 ही कितने सारे भाई, इट्स इनसेन. हाँ, ऑलरेडी देयर आर 3 2750s. मतलब जैसे हम देख रहे हैं ना कि इंडिया की टीम को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इन विनिंग. यूएस टीम इज आल्सो नॉट दैट कंफर्टेबल. इनफैक्ट यूएस टीम का हो सकता है दे माइट एंड अप 2-2 बिकॉज लेवन अरुणियन हैज ब्लंडर्ड एंड इज ऑलमोस्ट क्लोज टू लूजिंग. या फाबियानो इज विनिंग. But just to show कि the Olympiad is not an easy tournament, सहज भाई. बिल्कुल.
एंड अरुण की यही पोजीशन थी जो मैं देखी थी, एंड यहाँ पे मार दिया हाँ इनफैक्ट हाँ, d6 ये याद है। f4 queen e7, of course we don't, queen g1, तो don't बहुत like ज्यादा it. शाई क्वीन है. king f8, वाओ. रुक g8 का आइडिया। Yeah, e5, rook g8 was a blunder apparently by black, and queen b6, Aronian was now winning. Pawn to d5, knight e4. Oh, wow. Beautiful. Takes को rook d8 check and queen coming back to g1. Great geometry there. Wow. Wow. Queen वापस g1 and g8 गया. So you can't take this. Of course, black saw this. उन्होंने खेला यहाँ पे rook to g6. अब आता है knight d6 was the mistake, but it looks so natural. Bishop d7, bishop d3, rook g2, and काफी complicated game है. 7 minutes है अरुण के opponent के पास. तो at the end, I think अरुण जी जीत जाएंगे. But yeah, as you said, Olympiad बहुत tricky event बनता जा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. वुमेन सेक्शन पे एक हल्का सा क्विक नजर मार ले टिकू में. बिल्कुल भाई. एंड हाँ भाई, लेकिन वो पहली जो पोजीशन थी उसमें वो मेट कैसे बच रही है अरोनियन के गेम में? लाइक कैन आई नॉट जस्ट गो क्वीन टू e3 उस पोजीशन में? यहाँ पे क्वीन e3 पॉसिबल नहीं है क्या? मेरा आइडिया कि जस्ट f5 खेलना है, क्वीन h6 को नेक्स्ट मूव. व्हाट्स द आइडिया? एक्चुअली एक मूव है क्वीन a7 व्हिच इज लाइक वाह, very Why? so tricky. difficult to spot. Yeah, क्वीन there's h3 also and then f5 रुक g1 है. f5 भी एक. ओके गॉट इट. मे बी एक चाल पहले जाओ एंड आई विल प्ले f5 इमीडिएटली. कि मेरा पॉइंट है अब क्वीन e3 क्वीन h6 लाऊंगा एंड देन इट विल बी मेट. क्वीन a7, ये क्वीन a7 का आइडिया इज द इशू. वेरी ट्रिकी मूव. हम्म. चाइना क्या है? चाइना का भी चल रहा है भाई. चाइना I think we checked Ding's game, right? He was better. So we can also check that. हाँ, Ding की game अगर हम जाएं for a second. Black is still fighting. That's the news. So ऐसा नहीं है कि गेम खत्म हो रही है. And एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि भाई टॉप प्लेयर्स इतना आसान नहीं होता भाई. एक 2500 इवन 2100 को हराना भाई. कल तो लेवॉन ऑलमोस्ट हार गए थे. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर प्लेइंग फॉर देयर लाइफ. या उनका एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है. And top players kind of can get relaxed in the first couple of rounds sometimes. Oh, by also दिव्या के अपोनेंट के पास सिर्फ 5 मिनट पड़े हैं. Maybe we can quickly have a look and see what's going on there. दिव्या का गेम है, not Vantika. A quick run through the women's section chat. First of all, Harika, you can see she has a huge pawn, mass on the queen side. Sahaj, this looks amazing for Harika. Yeah, I think it looks fantastic. Yeah, I mean सब कुछ ही she has a +1 advantage. Black के pieces देखो, सब कुछ एकदम back rank पे पड़े हुए हैं. It's like it's Fisher random chess there's a game. basically Fisher random chess हो रही है. सब back rank पे बैठे हुए हैं. I mean white के pieces knight a3 knight c4 आ सकता है maybe soon. That looks quite good. Even more pressure here. तो b6 पे भी. Yeah, true actually. And d6 पे भी भाई, d6 पे भी सभी आ रहा है. Yeah, I think Harika is on her part to win the game, so she looks like she's in a great position. Divya game की बात चल रही थी. Divya's opponent has less than 4 minutes. Divya, can we have her camera? I would love to see if we can see any visible signs of nervousness on her face. And मतलब position में इतना कुछ तड़का नहीं है. It's just the time pressure. हाँ. Thank you, Shadiyab ji. Which team is on top of the board? यार अभी क्या है कि it's only one round, so there are many teams which have a perfect score. And by the way, knight to h4 खेला है queen को attack करने के लिए. Where is the queen headed? कोई अच्छे queen e4 में queen ना trap हो जाए. By what? Why is the bar just absolutely saying -4 here? Oh, d4 मर रहा है ना भाई, और knight f4 भी आ रहा है next. Correct. क्या d4 मर रहा है किधर? भाई ये pressure है, ये भी आ रहा है. क्वीन e4. अच्छा क्वीन e4 के बाद कह रहे हो आप? अच्छा क्वीन e4 तो ठीक लग रही है. knight मर रहा है and knight f4 is incoming. So she's winning now. The game. Yeah, Divya is winning. She just blundered. Yeah, भाई she just सही टाइम पे आ गया यार. बढ़िया टाइमिंग ओपी. Yeah. So I think Divya से आ गया 1 point. Let's do like a round up. 1-0 India. Harika also 1 point आ जाएगा आराम से. हाँ, Harika 2-0 हो गया.
ठीक है. And Vantika. Vantika का देखते हैं. By the way, she took What on is she d4. doing? C takes. Knight f6 was a mistake. Apparently, knight h6 खेलना था. Was the better move for her opponent to knight Why? f6? Queen e6. एक second. हाँ. अच्छा, आप Knight s- टेक्स रुक e8 करके नाइट d4 मार दो. भाई knight d4 सीधा मर रहा है शायद. हाँ, knight d4 अब. हाँ. हाँ. So if you take, So then you knight can pin this and Yeah. so गया. d5, there is Beautiful. rook d5. So you can't take chat because this is pinned. तो कहीं ना कहीं पे Vantika would have been in some trouble here. But knight f6 was a slight mistake. Castle कर लिया उन्होंने. Oh, rook e8, bishop b5. Still anybody's game, यार. नहीं, I think she's out of the woods, Sahaj bhai. She's not like under that much pressure जितना पहले था. आई थिंक अभी भी बहुत प्रेशर है क्योंकि रुक किंग साइड पे अटैक बहुत जल्दी आ सकता है एंड वंतिका का टाइम भी थोड़ा कम है. आई नो Yeah. शी हैज मैनेज्ड द टाइम रियली वेल अंटिल नाउ. You know, Yeah. कुछ टाइम पहले there was like a half an hour difference and she has really come a long way since then. But still, I wouldn't say she's completely out of the woods. मुझे लगता है कुछ rook e6, rook h6, something like that can happen and there can be some mating attack ideas. I think time का factor जो है ना, like you know, having 1 hour on the clock and being -1 is sometimes better than having 20 minutes and being -0.5. And यहाँ पे time थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा. So Vantika का भी कुछ पता नहीं है. So let's assume like वहां से point अभी कुछ पता नहीं. And maybe 0.5 assume कर सकते हैं. And Tania finally, what do you make of this position, Rakesh bhai? Tania is playing black slightly minus. I mean, white is playing for 2 results. ऐसा लग रहा है कि या तो white जीतेगी या white draw कर लेगी. So Tania is, I think, maintaining the equilibrium. Draw हो रहा है तो she is happy. She is happy to fight for a win as well. But I think this game might end in a draw, Sahaj bhai. It could very well end in a draw क्योंकि दोनों साइड से ना भाई I think एकदम वो safe वाली चेस हो रही है. And I think this could end in a draw very, very fast. You're right, bhai. You're right. I have nothing to add here. Chat. This looks 3-1 like, I'm thinking India के लिए. Yeah, 3-1 बहुत likely score लग रहा है. So या तो Vantika will most likely draw, and if she loses, then maybe Tania has some chances to convert somehow because I will say 3.5 in the women's team. I will say 3-1. That's great, but what's not great is with its move. Greedy VD rises again. Bishop takes A4 मारा है. No. If we go to with भाई भाई मैं बोल रहा था he's greedy VD. भाई chat कह रही है Vidit is winning. How is he winning? A pawn लिखो. That makes sense. This is lost. सहज भाई ने बोला Bishop after Queen E4 black is lost. अबे देख के डर लग रहा है यार. Like Queen E4, bike. What has he looked at? I would like to see what Vidit has looked at here. Because Queen E4 देखते ही मुझे लग रहा है कि यार I would reject this so fast. But I'm very interested to see what he has seen. Because clearly he has seen something that I haven't. साहज भाई को existential crisis हो रहा है अभी. हाँ भाई. बिल्कुल. And Queen E4 played and chat. Not to forget, idea सिर्फ ये नहीं है. भाई रुक मर रहा है. So you have to first do something about that. So tempo भी नहीं है आपके पास. आपको I don't know rook b8, rook a7 क्या खेलोगे? And then white plays bishop d3 potentially, and everything comes with tempo. And अगर g6 खेलते हो, then the dark space bishop h6 will tempo. It's like everything is coming with tempo. This is very dangerous. And rook a7 on the board, by the way, it has been played. You know, अगर मुझे draw करना हो white से तो I can do it, right? I can play bishop h6 and bishop e6. I'm not sure immediately, but वो queen g6 queen h6 की जो check है ना मेरे को दिख रही है वो. I don't immediately खेल सकता हूँ. अभी तो नहीं. हाँ, immediately तो नहीं खेल सकता शायद मैं, but लेकिन ये इस तरह की draw कह रहा हूँ मैं. ये possible हो सकती है. एक बार और कर दो ना. Threefold repetition हो जाएगा. But honestly, भाई ये नहीं होने वाला भाई. ये there is no way. I mean, although we did see knight f2, I think white has a great position and he's a very strong player. He will understand कि भाई he has Vidit by the ropes. So Sahaj भाई, क्या है next move? Is it bishop d3 now? He played rook a7 by the way. फटक से खेला Vidit ने, but also another factor Sahaj भाई is Vidit's time. Half the time of his opponent है Vidit. यार 18 मिनट है यार. 18 मिनट है. चैट मेरा से सवाल है, ठीक है? Vidit game result
predict करो win, draw, loss. Two factors. One, he's under attack. ठीक है, Bishop D3 में mate in 1 का threat है. Number 2, he has 18 minutes to play 20 moves. भाई, if this was an end game, Sahaj भाई, I'd be chilling. But राकेश भाई, यहाँ तो यार डर, genuinely डर लग रहा है मुझे भाई. सही मैन, I just hope Arjun can't win faster. मतलब विदित के लिए एटलीस्ट, क्योंकि विदित को थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होगा कि अर्जुन जीत रहा है, बट और कोई बोर्ड पे इंडिया के लिए मेरे को विन नहीं दिखाई दे रहा, तो विदित हैज टू होल्ड टिक्कू भाई. क्या बात कर रहे हो राकेश भाई, 2.5 तो चाहिए ना यार, पॉइंट नहीं दे सकते. नहीं, आई थिंक विदित का ड्रॉ होगा, अर्जुन जीत रहा है, एंड बाकी सब तो आई मीन होल्ड कर ही रहे हैं ना. आई थिंक 2.5 तो होगा ही 100%. हाँ, कैन वी हैव फुल स्क्रीन? मैं कैमरा की बैटरी चेंज कर रहा हूँ जल्दी से निरी भाई. लेट्स गो फुल स्क्रीन बिकॉज क्रिटिकल मोमेंट है. विदित का कैमरा लगा दो. चारों बोर्ड वहां पे दिख रहे हैं, कितना कुछ क्रेजी हो रहा है भाई यार. अरे विदित भाई, व्हाट डिड ही प्ले? He's thinking, I think. White is thinking. बाप रे, सच अ क्रूशियल मोमेंट यार. विदित की गेम इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इन दीस कपल ऑफ मूव्स, मुझे फीलिंग आ रही है. एंड लुक एट हिम, ही इज नर्वस, ही इज शेकिंग हिज लेग, ही इज critical moment, chat, critical moment. Yep, very Like, critical. The only Indian player who is winning is actually chilling. You can see Arjun Erigaisi not at the board. He's like, वो अपना ये खेल सब तो लोग मजे क्या से स्ट्रेस ले रहे हैं भाई? He's वो like, तो मजे हाँ, में एकदम. सच्ची. क्या खेल रहे हो तुम लोग यार, चलो. But चलो yeah, भाई. I mean, टिकू I'm भाई, back, निधि भाई. I'm back. round two से ही the tough games have started. I feel this time around. Absolutely. हमारे लिए टफ है ना भाई, क्योंकि everyone is treating us like, that this is the team to beat. So I think Correct. definitely we're gonna feel that from the first round itself. चैट ने लगता है, मैं जब चैट से बोला पूछने के लिए कि भाई व्हाट डू यू थिंक ऑफ द रिजल्ट, मैक्सिमम पीपल सेड ड्रॉ और लॉस. सो कई लोग थे वीडी फॉर द विन, बट क्लियरली द टाइड इज नॉट राइट नाउ इन हिज फेवर. बट तब भी बार चीख चीख के -0.17 कह रहा है सहज. कई बार ना द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स इज सो डिफरेंट कि समझ नहीं आता भाई लॉजिक क्या है -0.17 का. बिल्कुल. एंड राकेश भाई, ओपोनेंट को देखो. Does he look like a guy with the body language जो अटैक लॉन्च करने वाला है कि विली चिकन आउट? क्या लग रहा है भाई? I think उसकी शक्ल पे लिखा है भाई ये मेरे साथ हो रहा है. I am about to beat a superstar in Vidit. I have the white pieces. I genuinely have a chance. उसकी शक्ल पे ना एक नर्वस कॉन्फिडेंस है, मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रहा है उसकी ये पोजीशन है. क्यों सहज भाई? बिल्कुल, क्योंकि you have such a also very strange from Vidit ke he took the pawn. I was not expecting that at all. I think that was his way of kind of making the position a bit complicated ताकि opponent को hope दो. वही ये गुकेश भी यही कर रहा था, hope दो opponent को ताकि देखे they will overpress and then eventually they will make a mistake in a tough situation. तो बिशप D3 मुझे लगता है बिल्कुल पॉसिबल है अभी. आई थिंक इट्स वेरी वेरी पॉसिबल. बट वो G6 के बाद आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू प्ले. यप यार एक और पता है बड़ा क्रेजी सा आइडिया आया मेरे दिमाग में. सॉरी साहिल भाई, आई कट यू ऑफ. बट द क्रेजी आइडिया इज टू प्ले H4 विद द आइडिया ऑफ knight H3 एंड knight G5. वो अब VD है तो वो मारेगा ही, आई थिंक. चैट, आई नो बहुत जगह गेम से बहुत चीजें हो रही है. ठीक है, हमें वंतिका की डिमांड आ रही है, दिव्या की, गुकेश की. सो हम एक काम करते हैं, लेट्स गेम हॉप. ठीक है, लेट्स हैव अस ऑन द स्क्रीन. निरी भाई अगेन हमारी शक्लें लगा दो ताकि बोर्ड पूरा बड़ा हो जाए. बिगर इज बेटर. तो लेट्स हैव द बोर्ड एंड देन वील गेम हॉप क्विकली बिटवीन दीस 3 गेम्स, 10 seconds each, and then we'll come back to अपना VD's game because I feel कि वहां पे कुछ होने वाला है. That move might decide the game. So first of all, गुकेश की गेम में one update. Knight A4 हमने देखा था, Knight D3 खेला Rook C7 के बाद. So he stopped C5, Queen D8, Rook C1, Knight D5. So nothing crazy so far in this game, right? That's standard. Yep. Equal. And then we have Vantika's game जो चैट करी थी कि वो जीत रही है. यार आप मेन से वैसे ओपन से वुमेन्स पे क्यों जा रहे हो? ओपन वाला करो ना एक बार राउंड अप.
नहीं ऐसे because कर रहा वो उसमें I think she was winning apparently. So just to kind of finish that, I think yeah, Queen G4, F5, and this is she has won the D4 pawn. So Divya is winning. That is also a win. And finally, Vantika की game अगर हम देखें, Bishop B5 पे Rook E5. What? What? है। ओ काम तो कर रहा है थोड़ा बहुत। I mean D5 थोड़ा maybe बहुत- पोजीशन थोड़ा बहुत- पोजीशन पे नहीं काम कर रहा हूँ, पर मेरे पे काम कर रहा है। पोजीशन पे ना कर रहा हूँ, Psychologically काम कर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, डर लग रहा है मुझे। Because you know Rakesh bhai, apparently D5 is actually fine for black. In fact, Rook FC1 जो best move है, that is the best one. It allows Rook G5 check, and then Oh, King okay. F1 दौड़ना है. So not easy to play these moves sometimes as white. Tricky, To allow tricky. this check. क्या कहा आपने राकेश भाई? Tricky. Tricky. So chat, Vantika is winning, but Rook FC1 खेलना is not super easy. So now we go back to the Vidit game. देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है. Sorry for moving around a little bit यार chat, but कई लोगों की बहुत डिमांड है भाई, डिमांड पूरी करना हमारा काम है. And we are back to the VD game now. Rook A7 के बाद. Okay, so he's still thinking. No more, no H4 yet, as of yet. Bishop D3, G6, Bishop C4. That is also interesting. वापस Bishop, मेरा आइडिया मैं Bishop E6 मारने वाला हूँ. That's the best move, Saj bhai, according to the engines. Wow, nice. That's the best move, bhai. My engine. अब इसके बाद तो नहीं पता यार, इसके बाद नहीं पता यार, इसके बाद नहीं पता, इसके आगे नहीं दिखे भाई. Bishop H6 दिख रहा है मुझे, but I somehow know that has to be wrong. You know, usually in position में लगा के जब बैठा है ना. नहीं भाई, हाथ ऊपर है. हाथ थोड़ी लगाना पड़ता है इंजन को चलने के लिए भाई. ये कौन सा टच से स्टिमुलेट थोड़ी होता है इंजन भाई, ये क्या लॉजिक है? अच्छा, आपको पता होगा ना इंजन को कैसे स्टिमुलेट करते हैं सबसे अच्छे से. भाई मुझे तो पता है भाई, मुझे तो अच्छे से पता है भाई. नहीं भाई, I have two screens here and I'm looking at Ninja and I'm looking at the chat here. Gukesh, Divya won. Did she win the game? By the way, big update in Not Arjun's yet. game. Let's quickly go there. Tekho bhai. Really? Arjun's Okay, game let's में go. बहुत सारे exchanges हुए हैं. Let's go. He's completely winning. Completely so- winning. FUI हमने लास्ट देखा था अर्जुन की गेम में चैट, उसके बाद he did go CB6, so he went for the other end game जहां पे वो GF2 चेक कर रहा था. Pawn takes F4, pawn takes C7, pawn takes G3, rook takes D6, pawn takes F2, king E2 and rook to E7. and जैसा हमने कहा कि भाई ये pawns completely broken structure है, pass pawn ready है, 7th rank पे pawn है. He can even just play rook F1, chop this off, next he can chop this and this off. So it should be completely winning for Arjun. Yeah, This I is think over, I that's think. this is over, yeah. क्योंकि I think pawns same रहेंगे, पर black के pawns doubled है और white के pawns connected है. तो black का जो E4 का pawn है वो तो अभी गए हो, पर E6 का pawn भी मतलब बहुत जल्दी मर सकता है. And also those pawns on E6 and E4 also could do a very good job for our king. उनकी वजह से black rook हमें check नहीं दे पा रहा है. So I think there is like a very very big advantage on that. I think Arjun is taking this home very soon. Yep. And 9 मिनट है ओपन के, उसमें 9 मिनट में तो कुछ नहीं होने वाला. So I think Arjun is the one guy who is almost sure to win now. बाकी कहां से पॉइंट आ रहे हैं अब तक क्लैरिटी नहीं मिल रही है. So अगर हम जाएं एक बार विदित गेम पे वापस, जहां पे 27 मिनट है ओपोनेंट के पास, तो टाइम प्रेशर इज म्यूचुअल. इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग फॉर बोथ प्लेयर्स. एंड वाइट को बहुत जल्दी चॉइस करनी है कि बिशप D3 खेलना है, कुछ और खेलना है. एंड ये नाइट थोड़ा सा हैंगिंग तो है. इट्स समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि यार मैं बिशप D3 खेलूंगा, G6, अब इसको चलना पड़ेगा दोबारा. तो कैसे हैंडल करें इसको? I don't know. Bishop C4 is what we were discussing, ना? Yep. Bishop C4 and we take on E6 and Queen G6. भाई ड्रॉ करनी है मुझे. Queen E8 के बाद मुझे दिख नहीं रही थी चाल. अब मैं आपको ये बता रहा था कि हमें Bishop H6 खेलना, मतलब वो दिमाग में आती है चल, क्योंकि you see exchange material जब भी मिलता है, we all get greedy, like greedy weedy, but पर पता है कि ये हमेशा गलत रहेगा. D5 खेल सकते हैं maybe. Is that the best move? D5. Wow. D5, is that the best move? I thought I could keep my streak going. No, D5 apparently has issues. It's only one issue actually, and that's the move B5. Wow. Oh. Wow.
Wow. Deep. Yeah, that's good. Wow. Yeah, that's pretty cool. मैंने Okay, so जितना D5 नहीं खेलते. हाँ, जस्ट अ क्विक अपडेट, जितना अर्जुन विनिंग है उतनी ही विनिंग दिव्या भी है, सो ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया. एंड हाँ. फाबी हैज वन, एंड विद दैट ही हैज क्रॉस्ड 2800 yet again. So good news if you're a US fan, but India के लिए दिव्या and Arjun are winning. Come on, who else can add a victory? सहज भाई, आपके हिसाब मुझे लगता है विदित जीतेगा ये. He has the perfect position for it. By the way, Hmm. Levon's opponent found Queen A7, and now is winning. Levon is fighting for his life in 2 games in a row. हाँ, ये क्या हुआ? ये तो क्या दोनों गेम क्या क्रेजी खेले ना लेवॉन ने. भाई 2100 से हार रहा है, 2300 से हार रहा है. भाई लेवॉन को क्या हो गया भाई यार? एक मैच करा दो मेरा लेवॉन से भाई अभी प्लीज. 100 गेम मैच भाई. भाई क्या पता मैं भी एक दो ड्रॉ फेल दूं भाई. हु नोस. मुझे मोटिवेशन आ रही है भाई देख के गेम्स. अच्छा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ रही है. एक बार चैट से पूछ ले क्या रिजल्ट होगा. मोटिवेशन एकदम चला जाएगा. चैट एक बार सहज भाई, रोस्ट आप कर दो. पूछ लो सहज यार. भाई के मजे ले लो. डाल दो भाई टिक्कू जीतेगा. अच्छा डाल दो अच्छा भाई. अच्छा सहज भाई अच्छा के पूरे मजे हो जाएंगे. चैट गेम ऑफ 100 between Sahil Tikku versus Levon Aronian. What's the बट score? you do Spam कर दो understand please. कि you do नहीं understand कि अबे 0.5 कुछ we don't understand anything. We don't understand. Chat लिखो आप. 0.5 is a victory for me. You to get that though. हाँ, बट देखते हैं क्या ना रिजल्ट चैट, रहेगा? चैट क्या बोलते हैं वो देखते हैं ना. Let's 100 go गेम chat. चैट बताओ. एक चैट नंबर Let's go. लिखो कि वो कितने गेम्स जीतेगा. By the way, आई एम Divya has प्रेडिक्टिंग won. 100-0. 100-0 for 100-0 अरे भाई. Levon. 100 अरे इतना भरोसा 100-0. यार. राकेश भाई थैंक यू यार. 100 गेम जीतूंगा मैं. किसी ने 101-0 लिखा था. एक गेम भाई शगुन का. भाई देखो कुछ लोग हैं 97.3 वाले हैं भाई. that's good. 99.5 लेकिन 0 क्यों लिखा है भाई? ये क्या था? आधा पॉइंट कहाँ गया? हाँ 0.5. नाइस है भाई. 2 लोग हैं भाई. आपको मेरी तरफ से भाई शुभकामनाएं. थैंक यू. मेरे को लगा बोलोगे आपको मेरी तरफ से डायमंड मेंबरशिप. मैंने कहा ये सही है. ये सही है भाई. नहीं उसके तो लाइक करना पड़ेगा. चैट कितने लाइक्स हुए? बाय द वे चैट 1500 लाइक्स. जल्दी लाइक करो. एंड नॉट टू फॉरगेट एक लिंक पिन्ड है भाई. विशी आनंद से खेलने का मौका है आपके पास. उस लिंक पे क्लिक करो. यू विल जॉइन द वर्ल्ड. द एंटायर वर्ल्ड एक टीम है. यू विल प्ले अगेंस्ट द 5-time वर्ल्ड चैंपियन विशी आनंद. आपको मौका मिलेगा. ब्रैगिंग राइट्स मिलेंगे कि मैंने वर्ल्ड चैंपियन से खेला है और शायद हरा है. तो भाई वो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन जरूर करना. और इसके साथ ही हम जाएंगे वापस. अरोनियन स्ट्रगलिंग भाई हमारी. अरोनियन जाने दो. एक गेम पे क्लिक करना, वो है विदित का गेम G4 बाय ओपोनेंट. वन ऑफ द क्रेजीएस्ट गेम्स ऑफ दिस राउंड. सहज भाई वापस 9G4 आएगा क्या? भाई आई डू नॉट थिंक कि विदित ने ये मूव देखी होगी. I think it's impossible. Of course it's a mistake, but it's impossible to see this move. पता है ये ऐसी चाल है जो पता है गलती है, पर वो ढूंढने के लिए टाइम चाहिए जो विदित के पास नहीं है अभी. विदित के पास 16 मिनट पड़े हैं. तो to go into such complications, it can be a bit tricky. जो फॉर एग्जांपल इंजन यहाँ ब्लैक के 2 बेस्ट मूव बता रहा है ना, उसमें से कुछ नहीं खेलने वाला. वेरी अनलाइकली. कैन यू गेस व्हाट्स द बेस्ट मूव नाउ साज? लेट्स गो. B5 एक लग रही है एक तो. नहीं, द बेस्ट मूव King H8. या इट इज किंग H8. ये क्या है? वेरी डिफिकल्ट भाई. अगेन मैं जस्ट चैट को और सब कहती आप दोनों को तो समझ आई गया होगा, बट चैट को भी समझाना चाहूंगा कि King H8 would not appear to me by myself. क्या हुआ भाई? No way, he played H4. He played H4. What? Is that the best move? Bhai, I told you the best move. It's King H8, bhai. It's but not there H4. were two, na? There were two. Second was apparently Knight E5. H4 With the idea कि अगर pawn से मारोगे Bishop B3, and this is hanging. Huge mistake. Ooh. H4. Okay, it's now Bishop D3, and now that's again like White is back in the game. तो कुछ भी हो सकता है भाई. अभी भी it's not like it's very bad for him or anything. It's just जो advantage था विदित का, I think that has gone away.
Come on, बिशप let's go, d3 let's अभी go. भी खेल सकता है वो, हाँ. He's not necessarily worse here. I don't think he's worse. But 16 मिनट देख के डर लग रहा है मुझे. Yeah. I'm also a bit surprised by the fact that how quickly Vidit reacted to this move, because clearly I don't think he would have seen it. वी विल सी. जस्ट चैट हमारे ऊपर है वीडी. आप देखेंगे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं. ही विल पुश द पॉन h pawn to h4 very very soon. एंड चैट एक निधि भाई पर बर्ड्स आई व्यू लगा दो यार. चारों गेम देखते हैं भाई किसमें क्या इवैल्यूएशन है, क्या स्कोर है, बिकॉज अब तक मुझे 2.5 पॉइंट कहां से आ रहे हैं मुझे तो क्लियरली नहीं दिख रहा. तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए हमारे लिए भाई. देख ले एक बार कि भाई कहां से आ रहा है. एंड साज एंड राकेश भाई देखो, फर्स्ट बोर्ड वी हैव गुकेश, feels roughly balanced. I think उन्होंने वहां कुछ G5 फेंक दिया है, so that warrants a look. And फिलहाल के लिए इक्वल लग रही है. सेकेंड बोर्ड पे वी आर क्रूजिंग, सो दैट इज वन रिजल्ट गोइंग इन अ फेवर. थर्ड बोर्ड तो भाई इसका तो मत ही पूछना मुझसे, ये तो मुझे गेम के एंड पे पूछना भाई क्या हुआ, क्योंकि इसका मुझे पता नहीं है. एंड बोर्ड 4 ऑफ कोर्स आई थिंक इज आल्सो क्रेजी. सो फिलहाल के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है. Board 4, I think थोड़ा, I think it's in our favor. Like board 4 पे, I think only Hari can push in that position. जितना, I think he has double bishop advantage. He can push e4 at some point. टाइम भी उनका मतलब ऑलमोस्ट डबल है अपने अपोनेंट से. विदित का गेम आई थिंक इज द क्रूशियल वन, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारा टाइम कम है और बहुत क्रेजी क्रेजी पोजीशन है. गाइस थिंक अबाउट नाइट f6 विदित. भाई यार मतलब आई पर्सनली ऑल्सो फील कि गुकेश जीतेगा ये गेम नाउ, बिकॉज ही हैज पुश्ड दैट g5 वाला मूव. I have a feeling that Gukesh will win this also. I hope, but Sahaj bhai, this has been मतलब not easy overall the whole game. जो हम शुरू में सोचते आ रहे थे. नहीं, I still think this. I mean, I don't think these opponents are easy by any means. Of course, you know. By the way, Divya has won her game, so that's the first result. Nidhi bhai, can we quickly switch before we missed that action? Let's go. Yeah, we can see her. Yeah. I think we see them writing the notation, and Divya Deshmukh has won the first game for Team India. So that's 1 point. Ina Kitty 1-0 up for the women's section. And yeah, I mean, बहुत आसान तो नहीं, मतलब it was a very smooth conversion, let's say. Very well put, Sahil. Yep, and also with this win, she's now 2-0 in her in her Olympiad, yeah. Absolutely. And great win with the black pieces, by the way. So women's section mein we are doing really fine now. Let's go back. I think it's time to go back to the Gukesh game maybe, because वहां पे वो G5 moves हमने देखी, उससे गेम काफी चेंज हो गई है. So let's go and see कि भाई ऐसा क्या है भाई, G5 कहां से आया. And we saw it till wait, A5 pawn भी missing है. रुको, how did we reach here? So knight D5, A3 हमने लास्ट देखा था चैट, याद है? Can we add the board नीरी भाई इस पे? Yes, thank you. And F6 आया after Queen D2. ये pawn पे attack. गुकेश ने कहा तुम मार लो. And apparently G5 was the first preference of the Indian as well. Queen takes A5 and now Bishop G6. So गुकेश की understanding कि यार ये pawn मैं दे सकता हूँ is just on point. And now Queen D2 back, and the second rook might come to G7 now. तो very difficult to judge who's better. He's a pawn down though. He is, but I think he can also win the pawn back anytime he wants. He can play bishop d3 and gf4. So pawn to matlab हमारे हाथ में है, but I think he didn't blunder the pawn. He sacrificed the pawn. So I think he has, I mean, more than enough compensations. He has double bishops, that powerful knight, g5. You know, जहाँ पे गुकेश के ऊपर अटैक आने वाला था, वहां से गुकेश अटैक कर रहा है. Like think about that. You know, G5 पे अटैक आने वाला था गुकेश के ऊपर, but now G5 खेल के वही अटैक कर रहा है. So I feel there is a lot of compensation coming his way, and I think this looks this looks like a really positive sign to me. Yes, 17 minutes. That's one little sign of worry from my angle. देखते हैं कैसे handle करते हो, and this is great practice again for the World Championship and the future rounds in the Olympiad as well.
कि time pressure में कैसे handle करते हैं. They have increments, so it should be doable. And 14 more moves he has to play in 16 minutes and 55 seconds. So will be difficult, but at least his play is a bit more simple than Vidit's, for example. VD गेम जा रहे हैं भाई, उधर ही जा रहे हैं, डोंट वरी, उधर ही नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है भाई. VD गेम पे ही है बिकॉज विदित के फेवर में बार दिखा रहा है यार. और वाज इट लाइक White just made a mistake. What did he play? Bishop D3 was that's a logical D5. move. He played D5. Cat VD Galti OP. D5, can I not play ED5? Yeah, I cannot actually understand why it's a mistake. But do you have to play B5 here or what? No, B5 नहीं. there is Bishop D3, D6. ED5 मारना ही पड़ेगा. I saw the move, तब भी समझना मुश्किल हो रहा है. What's the move? It's knight takes E5. Okay, no. What? No. Knight takes E5. Queen takes E5. Now you play E takes D5. And if you play Bishop D5, now Bishop B3, and Queen D2. Oh, holy. भाई ये तो नहीं होने वाला, यार. महेश भाई, क्या लगता है कितना चांसेस ये होने का? He took on D5, by the way. No, I don't think it's. The best part is he still can take on E5. After Bishop D5, he can still take. But I am sure White missed it for sure, but I don't know if Vidit missed it or not. I'm hoping he didn't. But इसका time कम है ना, तो निकालना बड़ा मुश्किल रहेगा यार. And we see the reaction of the opponent just playing D5. VD is not surprised or is not excited to see that. तो शायद उन्होंने अभी वो idea spot नहीं करा. नहीं, Vidit looks a bit. To me, it looks like he realizes that this was not a good move. It's like this kind of. Because he was expecting expression. Bishop D3. Yeah. Right. And chat, it's still possible. He can take on E5. Knight takes E5. Queen takes E5, Bishop takes B3, and Queen takes D2. And now this pawn move looks brilliant. Dark square is weak here. Bishop D6, Queen F4 aa raha hai, and it feels like a very wholesome strategy Vidit has, and he has had it. Unka plan to clear tha, so now knight takes E5 is the best move, and it gives Vidit an advantage. So maybe the score might be very comfortable for us now. If he does find this move, critical moment for Vidit now. 95 is, I think, the closer we are to it, the more likely it is that he will find it. 95 maybe is good. Maybe I go Bishop C3. वो भी देख के डर लग रहा है कि White के सेंटर में इतने बैठे हुए हैं तो डोमिनेट कर रहे हैं. You have to be very careful here. So 95, let's go Bishop C3. Yeah, Bishop C3. So you attack the knight now, and there is just no knight bishop. Focus. Exactly. Now. भाई ये तो बार बढ़ते क्यों जा रहा है White के लिए? From the moment he played Bishop C3, apparently not the easy move at is all. Knight C6, but it's not easy to play Knight C6. To It's be the honest, only move here. Knight C6. It's the only move for an advantage. Yeah, I don't think he finds 95 then. Yeah, not easy. I don't think he finds. Because 95 is the only move. Knight C6 is also the only move. That's very, very difficult. Yeah, very, very difficult. He can also play C4, but that's not really helping, to be honest. By the way, weird moves. Vidit, both under 15 minutes for India. Oh. Not very comfortable. By the way, koi keh raha hai, Vantika is losing. Just, Nidhi, let's have the cam on with it. I'm going to do a 10-second detour here. Vantika, how is she losing? She's not losing. Bhai. She's not losing. She has not played. She's not even played. Dude, she has 1 minute. What? Vantika has 1 minute after rook e5. What? यार वो लगाओ ना उस पे कैमरा पे वो दिखाओ. Shows Vantika. What's going on? Zoom in करो. हाँ. Because हाँ कैमरा पे दिख रहा है, it is her move. मेरे को clock भी देखनी है कि if this is I think वो angle नहीं होगा सहज भाई. That's why. But does she know it? Yeah. Oh, she just looked at the clock. She just looked at the clock. Yeah, she is shaking for sure. This is a confusing move.
but to her credit, it is a very Oh. confusing move by Black, Rook E5. Why I think she does it. She has not seen it. I mean, sorry. I mean the time is correct. Oh I think the time is no. correct. Yeah, D takes C5. No, Was that the best no, move? no. No. It's not. It's not the best move. No, it's not the best move. Rook F7 was the best move, and now Black is back in the game. Oh. And Oh, that's Sahaj, not a good sign. chat, White has only one move to save the game here. Queen B3. That's Queen Bishop C4. B4. She has to Oh. That find is it. tough. Yeah, she plays it. She plays No, it. She just played Bishop plays it, B4. she plays. Yeah. उसका हाथ था Bishop के ऊपर. She plays it. And now- C5? Only move from Black, C5. मतलब what a crazy game Vantika and Vidit का आज. And the crazy is only starting, Rakesh bhai. It's like the start of a psycho thriller, because C5 के बाद best move is Bishop C5. भाई साहब. भाई ये चल क्या रहा है भाई? आज क्या हो गया ओलंपियाड में भाई? कुछ भी चल रहा है भाई. Bishop C5 के बाद क्या? Do I have to go Queen C5 या do I just ignore it? Go Knight F3. Because my queen is trapped, Sahat. So once you grab the queen, then Queen E6 मेरे को square मिल रहा है queen के लिए. B3 का square भी तो है मेरे पास. Oh no. Because E6 defends G4 भाई. There is I can show you. So Bishop C5, Queen C5. Knight F3 check. Queen E6, Knight F3 check. हाँ. King G2. Queen G5 check. King G2 खेलो. I thought King H1 खेलोगे. King मेरा आइडिया था King G2 का. Because उसपे Queen G5, Queen G4 mate नहीं हो रही है. Queen G5 check and King takes F3 मर रहा है अब. क्योंकि E6 पे वो Queen G4 बचा के बैठी है. I think that's the reason. And King H1. There's also H3. That is the idea. Oh, H3 भी है. H3 है. H3. Wow. But has she seen this? With I 1 don't- minute on her clock. इसीलिए तो 1 मिनट हुआ है भाई, because she's seen it. I hope so. She has, because साहब के पास कुछ बहुत मिलता डर नहीं लग है. रहा है. Because Black के पास भी only moves है. So Black could crumble. If Black plays anything apart from C5, then she's lost. So chat, यहाँ पे game shuffle करते रहना पड़ेगा. Vantika game पे बहुत जल्दी आएंगे. As our opponent thinks, let's go back to VD's game जहाँ crazy है. C4 played by Vidit. So he finds one of the good moves here. उसने 95 नहीं खेला, जो विशिष्ट का बहुत कॉम्प्लिकेटेड. So C4 खेला, which is a very good move apparently. Yeah, C4. I mean, this also looks very, very dangerous. Bishop C4 or Rook C4 तो नहीं मर रहा. Bishop C4 is forced maybe. Knight D4 also looks interesting, but वहाँ पे Knight C5 आ जाएगा. Yeah, Knight D4. I think there is Knight C5 winning the game. And then actually. you win the bishop on D5 Yeah. instantly. So Bishop C4. But is the move again Knight E5? Could be. Otherwise, what are you playing? Oh, Bishop B3. Oh, Bishop B3 and Knight C5 could be the move. Yes, and Rook C5. Bishop Yeah. C5. Bishop C3 maybe. As we know, diagonals are very important. कौन से पे रखना है? Oh, but अभी भी मतलब अभी भी I am not convinced that this is okay for Vidit. But I would like to point out that there is a very, very big chance that his opponent missed the move C4. There is a very big chance that Vidit की जो last move थी, he hasn't seen it. So even if he has to sacrifice the exchange, उसके दिमाग में वो चीज बैठेगी नहीं ढंग से. Like I think he would be a bit unhappy about sacrificing the exchange because that's not what he originally intended. Yeah, and action is coming thick and fast. So Tinku bhai and Seth, I'll leave you guys to it. Chat, बहुत मजा है आज के तो crazy games. I'll still be following the stream, but good luck to you two and of course our Indian team. Let's hope we finish on a high and see you tomorrow, boys. And chat, thank you so much. Thanks, Rakesh bhai. Really clearly यहाँ पे इतने focused है. बाप रे भाई, energy देखो, momentum भाई, body language देखो यार साहब भाई कितना. Look at how he's like piercing the position with his eyes अभी. He knows क्या stake पे है यहाँ पे. I think for the first time in the game, he feels कि भाई suddenly momentum is in his side. Yeah. Of course. Okay, he's still thinking after C4.
बाप रे बाप, बहुत खतरनाक पोजीशन है. एंड चैट, वी आर बैक. राकेश भाई सुंदर लग रहे हैं टेक्स्ट के साथ. अभी यहाँ पे टाइम मिनट्स फॉर 940 मूव्स लिखा है उनके ऊपर. एंड बाय द वे, गुकेश वाज वाचिंग द वीडियो गेम अपेरेंटली फॉर अ व्हाइल, ऐसा कुछ था. Who was watching the video game? गुकेश बीच में. Yeah, I saw. Maybe he was feeling a bit comfortable with this. चैट, वंतिका चीख रही है. वंतिका का क्या हुआ? Vantika has not played, chat. She has not played. Her opponent is still thinking. Not Vantika, her opponent has not हाँ. played yet because she has only 1 minute on the clock. Yeah. So we are waiting for opponent to play. तब तक के लिए विधि गेम पे we are stuck. We are waiting for his opponent to play, who also has 15 minutes now. So everybody is in time pressure. बाप रे बाप, क्या क्रेजी है यार ये ओलंपियाड. डे 2 इतना इंटेंस होगा यार सहज में, मेरे को लगा नहीं था. Already. नहीं होगा यार, बिल्कुल होगा. यार डे 2 मुझे लगा था डे 2 में तो हम आराम से But that's because I told you, that's because we are this is the team that everyone wants to play. तो उसके I mean benefits भी हैं, उसके disadvantages भी हैं, we are seeing the disadvantages of it right now. निरी भाई, let's keep full screen भाई, because ये दोनों गेम में ना crucial moments आ रहे हैं, तो we want to grab that moment and we'll keep oscillating between Vidit and Vantika chat, don't worry. And फिलहाल के लिए white is in the current situation. मैं board shift कर करके अब, by the way, c5 played in the Vantika board. Can we go there quickly, because Vantika has 52 seconds as Swayam Mishra watches. She has to find bishop c5. There are other moves. Queen b3 also continues the game, but black is slightly better. The best move, which is almost impossible to find, that idea of queen e6 and h3. Yeah, she has to play bishop c5 now. I think she must have calculated. Yeah, she goes bishop c5. She takes on the board. I think black will answer with queen takes c5, and then she has to decide where her queen is going to go. And you said queen e6 was the only move, right? Yes. And she has taken on c5. Brilliant move by Vantika here. So अगर pawn से मारते हो तो that is clearly going to lead to tragedy here. तो कहीं ना कहीं queen से मारना पड़ेगा. And then queen e6 controlling this important diagonal जहां pawn को support मिलेगा, g4 square को support मिलेगा. Yep. I think that is forced. Yeah, that is forced. But yeah, at 2100, putting up this much of a fight is very impressive. Yeah, it's very impressive. Absolutely. Saj bhai, 2100s can be strong players कई बार, and फिलहाल के लिए Vantika की शक्ल में बहुत Some of stress. them, yes. Some of them, yes. And फिलहाल के लिए Vantika की शक्ल में बहुत stress है यार. I think Vantika has this habit of playing like she has this serious look on her face usually, but yeah, this position is serious actually. This look is justified. Yeah, she's locked in. I think to an extent, like Vantika can be a very intimidating player as well. Like she has a very, very like serious face, like when she's looking through a position. Yep. And फिलहाल के लिए Vantika, as her opponent thinks, who is now at the board. एक नजर हम मारेंगे. Let's stay there. Let's stay there. Because bhai, she is going to take queen c5 like any moment now. I think if she plays c5, she would have sent bishop c5. She has to go queen c5. और कोई चाल ही नहीं है भाई, और आप खेलोगे क्या? True. Or else she goes knight f3 check, or else she goes knight f3 check and just completely. Yeah, she just played. Yeah, she just played queen c5. She takes. Absolutely done. That is queen c5 on the board, and queen e6. plays queen e6. Yes. But yeah. That calculation worked out. That deep think. Let's just like inform everyone that was the only move in the position, and she found it in less than a minute on her clock. That is beyond impressive. Come on. Can we have full screen, Haribai? Let's go full screen. Let's see. Because 1 minute on the clock. Now black is playing on only moves, Sahaj. So if black has to play knight takes f3 check, I mean it's the most obvious move. खेलेंगे ही वो, but खेलनी पड़ेगी. Otherwise, white is dominating suddenly. Yeah, you're absolutely right. If you play, for example, h6, यहाँ पे random move, suddenly the bishop drops back. There is no more a threat, and white is completely winning. Rook f c1 आ रहा है. It is over. I'm sure. By the way, लोग move number पूछ रहे हैं Vantika की गेम में. Guys, it is only move 20. मतलब Vantika को 20 चालें और खेलनी है under a minute. Not easy. So let me just tell you that, of course, it is next to impossible.
But it's next to impossible for Vantika to play these moves correctly. कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी बीच में. That is going to happen. Now, whether the position materializes immediately, that would be amazing for Vantika because she is an exchange up, and I think there is not a lot of compensation left. And chat, just to point out, हमने h6 देखा. Even if you play a move like rook d6, the idea is always the same, to defend this pawn. Once this pawn is defended, so there is no more counterplay. For black, and suddenly white king बहुत safe है. You can play f4 next, you can play rook fc1, and the game is basically over. So knight f3 खेलना ही पड़ेगा. This is the only chance she can take the s3 pawn. And she takes it. She takes it. Oof, we She are takes it, reaching okay. the final few moments. King h1 should be the obvious try now. But why not king g2? What's wrong with king g2? Why is that bad? I don't know. It just looks a bit more scary, right? I mean, the king is moving up. I don't want to attack the knight, but I personally want king h1. Yeah, she just played king g2, right? She just Oh, played wow. king g2. Wow. King So now g2 what? played. There is no Knight knight d2, I h4 guess. check. Oh, knight d2, yes. Of course. मैं हमेशा knight h4 check की तरफ देख रहा था बार बार. Knight h4, I think then I can even play king h1. This looks like a better version now. Yeah, that's completely fine. I think that's completely probably even winning for you. But knight d2 is not an easy move to play here because you are actively telling your opponent कि हाँ भाई, I don't believe in my attack, but give me back my material. And also after Agreed. something like knight d2, you also have to calculate a move like rook f d1 because after rook f d1, you'll not be able to capture my rook anymore because your rook is hanging in the back rank. Yep. बहुत tactics है, and Vantika has to think quickly. Her opponent is thinking right now कि क्या करें. Knight check, knight d2, क्या करना चाहिए? Rook d6. Oof, difficult choice. And chat, not to forget यार, 2000 में एक और membership challenge करने वाले हैं हम लोग. यार mod challenge करेंगे. हमारी chat में moderators कम है. हमें एक और नया mod बनाया, तो जल्दी से stream like करो. Let's get to 2k likes जल्दी से भाई लोग. और लोग आएंगे तो यार मजा आएगा देखने में भाई. जितने लोग आएंगे, 3000 लोग देख रहे हैं, कितना मजा आता है. एंड वंतिका भी क्लॉक को देख रही है भाई, कितनी स्ट्रेस्ड है यार. शी लुक्स सो स्ट्रेस्ड. Yeah, I mean, I would be too. Yeah, I have 138 on the clock and my position is not winning. I have 19 more moves to make. That's definitely not an ideal situation to be in. सिर्फ इंक्रीमेंट पे खेल रहे हैं यार, सिर्फ इंक्रीमेंट. एंड बाय द वे, आई जस्ट चेक, knight d2 is the only move. Everything else loses. I think she plays it. I think she has to find it. If she doesn't find it, then she's gonna be, there is no attack anymore in the position like we said. So queen g5, queen g4 में mate ही नहीं हो रही है. Knight d2 looks very, very logical. एंड चैट, एक नजर मार के आते हैं जल्दी से विदित गेम पे. क्या बोलते हैं साज भाई? Yeah, let's do it. So विदित गेम में कुछ हुआ ही नहीं भाई. c4 के बाद ओपोनेंट क्या 8 मिनट है वीडी के भाई. क्या हो गया इसको? तब से सोच रहा है वो तब से सोच रहा है भाई. Oh wow. Can we have Vidit's Insane, camera? bhai. Bhai? Would love to look at his opponent right now. What is he doing? Oh, now he looks nervous. Look at him. He's sitting up in his chair. Now he looks nervous. And now VD looks more calm because he's not even sitting in the chair. I think ये पक्का हो गया कि c4 उसको दिखा नहीं. And now that he sees this, he has to like internally accept कि वो knight c5 वाला जो line है जहाँ पे हमने rook c5 मारा था, exchange sack दिया था. He has to accept and convince himself कि that's a good move. And he also has to convince himself कि that's a good move, not the only move. But the truth is, it's both. They are both. But to be honest, it looks pretty convincing. वो line जो हम बात कर रहे हैं chat, that's basically, I think, bishop c4, bishop b3, bishop b3, knight c5, forking this, attacking this. So exchange stack देना पड़ेगा. Bishop c5, and you play something like bishop 3. I think I am pretty sold on this variation from white's perspective. क्या ही bishops लग रहे हैं, क्या ही ये pawn weak, क्या ही king sides एक मार्च आ सकती है. ये knight भी कभी गेम में आएगा once you play king, knight d3, knight f4. So this looks very scary from black's perspective. The bar says minus 0.37. I would choose white here. No doubt whatsoever. So फिलहाल के लिए बहुत, Sahil bhai, I feel like whenever you're conducting an attack in chess, you are used to being in control. Okay? And when a surprise move happens, just like the one with c4, then you lose that control. I think right now this is not just something to calculate. It's also like a psychological issue. He has to get back in control and he has to make himself believe that rook c5 is a good move. I'm 100% sure he has calculated this move already.
But whether he believes it's a good move or not is a different story. Because uske man mein, C4 is something he missed, and anything that happens from here onward is going to be something that Vidit wants, not the other way around. So he still has to Yeah. believe that. That's why he's Arjun thinking abhi- so much. अर्जुन अभी विदित गेम देख रहा था भाई, ध्यान से भाई क्या चल रहा है गेम में. He had that stare at Vidit's game, looking, checking it out, and now विदित के ओपोनेंट के पास 6 मिनट से भी कम टाइम है. He was leading the entire time. एक ऐसे वंतिका के बोर्ड पे मार रहा हूँ, वहां पे किंग जुटिया कुछ हुआ नहीं है, so our opponent is still thinking chat, so that's why he's sticking to Vidit's game. जैसी वो खेलेगी, we'll switch quickly. So फिलहाल के लिए full pressure on Vidit's opponent. The game is shifting, the tide is shifting. Is it enough? We'll find out. Yup, bilkul sahi. Vantika's opponent has not played yet. By the way, Tania की game में कुछ crazy हो रहा है. She just did E5. We could check that out later, not now. We are at 49,979 subs. So jaldi subscribe karo and let's get to 50k subs quickly. Let's go. And by the way, Saj bhai, by the way, he has played this. Was there something like, I don't know, bishop h6 में से एक आधा कुछ नहीं, after bishop c4, sorry, bishop c4, I don't know, bishop b3. बस bishop b3 मर रहा है ना भाई, उसपे टाइम ही नहीं है, उस चीज का टाइम ही नहीं है. By the way, chat, let's go. And Ding has drawn. What? No way Ding Liren drew. क्या बात कर रहे हो तुम, chat? There is no way Ding Liren drew this. But Ding was better also, no? Ding has drawn against a 2600 Sahaj bhai. He has actually drawn his game. So that's great news from the Indian perspective, both in terms of Olympiad and the World Championship. And he was better, but apparently they just drew the game. So that is great news. Going back. Where is with this game? Jaldi chalte hain bhai. Bishop c4 maar diya hai. Sahaj, knight e5 or bishop b3. Which one will you see? I am not sure what we will see here, bhai. I'm absolutely not sure. I think he goes bishop b3. Knight e5 will देख के अच्छा लग रहा है, but I think bishop b3 is more believable to me. I'm just quickly checking Vantika's game because apparently her opponent just blundered. What? Oh yes, going to Vantika quickly. Let's go to her game because she played the move rook to d6. That's a big blunder. यहाँ पे आता है queen to h3. There was queen f7, queen e7, which is slightly better, but queen h3 also does the job. And now Vantika's opponent is kind of struggling, but the game is, I don't think it's over. जब 1 minute होना, it's never over. It's never over. Yep, and I was telling you, that she's not going to go for knight d2 because it's very hard to convince yourself, attack छोड़ के material ले लो. It's not an easy decision to make. So full pressure. I think, yep. Okay, Knight g5 maybe. Attacking the queen. Queen को फिर हिलना पड़ेगा. Not sure which is the best square. Actually, which is the square? Not many Knight squares g5 available. I think is the square. Knight g5 I think is the square. No, for the queen now. Queen g3 maybe? Oh, that's the only move. And then Really? what about? Yeah, it feels knight logical. f4? The queen f4 I thought. Because I've pinned your rook. I've pinned your rook. Yes. Okay, got it. Yeah. Yeah. Wow, delicate maneuvers there. So फिलहाल के लिए Vantika seems to be on. I think what I really don't like from Black's perspective here is why are you thinking after queen h3? Because you clearly surprised Vantika by playing rook d6, and now Vantika has all of this time to calculate what her opponent is thinking. And my question is, why make the decision first and then think? Just surely she saw queen h3 already. To play fast. Because I think Vantika ki time ki wajah se hi she's worse. Apart from that, she's doing fantastic. By the way, chat kariye, Arjun has won. Let's check it out if he has actually won. Quickly shifting to the Arjun game, chat full screen rakhte hain. Let's go to Arjun's game. We have not seen it in a while. This is the last position we saw. Jo rook endgame thi. Rook c6 threatening queening here. Rook c8 takes, king e3. And जल्दी से king pawn endgame आ गई यार साज भाई. ये तो winning है, हाँ ये तो winning है. I think this will end soon. Yeah, I think he's basically won. Yeah. Has his opponent resigned or something? I don't see the result yet, but maybe he has. I don't see it either. Not yet. Can we have the Arjun camera, Niri bhai?
By the way, also from the looks of it, it looks like Gukesh is now slightly better. Oh wow. Saad maybe you're worrying too much because at the end, ये players ना like gradually they will grind it down, yeah. हम फालतू में stress Exactly. ले भाई रहे थे. यही तो इन players का मतलब main skill है यार. When it comes to, I mean, these guys have played chess at the highest level. They are at the highest level. So there is when it comes to stamina and grinding the wins out, they are the best in the business. Yeah, and chat, let's have full screen. I think उनके opponent हाथ ऑफर करने वाले हैं बहुत जल्दी. Handshake. This might be the moment when we have the first victory in the open section. We are having the first one in the women section. पीछे दिख रहा है विदित की गेम भी कितनी टेंस चल रही है. सारी गेम्स एक्चुअली बहुत टेंस चल रही हैं. This was आज का दिन काफी ज्यादा it was neck to neck. Actually. Yeah, it was very neck. Of course, because the opponent is a lot stronger, The opponent is a lot stronger than last time, so it makes a lot of sense. By the way, Sahil bhai, as we look at the game, I'll just be back in just less than a minute. Look up time kar lena. Of course. Be right back. Of course. Chat time kar lo bhai. And chat update, Harikrishna is also slightly better. So just letting you know, Vidit is better, Harikrishna is better, Arjun is winning, and Gukesh is somehow equal. So looking really good for Team India in both open and the women's section. Oh, देखो विदित के हाथ देखा ओपन कैसे काम कर रहे हैं. Like he kind of kept it together, then put it down. Nervous लग रहे हैं उनके ओपन बहुत ज्यादा. सब बढ़िया लग रहा है भाई. Let's go. Levon winning. अरे बिल्कुल. वंतिका की गेम यार. वंतिका गेम चलते हैं. By the way, knight g5 played queen g3, so not something crazy there. जो expect था वही हुआ chat. साहिल भाई कहीं नहीं गए. साहिल भाई यहीं पे है भाई. साहिल भाई कहीं गए हैं तो या वंतिका की गेम लगा चुके हैं. Can we have the वंतिका camera नीरी भाई? Levon winning. I mean, of course यार. Levon is कल वो गेम बचा ली तो वो कुछ भी हो जा सकता है यार. वो गेम बचाने के बाद ऐसी कौन सी गेम है जो लेवॉन नहीं बचा सकता भाई. कल की गेम देखिए उसको पता है. And Chad Vantika still thinking अपन के पास भी 11 मिनट है अब. And you will keep switching between games chat. यहाँ पे बहुत सारी गेम्स साथ में खत्म होने वाली हैं. And साथ का पॉइंट था because why is she now her opponent thinking a lot now? इतना move by move चल रही है. She should have thought a long variation and then put Vantika under the pressure. And by the 50k subs done, thanks a lot chat भाई. आगे बढ़ते रहना है. Thanks for 50k subs. Like करते चलो stream भाई. Let's get to 2k likes because एक और membership challenge pending है भाई. जल्दी से stream like करो. And Nidhi bhai, can we also have a brief look at the Vidit game? I'm curious कि वहाँ पे क्या चल रहा है because we've not seen it for a while. And he did play knight takes c5 chat. Vidit has played knight takes c5 जो एक अच्छी मूव थी. And यहाँ पे हम देख रहे थे क्या करना चाहिए. But यहाँ आता है queen takes e5, bishop takes b3, and it looks like chat की Vidit यहाँ पे better है. After bishop takes b3, I think that has the camera is delayed a bit here, so let's see him in action as he finally takes on e5. Yeah, there it is. He takes on e5. Arjun blunder. भाई अर्जुन कैसे वो blunder कर सकता है यार? That is not possible. That is literally impossible, chat. कहाँ blunder है भाई? जीत रहा है भाई. And by the way, can we quickly go to Arjun's game? कुछ crazy तो है भाई. This is insane because this was the position chat जो आपको end game दिख रही है bottom right पे अपने. White के पास 3 pawn, black के पास 3 pawn, and black ने खेला a5. And a5 के बाद there was only one move to win. Can you find the winning move? Saj bhai, this is the position in Arjun's game chat. I know हर जगह result हो रहे हैं. a5 खेला अर्जुन के opponent ने. Only move to win is only one move there. I mean, e6. Which one? Wait, don't tell me. ये calculation जरूरी है. एक second. g4 here, g3 test, check. अच्छा b6 है ना? b6. नहीं b6 g4 is a draw Sahaj bhai. Wait, then king c6, g4, b7 takes, king b7. अच्छा नहीं g3 पे आ रहा है. ठीक है. That's a draw. King a7 पे लग जाएगा. So b6 is the Don't tell me.
अच्छा And अच्छा Arjun has अच्छा won his game. Arjun अच्छा has won his एन game. पार्सेंट था भाई, एन पार्सेंट है तो धोखा दे दिया आपने, भाई मैंने खेला था भाई, धोखा दे उसने दिया। खेला A5. अच्छा मैं जब बैठा तब A5 ऑलरेडी बोर्ड पे था, तो मैंने वो अच्छा लाइट्स नहीं देखी, इसलिए अच्छा 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 अच्छा, अच्छा. दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। And that was the only move, by the way. Everything else was a draw. So he takes the pawn, and इसके साथ ही Erigaisi Arjun has won the first game. Let's see it in action. जैसे वो pawn मारेंगे, and then we'll move to the other games. भाई चलो, एक point आ गया राज भाई. He has already played it, right? Yeah, he has played. I think camera कुछ जगह पे delayed है, 10 सेकंड कुछ जगह पे पहले आता है, तो बाद में आता है, तो it's different. Ding Right, watching right, right, Gukesh. right. By the way, Ding was looking at Gukesh's game. Wow, really? Yeah, Oh, and he's he right, just and there it is. By Erigaisi Arjun gets the first victory for the open section Team India. Amazing result there, bhai. And teams let's arrange go कर दिए. Arjun, भाई, ये क्या था भाई? let's go Arjun। नहीं, मैं वो चैट पे लिख भी रहा था अर्जुन ओपी, तो मैंने अच्छा एकदम वो फीलिंग में आ गया मैं। अच्छा. ऑल्सो बाय द वे, विदित के गेम में ना उसने कुछ क्वीन आगे कुछ तो उसने कुछ कैप्चर किया है, so I think हाँ that हाँ. that's also looking really good, so we should also quickly Yeah. move to that and see what's going on there. Yeah. So chat, now let's go to all the games. So Vidit has Arjun has won his first game, so 1-0 up. वहां पे chat वही हुआ था, Bishop C4, Knight E5, Queen E5, Bishop B3, Bishop B3, Queen takes C2, and now Vidit is better. लेकिन अब आता है Bishop takes F7 check. भाई What? साहब, because chat Rook takes, but there is Rook takes C8. Wow. And Vidit को किंग से मारना पड़ेगा. The king has to step out. And rook if king से मारते ही rook takes c8. Because rook takes, but there is queen f5. Apparently this is not the best move. He should have first played check and then taken it. Because after rook takes c8, queen f5 check. Okay, doesn't change much, to be honest. I don't know what's the difference. Bishop there, F6, okay. I think Bishop F6 सीधा नहीं, rook set के में भी rook set मारना जरूरी ना होता। Yeah, but I think it's the same. Yeah, it's the same. By the way, we missed this, but knight takes e5. थोड़ा अब 2-3 साल पहले जाओ. Maybe it's not showing for you, but knight takes e5 was a brilliancy. Oh wow. It was a brilliancy by Vidit. Yeah. Wow. I mean हमने देखा नहीं, हमने बहुत टाइम से brilliancy है ना, तो it feels good to say. Nice. अगर अभी नहीं दिखा रहा है तो भाई add करने को तो. No, I can see it on my screen. Knight e5 is a brilliancy. Nice. And this is the position, chat. This is much better. He's taken on f7, I think, camera heavy. So we are close to winning this game as well. And Tanya का draw हो चुका है. So let's quickly have Tanya's camera there. One by one, chat. बहुत सारे results आ रहे हैं. So we are going to keep switching constantly. Let's go to Tanya's board. And king तक खेले हैं Tanya और उनके opponent. And that is a draw. So 1.5 in the women's section. So I think a decent result there. Very, very decent result. Yeah, very, very consistent also, I would say. I mean, draw in that position is definitely not unheard of. I mean, there wasn't much to do in this position, White se agar koi aise, if they play solid, as we know, it's very, very hard to kind of convert. But, I think the other two games between Harika and Vantika, we are all, I think, oh, by the way. Yeah, I just saw it. By Harika the way. Harika is worse. Let's jump to there. Let's see what's happening there. Harika is worse somehow. I don't know how that happened. So अच्छा, एक चाल के लिए वर्स भाई, एक चाल के लिए वर्स है वो, एक मिस्टेक करी है उसने कोई, and I think it's just for one move. Oh, by the way, look at this. Harika had a repetition. By the way, it should be mentioned. Knight h4, knight f3 was a repetition, style, which she refused and played queen f3 to play for a win. And then after that, her opponent only has one move here, which is bishop to d6. Yeah. Crazy move. I think a very crazy move. Yeah, very crazy move to find. Because I am thinking, why not just c6, and it feels like better for white. It does feel better for white. But यार ये बेनोनी की जो positions होती है ना, ये बड़ी weird सी होती हैं. Like उसमें कुछ समझ नहीं आता इन position में, मैं बता रहा हूँ आपको. I love playing it simply because until the last move you are never sure कि what's going on. So it's like crazy. Like Benoni and Chigorin, these types of, ये बहुत rare हुआ है मतलब साहिल भाई कि Benoni और Chigorin दोनों साथ में हुई हैं. I know this Benoni is like from the white side. Usually chat Benoni black से खेली जाती है और बहुत rare opening होती है. और ये दोनों openings जो है ना, they don't obey the laws of physics. Like they don't obey the laws of chess. भाई laws of physics से याद आया भाई कि laws of physics गेम में crazy चल रहे हैं, because Vantika is also winning now. So knight e4, queen f4, knight d2 fork लगाया, but देर आए दुरुस्त आए. अब ये same factor नहीं है because the queen has improved. Rook d1 was a blunder by Vantika.
She had to play What? queen f8 check, rook fd1 blunder, and queen d5 back blunder by her opponent. 4 seconds है उसके पास. Can you go to Vantika's camera now? Quickly, full screen. Oh, that is bad. That is bad. That is bad. By the way, Harika के opponent ने bishop d6 नहीं खेला, so she's back in the game. She Amazing. is slightly better. So, but we'll get back to it. Oh, Vantika has to play f3. She has to play f3. Only move, by the way. Only move is f3. F3 was played, and I think Yes, her opponent thank just God. took knight g takes f3 in that position. And Sahaj, after knight g takes, she has to find e4. This is a tricky move. She has to find e4. She's touching the pawn, I think. No, she's touching the queen. She's touching the queen. No, it's a pawn. It's a pawn. It's a pawn, Yes. bhai. Dikh raha hai, bhai. Yes. You're right. Geometry. You're right. And e4 played. What a game. What a game, chat. Nerve-wracking game. She Chat, played by the that way, move with 12 seconds on the clock. चैट यहाँ पे बहुत सारे लोग मेडल के लिए फाइट कर रहे हैं. मेडल के साथ साथ एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आने वाली है, और एक वर्ल्ड चैंपियन विशी आनंद हमारे रहे हैं, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन. उनसे खेलने का आपका मौका है. एक पिन लिंक है भाई, उस पर क्लिक करके जाओ एंड यू विल हैव अ चांस टू प्ले विशी आनंद. एक पूरा वर्ल्ड विशी वर्सेस द वर्ल्ड का मैच होने वाला है. फ्रॉम 30 सितंबर यू कैन जॉइन दैट मैच एंड देन यू विल गेट ब्रागिंग राइट्स कि भाई मैंने वर्ल्ड चैंपियन से खेला है भाई. तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा. एंड फिलहाल के लिए e4 के बाद ब्लैक हैज टू मेक अ चॉइस. कहां जाएगी क्वीन? And ये rook pinned है. That is the problem for black here, and Vantika is close to winning this. Yep, I think this already seals the deal. E4 के बाद I'm very confident that her opponent is going to lose something. I think एक piece मरने वाला है. I think it is almost inevitable, if I'm not mistaken. +3 का advantage होता ही है कि you are basically up a piece. And by the way, वो कह रहे हैं VD ब्लंडर क्या हो गया. लेट्स गो टू VD's कैमरा. भाई कितने सारे गेम्स हो रहे हैं, एंड हमने देखा था यहाँ पे कि भाई रुक C8 हमने VD की लास्ट मूव देखी थी. कैन वी हैव द VD कैमरा? नहीं भाई. रुक टेक्स C8, रुक टेक्स C8, क्वीन F5 check, bishop F6, queen takes C8, and in this position he had to find bishop D4. That was the best move, winning the game. But he played rook E7, and knight D4 के बाद white is back in the game. That is a very very unfortunate, but I wouldn't really qualify or classify this as a blunder, because I don't think there is that big of a difference in the what Stockfish is saying, and also it doesn't feel like Vidit is worse here. Yes, bishop d4 was better, but I think he's still slightly better, right? He can still play queen f4 and still it's slightly better for him. Yes, he can still pull better. This. And chat 3500 लोग देख रहे हैं भाई. That is literally Stockfish's rating. जल्दी स्ट्रीम लाइक करो. Let's get 2k likes. एक और मेंबरशिप आपका इंतजार कर रही है. And फिलहाल के लिए क्वीन को मूव करना बहुत जरूरी अटैक है. So queen f4 is a great move because it keeps an eye on the king. कल को bishop p5 के साथ you can also set in checkmate on h2. So let's go VD quickly. Time नहीं है. Chad Gukesh game में देखी, he's better, but it's like a middle game right now. तो we'll go to that game later. अभी वो लंबी चलेगी game. What did he play? Okay, so कैमरा थोड़ा पीछे है ना. Yeah, I mean, Vidit just played rook e7 in this position, and now knight e4 is going to be responded, and then उसके बाद it's Vidit's turn. Vantika, by the way, is completely winning. So Vantika के game में after e4, queen d4 was played. आप board पे देख सकते हो, and now rook bc1. So queen f8 is a deadly threat. Not queen f8 is there's rook d8 as well. Bishop a6, yeah. Bishop a6 simple. Bishop a6 rook c8 mate. Rook c8 is mate. Yeah. So tricky moves, bhai. Tania का draw चुका है. Tania has drawn, chat. Is this round supposed to be so hard? To be honest, maybe not this hard, but it can be because it's not easy for any team. वहां पे डिंग का ड्रॉ हो गया भाई बोर्ड 1 पे चाइना के लिए. Just saying, it's not easy for anyone. बिल्कुल सही कहा आपने भाई. बिल्कुल सही कहा. Also साहिल भाई, Chess24 इंडिया के 50k सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. That. Yeah, we just had the celebration भाई. केक मिस कर दिया आपने साज भाई. यार आपने मेरे जाने का ही क्यों वेट करते हो आप इन चीजों में? I can see it. बस भाई आपके जाते ही 50k हो गए भाई. Wow. So wow क्या था भाई? नहीं, that was disappointed. Wow. अच्छा. By the way, chat, Harika is still okay, equalish. Vantika is winning. अभी तक हमारा डेट पॉइंट आया है. We need Vantika to win ताकि 2.5 पॉइंट पूरे आ जाए. And then Harika, even if something were to go wrong, we would still win the match. And going to the VD game, Queen F4 played by Vidit Gujrathi. Can we have the VD camera again? Nirvai, I'll keep switching. I know it's a bit fast, but अभी करना पड़ेगा थोड़ा manage. And अभी we'll stick to Vantika and VD in दोनों games. And look at VD, man.
2 minutes for his opponent, 4 minutes for Vidit. Vidit has just played Queen F4, by the way. I know camera पे अभी तक दिखा नहीं है हमें, but we can see it on the bottom right corner. He just played Queen F4, which is the best move in the position. Bishop E5 का idea है. You can put some pressure on the H2 square. King White का एकदम exposed है इस position में. White is not technically lost, पर लेकिन Vidit push कर सकता है इस position में. Can you hear me? हाँ, I can hear you भाई. पता नहीं मेरा था शायद इंटरनेट, पता नहीं. I don't know. अच्छा. Anyways, so by the way, chat के लोग कह रहे हैं हरी गेम की नहीं, हरी गेम काफी स्मूथ गेम रही है. That's why we've gone kind of crazy with some games like the Vidit game, the Vantika game. Like it's been insane. So हमारा focus वहां रहा है. Even Gukesh's game, I think we need to look at, but all these games are a bit calmer. So I think यहाँ पे कुछ ना कुछ तहलका मच सकता है. We might see a blunder in any move. That's why these games are important. Yeah, बिल्कुल. Absolutely right. Oh, by the way, he's just playing Queen F4, which we already know. Queen C6 by White, by the way. Yeah, I don't think that's a bad move either. I think he's playing the best move so far. Yeah, pressure on here. There could be a check coming in. Black, B6 का pawn मरते, but still हमारा A5 का pawn अभी भी जिंदा. So if Black goes Bishop B2, or he goes Bishop E5, okay? Threatening mate in Okay. 1. Rook F2 पे there is Bishop D4. Or Bishop D4 पे there is Queen D5 check. So maybe you can play Rook F2 here. Wow. Blunder Gukesh game. किसने blunder किया भाई? Oh, Gukesh is completely winning. Can we quickly switch to Gukesh's camera for a second? I think he blundered the game. Oh, it was a draw. And Gukesh के opponent ने खेला Queen to D2. And now G3 is winning for Gukesh. G3, Wow. you can't take with the H pawn, it's pinned, and F takes pin, Rook takes G3, E3 is weak, there's pressure here, and let's say you pass the move, you play a pawn to A4, then Bishop takes G3 aa raha hai, even Rook takes G2, Rook takes G2, Bishop E4 aa raha hai, and Gukesh is completely winning after the pawn to G3. Let's go Gukesh, will he find G3 chat, yes or no? Yes or no, will he find G3? 100,000% he plays G3. Come on, chat. Yes or no? 2 minutes okay, by the way, chat. Guki resign कौन बोल रहा है? इस बंदे को बैन करो. He plays it. He finds G3. He finds the move G3, and Gukesh is completely winning. So this is great news for Team India. And Gukesh is form ding वहां पे draw कर रहे हैं 2600 से. Gukesh यहाँ हरा रहे हैं भाई. तो बहुत बढ़िया है भाई. That is great news and as expected, I would say. And फिलहाल के लिए let's go back. Immediately मार दिया भाई. No time wasted whatsoever. I think because there's not enough time to waste here. Yeah, both sides have very little time. By the way, Geku keh raha hai Vantika lost. We need Vantika to win. There's no way she can lose. No, she's winning. She's completely winning Vantika, by the way. Okay, going back to the open section. Rook to G3. Gukesh winning chat. Time to go to VD's game. I think Gukesh has it under control. Is game में भी time लगेगा. So let's go to Gukesh's game. Vidit's game. जहाँ पे थोड़ा pressure आ रहा है. Okay, Bishop E5 already played. Okay, we already know this. Yeah, he plays something. Okay, Rook F2, Rook C7 हुआ. Rook C7 and now, yeah, Vidit is slowly grinding it out, Sahaj. Yeah, I think he will win this because Rook C1 check Queen H2 is a mate. Yeah. And chat एक challenge करने वाला हूं मैं. अभी हो रहे हैं 1800 likes. अगर हमारे पास 3500 लोग watching है, आपके सामने एक अंगूठे का बटन होगा. It's called the like button. अगर हमारे 2500 likes अगले 7 मिनट में हो गए, that is still I think 10:30 होगा ना टाइम. अगर हमारे 2500 लाइक अगले 7 मिनट हो गए, एक बंदे को मिलेगी भाई सीधा डबल द मेंबरशिप, 2 months मेंबरशिप. लेट्स गो भाई. अगर 2000 हुए तो एक तो मिलनी है. अगर 2500 हो गए तो 2 महीने की मेंबरशिप मिलेगी. लेट्स गो चैट, लेट्स हिट द लाइक बटन, लेट्स इनवाइट मोर पीपल टू द स्ट्रीम. लेट्स गो भाई. एंड चेक दी है किंग को मूव करना है. आई डोंट नो व्हिच इज द बेस्ट स्क्वायर. किंग F8, किंग E7. नो, F8 पे दिस चेक व्हिच इज अनकंफर्टेबल. King E7, yeah, no more checks possible. Come on. And now I think White is just out of moves, right? There are no moves possible. Rook C1 check सीधी mate हो रही है. Yeah. In fact, the best move is King F1 भाई. ये तो नहीं होने वाला मुझे लग रहा है. Tough to say. One beautiful Vantika game, by the way. Vantika is still completely winning chat. So going back to video game. I think video खत्म होने वाली है chat. I think VD's game will finish very quickly.
What do you think, Saj? पहली गेम कौन सी खत्म होगी? I think गुकेश, वीडी, वंतिका? I think VD finish very very fast क्योंकि यहाँ पे White बहुत जल्दी मिस्टेक करेगा, कुछ हाँ. ब्लंडर करेगा. I think because Rook C1 Queen H2 is an apparent threat and I don't see a way to avoid it in any way. Yeah. And also he has a minute left on his clock, so I think 31 seconds. Why? I was looking at the camera, but look at the actual board. 26 seconds left on the clock. A mistake is incoming. And chat, not to forget, 1-0 score है अभी open section में, and it is 1.5 in the women's section. फिलहाल के लिए सब बढ़िया लग रहा है इंडिया के लिए. Rook D2 played, making space for the king, but I still think this should not be enough, Sahaj. How do we, is it Queen E3? Is it going to be Rook C1? इतने सारे checks हैं, इतने tempting checks हैं. They both look pretty good to me, but Queen E3 feels more logical. Maybe Queen King E3 just G2. feels more logical. Maybe King G2, then Rook C1, maybe. Oh, he plays Rook C1, okay. Okay, Rook C1, King here. That is also fine. King F2 is forced. By the way, King G2, Queen H2 is mate. So King F2. King F is forced, yeah. Queen H2 check फिर भी आ सकती है, and you can lose the exchange on D2. Vantika won. By the way, Vantika has won. Can we have the camera for a second? Vantika has won the game. She secures another victory for the women's section. 2.5 points हो चुके हैं. And with this, the women's section. Oh, ये PC मर गया भाई. Nice. And इसके साथ ही the women team has won 2.5 half. And Harika game में जो भी हो, we are winning this round. And great news, Harika is also much better now. So great game under time pressure. वो पूरा Bishop B4, Bishop C5 निकालना. Amazing game by Vantika, and this should give her a boost of confidence which she really needed, Sahaj bhai. बिल्कुल यार. I mean, also, this with this win, she also seals the victory for the women's team. And there you go. That's her coach, if I'm not mistaken, right? Yeah. So Ayams is her coach. I mean, yeah, it's so and nice. Chat, by the way, where is Abhijit sir? He might be making strategies there. And chat, I know Vantika for a long while as well. Great success story. Amazing. Vantika को भी spam कर दो भाई जल्दी से chat में. Totally deserved their amazing game. And Vantika के साथ ही we are quickly going to go back to the VD game because वहाँ पे ये क्या हो गया भाई? King दौड़ रहा है. Rook C1 check, Bishop. King F2, Queen H2 check, King E3 and Bishop F check. रुक गए हो भाई. बिल्कुल. Also, a slight update in the women's section again. Harika is completely winning now. That's brilliant news. I think 3.5 half is very likely. I think I would say a 90% chance. Yeah, I would say absolute 3.5 half बहुत बढ़िया लग रहा है. And open में अगर देखा जाए Sahaj, Arjun has won, Gukesh is winning, Vidit is winning, and Harikrishna, if I check, is equal. So वहाँ पे भी 3.5 तो होना ही है अपना मुझे लग रहा है. Yeah, I mean, but in तीन के साथ, I mean, team victory तो is already sealed. हाँ. Yes. Then it's about the last thing. I think Harika game थोड़ा सा लंबा चल सकता है because I think there is a 40 move rule वहाँ पे. Yep. How is Navidarov doing? I will update you without changing the board chat quickly. And Rook maar diya. Do you think he will resign? Yeah, I think he should because knight d2 queen d6 is incoming. So he should. I think we might have the second result soon. Yeah, knight d2 queen d6 के बाद you've gone into the end game and your material down, which is just a resignation. Yeah, Navidarov is not playing today, chat. So after his draw yesterday, he kind of took a rest. That makes sense. Is India winning? Yes, Prajwal ji. India is doing really well. And chat, आपके पास 3 मिनट है 500 लाइक करने के लिए. नहीं होगा यार. You know what? I'll make it even more interesting. अगर हमारे 3 मिनट में 2500 लाइक पहुंच गए, तो भाई मैं 2 नहीं 3 महीने की मेंबरशिप दे दूंगा भाई. Let's see chat अब कर सकते हो कि नहीं. Let's go. Wow. भाई wow, लगता है मेरी सैलरी इस महीने आनी नहीं है भाई. मेंबरशिप पे निकल जाएगी. भाई क्वीन D4 खेल दिया है. क्वीन G7. He does not even take the bishop. Yeah, that's that last desperate try, कि एंड गेम में ना घुसे. बट इफ आई जस्ट गो बिशप h6 भाई, आपकी क्वीन सेंटर में है बट देयर इज नो चेक. लुक एट दिस, सच अ फनी पोजीशन. देयर इज नो चेक. That is awesome. And chat, we are about to see resignation soon in this game. Very close. तो अबे चैट सच में तो नहीं कर देगी. चैट मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था भाई. 25 लाख मत करना भाई. भाई मेरी सैलरी से कटेगा भाई. अरे बाप रे, तो कर रहे 21 हो गए भाई 2 मिनट में. नहीं 2 मिनट 400 हो ही नहीं सकते यार. नहीं हो सकते यार, मुश्किल है, बच जाऊंगा मैं. By the way, Bishop 6 played. They have played. Vidit has played the move and now he's completely winning. There is no check. ये कवर्ड है क्वीन से, ये कवर्ड है क्वीन से, ये कवर्ड है पॉन से, and it is just over. Time to resign. B4, G7 सब कुछ ही कवर्ड है. I think he's going to resign very soon. Yep.
Light video, 1 light year behind. No, I think it's like it is like 30 seconds behind. And Vidit Gujrathi has won the game. We can see the result on the board. We will wait until we have it on the video as well. I think एक ही move missing है, Bishop h6. जैसे ही वो खेलेंगे, opponent design करेंगे. Another victory for Vidit Gujrathi. VDOP in the chat. कितनी बार बोला है? आज फिर से बोलेंगे. Let's go. आज भाई crazy. बिल्कुल यार, बिल्कुल. What a win यार. I mean, man, what a game by him as well. I think it was very complicated, but I don't think for a single moment he had a worse position. I mean, that's an insane that's an insane feat to me. Well भाई done to वीडियो को Vidit. छोड़ो, 2200 लाइक कैसे हो गए भाई? 300 लाइक दूर है भाई, तो बहुत क्लोज आ गया भाई. एक मिनट में 300 तो नहीं होते यार. नो चांस चैट कैन गेट 300 लाइक्स इन 1 मिनट यार. मेरी सैलरी तो पूरी इंटैक्ट ही है यार. देयर इज नो चांस. I think आपकी सैलरी को तोड़ने के लिए लोग लाइक करेंगे अब. भाई नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यार. देयर इज नो चांस 300 लाइक लोग लाइक करेंगे एक मिनट में. हो गए, बच गए 10:30 यार. एक मिनट में 60 सेकंड में थोड़ी होगा ऐसा. पॉसिबल ही नहीं है. 300 लाइक लोग नहीं होता यार, मुश्किल है. And इसके साथ ही chat, we are 2-0 up in the open section. Amazing भाई, amazing victory. Let's see the final moment as Vidit wins भाई. Let's see. जैसे Yeah, I think he would resign. yeah, opponent ने सर पकड़ा हुआ है. He knows it's over. भाई 2300 हो गए. They have like 20 seconds remaining. 200 लाइक तो नहीं होते. बच गया, बाल बच गया भाई. बाल बच गया भाई, मुझे लग रहा है. मैं 150 लाइक. अरे नहीं भाई, नर्वस हो गया भाई. अरे भाई खत्म. 7 अरे 10:31 क्यों नहीं हो रहे भाई? हो जा जल्दी. 10:31 भाई. 100 लाइक हो गए भाई. 10:31 हो गए. बच गए भाई. बाल बच गए भाई. 2.4 थे भाई. 2.4 में यार कम से कम मेंबरशिप तो जरूर बनती है. You know what, chat? मेंबरशिप तो बनती है. आई थिंक 3 महीने नहीं, बट 2 महीने की मेंबरशिप तो बनती है भाई. आई थिंक दिस आई कैन गिव यू. 2400 बहुत क्लोज था. एंड जैसे मिल्खा सिंह को पैर में पत्थर आने के बाद उनको मौका दिया गया था नेशनल्स खेलने का, हम भी आपको 2 महीने की मेंबरशिप देंगे. तो चैट, 2 month मेंबरशिप इनकमिंग वेरी वेरी सून. जब रेडी हो गए तो बता देना भाई. एंड ये है भाई, विदित गेम जीत चुके हैं एंड द गेम इज ओवर. साज भाई, आई थिंक इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट गेम. किस गेम पे जाना चाहेंगे आप? I would like to look at Gukesh भाई. Gukesh. Let's go. Let's Also, go to हरी की camera. गेम में भी कुछ क्रेजी हो रहा है. हरी की गेम में भी कुछ क्रेजी हो रहा है. Oh भाई, look at ये this. क्या है भाई? Look at this position भाई. He destroyed him. Can we have full screen again भाई? I think full screen हटने नहीं वाला. Can we have full screen as Gukesh is about to win another game? Chat. ओके, सो गुकेश की गेम खत्म होते ही हम मेंबरशिप क्वेश्चन पूछेंगे. जस्ट टू पॉइंट आउट, बिशप f4, बिशप f3 और रुक टेक्स f3 उसने मार दिया है. क्वीन f3 पे देयर इज रुक g1 एंड द क्वीन इज लॉस्ट. यू विल सी हैंडशेक एंड इट इज ओवर. गुकेश हैज आल्सो वन हिज गेम बाय 3-0 अप फॉर टीम इंडिया. क्या डोमिनेट कर रही है इंडियन टीम भाई. क्रेजी यार. गुकेश अभी स्पैम कर दो एक बार चैट में भाई, जल्दी से स्पैम कर दो. लेट्स गो भाई चैट. क्रेजी भाई. Crazy, boy, absolutely crazy. Like it is absolutely phenomenal how he was able to convert that position into a win, yaar. What a player. What a player. आज मैंने इसी सीखी भाई कि मतलब मेंबरशिप चैलेंज तब होता है मेरी सैलरी से कट रहा हूँ. वो एक्स्ट्रा वो टॉर्चर करने का एलिमेंट ना आए तो चैट में मजा नहीं आता. एंड चैट, बिल्कुल. मेंबरशिप सवाल मैं बहुत जल्दी पूछने वाला हूँ. स्टे रेडी. यू विल इट विल आई विल पोस्ट इट इन द नेक्स्ट मिनट. जैसे युकेश का वो अपोनेंट हैंडशेक करेगा. Yeah, I think as soon as he takes rook f3 he will resign, yeah, probably. Yep, absolutely. Let's go. Time to resign. Let's go. Yeah, he knows it. अरे of course भाई, he knows it भाई. खत्म करो, चलो bye bye, finish. And 3 I think होने वाले हैं. he will play the move with 131 on his clock probably. And then his opponent resigns, yeah? Yeah. चलो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? रेडी हो चैट? एक बार रेडी लिख दो भाई. No, just wait. It's like 5 seconds. 5 seconds, like 4, 3, 2, 1. There we go. Yeah.
Man, क्या धुलाई करी गुकेश ने यार. And it is over, bhai. There is the winning moment. Gukesh wins his first game at the 2024 Chess Olympiad in convincing fashion. एक ऐसी गेम में जहां पे हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो काउंटर अटैक करेंगे. White looked clearly better in control. उन्होंने pawn sacrifice किया A5 का and धीरे धीरे king side पर अटैक किया. And कहा हमसे साज भाई कि White अटैक करेगा. Suddenly Black ने भाई धो डाला यहाँ पे. Exactly, भाई G file के through, White ने अटैक करना था G file पे, and it's like the situation just completely reversed. I mean, what? Wow, Yeah, that was insane. crazy. Why? Absolutely crazy. मजा आ गया, बस मजा आ गया देख के. And this was a lot of fun, yeah, a lot of fun. ठीक है. Chat is ready for membership. So what we'll do is we'll have a look first of all. I think women section में एक ही गेम हरिका की बची है and it's roughly even. So we'll go to the game of Harikrishna now and then chat में सवाल पूछता हूँ. So Harikrishna seems to be winning. So Sahaj, we are all set for another 4-0. This feels amazing. Yeah, that is a fantastic feeling. Yeah, हम लोग फालतू में बोल रहे थे यार. 4-0 ही होगा. 3.5 half मतलब मैंने और राकेश भाई ने कहा था, but I think 4-0 ही होगा, देख के लग रहा है. Yeah. So chat, मेरा सवाल आपके सामने आने वाला है. तैयार हो? सवाल ये है, पहले मुझे आंसर. ओके, एक और कौन था यार? मेरे को याद कर रहा हूं मैं. आंसर तो याद कर लिख के बता दो ना मेरे को. लिख के. ओके, तो मैं एक मुझे लिख के बता था. एक बंदा था ये, एक बंदा था ये, और एक बंदा था ये. हाँ. So chat, this question is, गोकू क्या है भाई? कल डे 1 में कौन कौन से ऐसे टॉप प्लेयर्स थे जो क्लियरली लॉस्ट या मच वर्स थे? 2600 प्लस. मेरे को 4 नाम मैंने अपने सामने लिखे हैं, आपको 3 नाम बताने हैं. जो पहला बंदा सही 3 नाम बताएगा, he is the one who gets a 2-month membership. So let's go chat. कल का पता जिसको होगा वही ये बंदा जीतेगा. एंड विदित, गुकेश, अर्जुन, प्रग नहीं है भाई. दे आर नॉट लॉस्ट. डिंग, कार्लसन कल नहीं खेल रहे थे भाई. कौन मतलब 4 और नाम बताने हैं भाई. 4 और नाम बताने. 3 नाम बता. 3 चलेंगे. 3 भी चलेंगे. 3 भी चलेंगे. 3 नाम एक ही लाइन में भाई. खाली लेवॉन नहीं था. There were a bunch of names. Okay, I see something. Levon, Mamidyarov, Nodirbek. सिद्धांत लहोटी जी, you are absolutely correct. ये तीनों लोग स्ट्रगल कर रहे थे. अंत में लेवॉन जीत गया, ममिद्यारोव ड्रॉ हुआ एंड नोदिरबेक का ड्रॉ हुआ. In fact, there was a 4th name that was Aryan Tari, who also barely survived. सिद्धांत लहोटी जी, प्लीज अपना चेसकॉम आईडी चैट में लिख दो जल्दी से, ताकि हमको मेंबरशिप दे पाए भाई. भाई क्या फास्ट है सिद्धांत भाई यार, बहुत सुपर फास्ट. फैंटास्टिक भाई, फैंटास्टिक. And with that, by the way, हम लोग भी membership पे बैठे हैं, but लेकिन there was a moment, एक move पहले, when Hari could have been completely winning. Did you see that? Queen of 1 से पहले, there was H4. Okay, yeah. Trying to break the king side. Dead winning, yeah. Yeah, makes a lot of sense, bhai. Makes a lot of sense. But लेकिन ठीक है, Queen of 1 also looks like a very nice try. And 4-0 की तरफ बढ़ते हुए भाई, 4-0 की तरफ. This is insane. Absolutely insane. सिद्धांत भाई का वो ले लिया आपने? भाई जल्दी से आईडी लिख दो, इससे पहले कोई अपना यूजर नेम चेंज कर ले, फिर आपकी मेंबरशिप जाएगी भाई. मैं बता रहा हूँ. हाँ, मिल गया. थैंक गॉड. सिद्धांत भाई, आपकी मेंबरशिप ऐड कर रहा हूँ. प्लीज चेक करके चैट को बताना मिली कि नहीं. ठीक है? चैट बाद में बोलती है आप लेट ऐड करते हो, नहीं करते हो. अभी क्या अभी ऐड कर रहा हूँ भाई मैं. चेक करो भाई. सिद्धांत भाई को मिल चुकी है 3 महीने की मेंबरशिप भाई. लेट्स गो भाई फॉर द क्रेजी चैलेंज चैट. पूरे 3 महीने की मैंने दे दी. सो यू हैव वन द मेंबरशिप भाई. वेल डन भाई. देख लो भाई, जाके चेक कर लो. मेंबरशिप एडेड. And that is it, bhai. So that was the challenge, and now we have to see Harikrishna win the game. Let's go, bhai. So Saj bhai, any possibility of the opponent, somehow holding this game? I don't think so. मुझे लगता है because there are too many weaknesses on the light squares. कुछ बचाने का तरीका ही नहीं होगा. And I think White can just push H4 at any point, and it would just be over. By the way, उनके cams पे हम बैठे हैं क्या? हम बैठे हैं. Okay. I just want to see कि like what is his cams पे बैठे मतलब? Yeah, I mean, sorry, can we actually see Harika's game as well? Because उनके game पे ना कुछ time पहले she was completely winning, and then But eventually now it's completely equal.
Wow, we are in any game now. Yeah, So ठीक है, so that means yeah. 3-1, yeah? 3-1 is the likely score. 3-1 यहाँ पे होगा, वहां पे 4-0 होगा. मेंस में 4-0 होगा, वुमेन्स में 3-1 होगा आई थिंक. अरे भाई, मेंबरशिप जिसको नहीं मिली वो तो स्कैम ही बोलेगा ना भाई, जिसको मिल गई उसको तो मिल गई. भाई ये क्या लॉजिक है भाई. एंड चलो ठीक है चैट, एक मॉड बनाते हैं फॉर यू चैट, ठीक है. चलो एक बंदे को मॉड बनाएंगे चैट, वो चैलेंज मैं करूंगा अभी 2 मिनट में, ठीक है. लेट्स गो. लेकिन फिलहाल के लिए द गेम सीम्स इवन यहाँ पे, जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि एक एक पास पॉन है, तो देखना पड़ेगा इफ हरिका कैन समहाउ कन्वर्ट दिस. सच एनी चांस ऑफ हरिका विनिंग दिस? I think so. I think there are some chances, but theoretically it's not winning for her. But hard to say. Hard to say. ठीक है. So Okay, फिलहाल के लिए चैट, this is the yeah, we position can just for. stay here. Yeah. Oh man, difficult. Let's go to Harikrishna or Harika. Which one do you want to check, Saj? I think दोनों में they are thinking. I think I would like to see Hari's position में, क्योंकि वहाँ पे opponent सोच रहा है. I'm not sure what he's gonna play here because I think this position is completely lost for him. हाँ 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 हाँ. क्यों positionally lost है ना. Light score में just queen f3, queen h5, queen e2, queen h5 can be quite Yup. dangerous. Also like h4 भी आएगा कुछ time में, bishop g5 पे कोई sack आ सकता है. ये बिशप क्या पीस है भाई, ये उफ. Queen a2 played, okay. Pawn per attack. Let's go queen e2. I was thinking rook h1 h4 and this is destroy. Let's see. Yeah, कैसे I क्या. think there is no defense there वहाँ पे. कुछ defense दिख ही नहीं रहा मुझे. But yeah, ये game थोड़ा लंबा चलेगा I think. I would say another half an hour. Maybe even an hour. Score of US, that's a good question by the way. United States का एक टाइम पे लग रहा था कि वो लोग पॉइंट नहीं मारेंगे. Caruana has won and Levon has won. By the way, Ray Robson and Dominguez are in a very very interesting position. Pawn endgame में है Dominguez और Rook endgame में है Ray Robson, और Ray Robson का तो dead draw है. You want to check out? Yeah, we can. But I Let's think go. दोनों का dead draw है. So first of all, Ray Robson की ये position है bottom right पे chat. You can see 3 pawns each. This one should be a comfortable draw for a strong player like Kevin, who's a grandmaster, should be comfortable to hold. I would say so. Rook b6, rook c6, just wait करते रहो. But I mean थोड़े chances हैं black के अभी भी. दूसरा जो game है that is completely draw I think. वहाँ पे कुछ नहीं है black के पास. Wow. The सिद्धार्थ जगदीश का जो game है. भाई कई बार pawn also endgame में grandmaster crazy हो जाती है भाई कई बार. नहीं, I don't think there is enough pieces in this position to have any effect. Yeah. So US की टीम 3-1 होगा. They dropped half a point yesterday. 1 point और आज छोड़ देंगे. Indian team तो clearly it seems like the stronger team, even though it didn't feel like that. But हमने आराम से convert कर लिया last में यार. हमारा स्कोर क्या है? So open section में the score is 3-0 with the final game going on. That is Hari's game against Helgi and something. And women section में हमारा score है 2.5 with the last game going on between Harika and her opponent. So I think दोनों game हम already जीत चुके हैं. Now it's all about कि कितने score से हम जीत सकते हैं. That's it. Yeah, I think Harika game, it's weird because I said Harika game बोल रहा हूँ, तो you think it's both. But I mean Harikrishna का game feels a lot more convincing. जो Harika खेल रही है, I think that's theoretically a draw, but I think she can still play. Yeah. I think she can still try to convert it. But वो थोड़ा ज़्यादा difficult लग रहा है देखिए. So women's का score 3-1 is more, I think, logical. For men, I think it will be 4-0. Come on, Hari, let's go. We need the victory there. I think Black के पास 23 minutes है, so he has some time to ponder over here what to do. Narendra Modi in chat, awesome G, welcome. Tanya drew a game, yes. And Vantika, by the way, had a great game there in time pressure. Caruana accuracy 99.33. Is it true? It might as well be. Caruana is one of the strongest players of all time, to be honest. I am not surprised by that. Did Fabi take? अरे ये क्या भाई? Come on, let's go. Queen e2 के बाद अभी भी सोचते हुए, what shall he do? Opponent deep thought में हरी ने खेल दिया है queen to e2. That defends the pawn on d2. And also उसके साथ h4 का idea, queen h5 का idea, all of that is just starting. Yeah. I think this is very, very lost. Yep.
What is the pairing for tomorrow? भाई पेयरिंग आएगी राउंड के बाद. सो कैसे काम करती है पेयरिंग? जैसे ये सबकी गेम्स खत्म होंगी पूरे ओलंपियाड में, उसके बाद दे विल पेयर टीम्स टुगेदर. तो मान लो इंडिया वर्सेस नॉर्वे है, मान लो नॉर्वे है फॉर द सेक ऑफ फन. कल इंडिया का मैच नॉर्वे से है, बट एग्जैक्ट मैन टू मैन मैच किसका होगा ये पता नहीं होता. बेस्ड ऑन द टीम, बोथ टीम्स विल फील्ड अ सर्टेन बोर्ड ऑर्डर. मान लो किसको रेस्ट करना है, किसको खिलाना है, एंड लास्ट में रिवील होगा, अरे बाप रे भाई, मेरा कार्लसन से है, मेरा इससे है, मेरा उससे है. सो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स, एंड दैट्स व्हाई पेयरिंग आज शाम को आएगी टीम की, और इंडिविजुअल प्लेयर्स की आएगी कल सुबह, जस्ट 3-4 hours बिफोर द राउंड. Yep, that's true. I think the pairings usually come at 10:05 or something like that AM. तो Yep. I think around 3 बजे Like मैच शुरू होता है यहाँ पे, तो 5 घंटे पहले आता है. तो इंडिया के सबसे भाई मतलब 1-2 बजे आती है इनको पेयरिंग्स. एंड बाय द हाँ, वे, but लेकिन ह्यूज न्यूज, मैच से या Arjun has reached 2780.2. wow. That is for the first time he touches the rating of 2780. That is insane news. In fact, he's the only player, no, he's literally the last player who's not a Taiso. So it's like 2832 Magnus, 2802 Hikaru, 2800 Caruana, and then 2780 is Arjun. So that is insane. Wow, that is very, very big. That is insane actually to think about. Yesterday games were much longer, very close and early, but today's game were, much more nerve-wracking. यार, this was very difficult. ऐसे कुछ भी हो रहा था, एक टाइम पे तो डर लगा था कि यार 2.5 पॉइंट भी आएंगे कि नहीं आएंगे. स्ट्रेस हो गया था बहुत. एंड साज, कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि आज हमारा फर्स्ट बोर्ड 25.5 लगेगा. सो कल की फर्स्ट क्या बोर्ड तो प्रेडिक्शन है? 25 ही था. फर्स्ट बोर्ड तो 25 ही था ना. हाँ, एग्जैक्टली. तो हमारी प्रेडिक्शन आज सही बैठी ना कि हमने कल गेस किया था. सो आज आप क्या गेस करोगे कि कल कितनी रेटिंग का फर्स्ट बोर्ड पड़ेगा हमें? I think around 2600 is very decent. I think पहले 3 बोर्ड 26 हो सकते हैं, but we don't know exactly what's the exact one will be. Oh, by the way, here we have it. First 3 boards are already finished. The 4th board is still ongoing, and I think ये game भी I don't think ज़्यादा लंबा चलेगा, because ये game भी already I mean almost winning for Hari. Yeah, I think the only game that I think would be longer than that would be Harika's game, because I think वहाँ पे वो थोड़ा और try करेगी. I thought he'll be winning easily. It's not that easy, yaar, because सामने भी grandmaster बैठा है. He's fighting for his life. He knows how strong you are. He will try everything he possibly can. याद है गुकेश का एक repetition किया था उसने Knight A4 के साथ. तो they will always try to take the draw here and there. उनको पता है draw is a huge achievement. तो you're constantly trying to fight that. इतना आसान नहीं है यार. In fact, कितना मुश्किल है लेवॉन से पूछो भाई. बंदा 2 गेमें जीता है, बट कैसे जीता है वो 2 गेमें? भाई he is kind of साज भाई, आपकी शक्ल दिख रही है भाई. क्या खुजला रहे हो भाई? बाद में खुजला लेना भाई. ना, वेरी फनी. शायद भाई सच सच बताओ, आपको चेस बोरिंग नहीं लगता एक पॉइंट के बाद? बिल्कुल भी नहीं भाई. एक्चुअली चेस बोरिंग ना सिर्फ शुरुआत में लगता है, क्योंकि जब आपको चेस समझ नहीं आती ना तब बोरिंग लगती है. दैट आई एग्री विद यू. बट वंस यू गेट लर्न द रूल्स ऑफ चेस, वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है कि इट्स लाइक देयर इज, यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो. एंड वो जो फीलिंग होती है ना कि वो हाउ मच यू डोंट नो, इट जस्ट बिकम सो मच मोर एंड मोर एंड मोर. इट्स लाइक मैं अभी भी आई हैव बीन डूइंग चेस फॉर 20 years एंड आई स्टिल सी न्यू पैटर्न्स इन माय लाइफ, जो देख के मतलब बहुत बहुत मजा आता है. तो बिल्कुल भी नहीं. शुरुआत में हाँ, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू थिंक दैट यस, बट व्हेन आई गॉट ओल्डर, when I learned about it, then no, absolutely not. Shivam Bhai has said कि Hikaru ने बोला है कि he would not be surprised if Arjun is playing on lower boards and scores 10 out of 10. To be honest, even I would not be surprised. Arjun is मतलब 2800. so that would be insane. And to be honest, if he scores 10 out of 10, he would pretty much like reach 2800, right? Because even if you assume 2-3 points per game, he's like 7 games away from 2800. If That's that crazy. happens, Sahaj, that would be insane. He would be the first Indian ever after Vishy Anand to cross the rating of 2800. And if he does cross that rating, he could potentially be world number 2. Wow, that's actually unbelievable to think To about. be honest, That's unbelievable to think about. if Kalfin World has a number bad 2. tournament,
if Carlsen is back to he'll be world number 1, but world number 2 is definitely doable. Magnus, I think, is still like 30 points away. No? At that rating, I think 30 points is a lot of points. So yeah. Yeah, that would be crazy, man. So Arjun has a lot to play for, and मजा आएगा देखने में. Pakistan won 2 games with Qatar. That's amazing. We'll play Bulgaria tomorrow. I think समय ही बताएगा. Time का wait करो. देखते हैं क्या होता है. And फिलहाल के लिए यहाँ पे Harikrishna के opponent सोच रहे हैं he's under time pressure. One brief look at the Harika game, and वो position मुझे end game में equal सी ही लग रही है. I don't see how either side. Saj, any chances for Harika here? Any chances? Sadly, not. I think try karegi, but I don't think there is any chance here. Yes, you have the B6 pawn. It's a pass pawn, but B7 का square खाली नहीं है. Also, don't forget, I also have a pass pawn on the A file. वो अभी भी knight मेरा थोड़ा बंद है. So it's like the position is a bit uncomfortable for black, but once black is able to untangle, I think draw would not be so hard. Like for example, knight F5 एक चाल दे दिया आपने मुझे. Then my knight gets out from A4. You know, अभी white की चाल है. But if you just give me knight F5, then it's already very, very good. Yeah, the bishop will have to move and the knight comes out somewhere, I guess. Imagine India Pakistan. Dude, I've imagined it. I've had nightmares and happy dreams imagining it, but it's unlikely because India will hopefully not end up losing a single match, at least for a long while, and Pakistan will end up losing a few games. So वो match नहीं होगा. That would have been an amazing title, Saj bhai. India versus Pakistan chess match. उनको ड्रीम करने की जरूरत नहीं है. वो अपने इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं वो वीडियो. Already he knows वहाँ पे क्या चल रहा है. And Harika thinking of a move. Let's see. She plays, I think, King F2 she played there. Yeah. Great. So, okay, this game is going to be a draw. Let's go back to the Harikrishna game. I think that's where we are more likely, or very, very likely, in fact, to get a win and 4-0 score. And bada maza aega because Saj bhai, US does not have a perfect score now. China also doesn't have a perfect. Let's kind of see the other team scores, right? I'm going to inform you kya score raha. China mein, they are going to have 3.5 half. So they dropped half a point, and that was ding. That's interesting. Wow. Okay. United States. Yu Yangi is also winning. Yeah, Yu Yangi is also winning. United States, it's 3.5 half. So they also dropped another half point there. And Wesley So, no, this is yesterday. Sorry, my bad. They actually have 2-0 up, but 2 games are going to head into a draw. So they are going to drop 1 point. That is also crazy. And और कौन सी टीम है? उज्बेकिस्तान में क्या चल रहा है? Uzbekistan also dropped half a point. 2300 के साथ draw हुआ. Yakovic Sindarov का. So we are the only ones. और कौन सी टीम है बताओ साथ में? कल भी तो Uzbekistan dropped a point ना yesterday. One of them drew. I remember. अच्छा हाँ, yes, you're right. और कौन सी टीम है top team बताओ भाई? Norway I think I can see काफी teams who are scoring 4. I mean that's also board points उतने matter नहीं करते हैं. Team points ज़्यादा matter करेंगे. Board points बाद में I think will matter more. अभी के लिए I don't think so. It has a very big effect. The angle I'm taking is कि भाई those players didn't end up kind of drawing or losing or something. So that's more of a statement on the form than the actual points. Yeah, for sure. So that's kind of that feels good कि भाई Indian players are crushing it. बिल्कुल agreed. By the way, Hari's opponent has made a move, Rook B8. I think we are still on Harika's position, if I'm not mistaken. No, this is Hari. Camera. Can we shift the camera to Hari doesn't have a knight, no? Hari doesn't have a knight. Yeah. Iran. I don't think Iran has such a crazy team, right? I mean, they have 2 players, and they've already Tabatabai has drawn today, so they already dropped half a point there. And in fact, their 4th board is actually worse. So Norway already dropped half a point yesterday. भाई उन्होंने भी आधा point दे दिया. And आज उनका सेकंड बोर्ड पे आर्यन फिर ड्रॉ कर चुके हैं भाई. आर्यन को डांट पड़ेगी कल से मुझे लग रहा है. भाई क्या भाई 2 ड्रॉ कर लिए मैंने 2 राउंड में. आर्यन drew? Yeah, against 2200 भाई. What? Yeah. No. He's playing Raja Panjwani today. Oh, that's yesterday. My bad. I think he's winning today. Is he winning though? I think so. Looks like it. Chalo, let's see.
फिलहाल के लिए बोर्ड 1 पे थोड़ा सा क्रेजी पोजीशन है, सो क्या होगा पता नहीं लगेगा, बट देयर इज नॉट इनफ टीम्स व्हिच हैव लाइक 8 on 8, so that's good to know, at least top teams में मजा आएगा भाई देखने में। हरिकृष्णा स्टिल थिंकिंग क्या करे, रुक b8, what's wrong with rook c1, Sahaj? Why not rook c1 and h4? Rook c1 where? Sorry, rook h1 and h4. I can also play h4 straight. That's what I'm thinking about actually. Hmm. No, h4 straight looks really good to me. Yep, and if Takes. you take then check, yeah, Queen check, yeah. कुछ तो होगा यहाँ पे. get shit. But वही है, मतलब Hari will probably, I can also do this slowly, you know, आराम से, because he doesn't have Yeah. to rush. And I think Hari's nature is more like that. So it's not unheard of. I think that Queen already go has ahead. to go back, yeah, to a7. Yeah, this is already lost, I would say. 15 minute पड़े हैं उनके पास, by the way. Oh, by the way, he just played a move, queen to d2. He doesn't play h4, he plays queen to d2. What is that? Bishop Strategy g5 cycle idea, G5. yes. Yeah, absolutely. Can I not play knight f7 or something just to protect that pawn? And then you will go for something like h4. I think Hari is just trying to make, trying to get him in time trouble. उसके बाद he'll play h4. ताकि उसके बाद वो calculate करने का time ना हो. True. Netherlands, by the way, team chat carry है. That is a good point. Netherlands में, I think Anish dropped half a point yesterday, but फिलहाल के लिए today they have had 2 draws already. So Anish Giri is still having an equal position. Jan Forrest 1 and Max Vermerdam or Benjamin Book का draw हुआ है. So they will win the match again, but they have already also dropped like the wood points there, match points, whatever. Harikrishna, let's go. We need 8-0. Come on. Let's go. Bishop d7 now. With the idea of bishop e6 can also be interesting. The bar just went down, Sahaj, thoda sa na? Bishop d7. No, bishop d7, yeah, there we go. Bishop e6 now. थोड़ा सा नीचे गया है बार, yeah. That's true. 57 teams on rank 1. Is this after round 2 or round 1? Round 1, I think. Round 1 के बाद था. No, 51. No, it was 91 teams on full score after the first round. Oh, no. It was 56. Yeah, he's right. After round 1, it's 56 teams. ये number बहुत जल्दी कम होगा, I think. Hungary 8 points. Wow, the host team. That's amazing. No, Hungary just drew, na? On the second board I saw. They just drew. Yeah, उनके भी 8 पॉइंट नहीं है. बेसिकली यार ये 8 पॉइंट मैटर भी नहीं करते, ये टाई ब्रेक्स में काम आएंगे, बट इट्स गुड टू नो कि भाई कौन सी टीम फॉर्म में है, कौन कहाँ ड्रॉ ले रहा है, क्या चक्कर है. चलो भाई मजा आया, आज का दिन बहुत ही क्रेजी है साज भाई, इनसेन. Crazy था, but I think it's going, everything is going our way. So yeah, that looks really good. Bishop d7, nice move by him. He wants to transfer the bishop to e6 and then go for some h4 ideas. Black को मतलब अब काउंटर प्ले निकालना बहुत जल्दी बहुत जरूरी है. इतना मुश्किल है यार. दिस पॉन इज हैंगिंग, रुक नहीं हिला सकते. बिशप से खेलोगे तो मार के कुछ ना कुछ 5 पॉन निकल जाएगा. And e4 knight e5, you have to do something like that. Oh, wait, did he just make a move? I don't. Did he just make a move? No. Wait, sorry. This is the previous move. Yeah, bishop d7 अभी होने वाला है बोर्ड पे. अच्छा, बी टीम हंगरी के 8 पॉइंट है. Got it. But B team is not a top team. It's not a top team, right? So they will end up losing. They might play India tomorrow. Who knows? So usually क्या होता है कि we are kind of trying to understand the form of the top teams कि भाई वहां पे कौन सा कोई टीम है क्या जो खतरनाक खेल रही है. Right. Can you show points table? Let me know, yeah, if there is any points table that we can show standings wise अगर है हमारे पास ready, but difficult I think because अभी सारी games खत्म नहीं हुई है शायद. Here we can see bishop d7, camera थोड़ा delayed. Women 2.5.5, yes. Time pressure coming in. उतना भी नहीं है. I think he should. हरी आगे है टाइम पे तो ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई चक्कर नहीं होता. Slovenia and Georgia is also 8.
there are lot of teams चाहे जिनके 8 के 8 होंगे, अभी बहुत टीम्स होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें. How are middle sided? So basically 11 rounds chat, 11 राउंड टक 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 जिसके सारे गेम्स खेलनी है, हर किसी को इसके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे, दे आर द वंस विल गेट द मेडल्स, टॉप 3. एंड लास्ट टाइम जो स्टैंडिंग्स थी, इट वाज उज्बेकिस्तान गोल्ड, Armenia silver, and India B was bronze. So I think and India A was 4th and US was 5th. तो just miss किए थे 2 medals वहां पे. Yeah, there we कितने have it. point? क्या कुछ हुआ क्या भाई? Yes, thank you. Yeah, there it is. I was also curious कि कितने points पिछली बार आए थे. I think chat में कैसा सवाल है कि ओलंपियाड में कितने points थे last time winning teams के. So every time you win, you get 2 points. A tie 2-2 gives you 1 point, and if you lose, you get 0. And Uzbekistan, Armenia, in Sahaj bhai, this is crazy. Kya? Oh wait. Oh no, wait. What is this? This is number of games. Okay. This makes sense. Yeah, this makes sense. Number of games. Just a sec. Yes. So Uzbekistan was first. They had 8 wins and 3 draws. So 19 points the unke total. Armenia had 19 and India had 18. Then India 2 had 17, US 17, Moldova 17. So 19 points the winner ke, Sahaj. So that means so they 19, won. 9 wins and 1 draw. 9 wins, 1 draw, 1 loss. Yeah. So you can only afford to lose 1 match in the entire event, or can afford 3 draws. 3 draws, yeah, 3 draws. In fact, Uzbekistan, the team which won the gold medal, was the only team जो एक भी मैच हारी नहीं थी. Armenia lost 1, India 2 lost 1, India lost 1, US lost 1, Moldova lost 1. So that means कि भाई गेम हारना ही नहीं है if you want gold. एक loss allowed है, but I think the room is not so much. By the way, while we're thinking of that, 10 minutes left on Helgi's board, Helgi's clock. Yep. He has to find some counterplay immediately. अगर वो नहीं मिलेगा तो I think he's going to be too late. Bishop e6 and h4 is incoming. He has to go for Let's see what it does. That's should we check hope. also? Should we also check Harika's game just to see what is happening there? Absolutely. I think Harika game mein, I think king has come to e3 and knight abhi bhi, okay, it's kind of still trapped, but now you can just take on d4. Yeah, by the way, if you take on d4, then and then this should be. Oh, by the way, there's a simple tactic here. Knight takes d4, king takes d4, and apparently knight takes b6, knight takes b6, bishop a7, and that just takes care of everything because king c5, a4. Knight d2. Knight to bach raha hai na bhai. A3. Knight b3. Okay, now if I go a2. Oh, yes. Yeah. This is a draw. But I don't think black will find this though. Difficult. I would, very difficult. Even if you do find it, it's not easy to play it over the board. Is London system good for beginners? It's the best opening you can play, especially until the intermediate level. It's an amazing opening. You understand it very quickly. You can defeat anybody. There's not much 59 lines of theory. It's amazing. How are pairing side in the Olympiad? Yeah, it's going to be the winners against winners. So let's say जो दो टीम के बराबर पॉइंट्स हैं वो आपस में खेलती है. That's basically it. जैसे अगर मैंने 4 जीते, आपने 4 जीते, then उसके बाद we will play each other. अगर मेरी टीम में 3.5 हुए, आपकी टीम में 3.5 हुए, then we'll play each other in the next round. It's that simple. Okay, Nivai, can we have the results of the top 10 boards? Do we have that? I think एक बार अगर है तो दिखा दो, मजा आ जाएगा भाई. देखेंगे कैसे ग्राफिक कैसा है. That will be amazing to see as Harika thinks, and उसके बाद we can shift to the Harikrishna board once we kind of do that. Scotch is nahi yaar. It's not the easiest opening yaar. By the way, E4 played. E4 played. Wow. Can we have the Harikrishna camera as well, Nidhi? E4 played by Harikrishna opponent. So he's fighting for it. He's not giving up the game so easily.
Yeah, bilkul, as he should not, because the idea of e4 is very clear. He wants to get his knight into activity by putting it in the center. And उसी के साथ साथ the knight will come to c4 to f3. There's lots of different places. Helgi played the best move. Absolutely, he did. And idea है कि यार knight is excellent on e5. Puts pressure everywhere. So bishop e6, knight e5. Yes, bishop takes g5 not hanging. How is that not hanging? Good question, bhai. I'll get back to you on this. Why is it not hanging? It feels like it's lost, no? I don't think he'll take back. If he takes back, then it's over. Then what are right? you? Then I'll take bishop f6 also. Oh, he has to take back. F g5 queen. Oh, Knight knight c6. g6. Do you think he has seen that? Wow. Yeah, maybe it's not so hard. Yeah, maybe it's not so hard. But I don't want to see this. Yeah, I don't want the draw here. Oh, Pura point. by the way, bishop e6 and then he played queen b3. What? What? Yeah, he just probably didn't see that. He probably saw that bishop g5 and he didn't like the idea, you know. Oh, you see, he's clever. He played queen b3 because now he wants to go knight e5. And agar if I go bishop takes g5, there is queen f3 check. An Yeah. intermezzo. So he sees this idea. But By the way, it's do you like- know what? Do you know what the best move for the computer is here after queen b3? I know why. I saw it why. I saw it why. Chat, आपके लिए सवाल है. What is the best move for Harikrishna here, which basically wins the game? So chat, Immediately. white to play and win. There are a couple of moves, but this one is a bit special. White to play and win. Come on, chat, निकालो. जल्दी विशाल निकालो सर भाई. जो आप सवाल पूछ रहे हो उसका मैं जवाब अभी देना नहीं चाहता. I know because I remember you from before. अगर आप अपना ना काउंट चेंज करके आया करो, then there is a better chance कि I will fall into these things. Let's go, भाई. H4? नहीं भाई. Rook C6 is one of the good moves. It's a very good one. Makes sense. But उससे better है एक और मूव जो अभी लिखी है स्टडी टेबल ने और श्रीश कुमार सैनी ने. बिल्कुल सही मूव. दैट इज रुक टू C7. भाई ये क्या चाल है भाई. फ्री का रुक. आइडिया है रुक टेक्स F7 विन द गेम. तो आपको मारना पड़ेगा. लेकिन अब आएगा D6. बिशप पे अटैक और क्वीन पे अटैक. अगर आप रानी बचाते हो, I don't know where do you move the queen. It's not a comfortable square. Let's say random square A4. Then I take C7, and ये no? pawn queen भी हो रहा है. So ये रुक भी जाएगा इसके बदले. इसका तो पूरा तेरा घर जाएगा. तो ये चक्कर है. And No, basically you can also just go bishop f7, king f7, queen d7 also there. I mean anything is winning. yeah, I think if he sees rook c7, it's over. yeah. So I think rook C7 is winning on the spot. Yeah, rook Will c7 he wins on the find rook spot. C7 though? Will he find this move? Of course he will. Wow. 100,000% he finds it. Let's see. I think maybe he's only going to be worried ke dekhne ke baad, like, you know, whether black can hold a fortress of some sorts or not. Hmm. That's what he's worried about probably. Hmm. After rook c6 also works, I think. Rook c6 also works. वो कोई one कहीं ना question- कहीं पे रुक जाना चाहिए. C6 या C7. Yeah, go ahead. One more question. I think what happens to rook F8? So let's say if he just defends, I think then you just play on. So for example, queen E2, you could have queen H5 at some point coming in. Bishop Wait. D6 having- Sahil bhai, उनका हाथ ऊपर गया था अभी just. Oh, रुको, अच्छा रुको, नहीं, he रुको. hasn't played, otherwise we would have seen it on the board. Yeah, we would have seen it on the board. हाँ, पर उनका हाथ ऊपर गया था ऐसे just now. I think he's ready to play a move. Chat, या तो rook c6 हो गया फिर rook c7 होगी. One or the other. But to be honest, once you play rook F8, then you're tied down forever. So that's like saying कि okay, मैं अभी नहीं हारूंगा, मैं 15 साल बाद हारूंगा, 10 साल बाद हारूंगा. So I don't think rook F8 is something you want to ever play as black. Yeah, true. It's a very passive move, but still also rook And- d7 is possible there, you know, कुछ. Yeah. नहीं, And Sahaj, मेरा आइडिया ये है भाई कि मुझे हाँ. जिसको बिशप हटाना है d6 से. बिशप हट गया d6 से, then I'll हाँ. push d6 and it's over. Yeah. Then I push the pawn. And chat and Sahaj एक काम करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं. Imagine we are the Indian captain.
ठीक है? We Okay. are the Indian captain now, so हमारा नाम है नारायण श्रीनाथ, ठीक है? And we have teams that we have to play against. So one is going to be, let's assume USA for the first challenge, because that's the toughest challenge. कभी ना कभी तो match लगना ही है ना? Mm-hmm. Which 4 players are you fielding? Chat, नाम लिखो, chat spam करो. Which 4 players are you Against fielding? US, हाँ. Who are you resting? I think I would rest Hari there. Got it. So the I would order rest will Hari. be, it will be Caruana against Gukesh, same as last candidates. Olympiad. Then it will be Prag against Dominguez. Wesley, no? Wesley. Then it will be Arjun against Dominguez and Vidit against Aronian, right? Yes. Got it. So Hari rests. Yeah. Chat bhi I think yahi bol rahi hai. Next question. Nihal Sir is not in the Olympiad team. He will definitely be there, next time most likely. Next up we have, so we are playing Norway now. First board is Magnus Carlsen. Baki, all 3 boards are 2650, 2600. Who are you resting? I would Gukesh. You're resting Gukesh. Gukesh Yeah. को कैसे convince करोगे कि भाई Carlsen से नहीं खेलना? Because it's clear that Magnus and Prag, as I mentioned to you before, Magnus and Prag, I mean, I think if there is a Achilles heel for Magnus, that is Prag. He himself has said it before. And if you want the team to have the best chance, then sometimes you have to make sacrifices. That's what I would tell Gukesh. And it doesn't mean that you are not a great player. Of course you are, but there is a certain player who has an effect on the greatest player of all time. And if that is a chance we have to take, then we must take that chance. And let's not forget, Prag was the one who defeated Magnus in a classical format in 2 years. It's his own. He delivered his only defeat, to Magnus. So I think it's, for me, that reason would be enough to convince him. Fair point. Chat I think hopefully that's what will happen. And I think in my eyes, I think that's why Prag is there on board 2. मुझे लगा Prag को board 3 रखेंगे, क्योंकि rating wise Arjun should have been board 2. Or Arjun should have been board 1. Arjun को उन्होंने 1 or 2 पे नहीं रखा. There is a reason, because he wants to make sure कि जब Magnus आएगा, he wants to put Prag where Magnus is. I think that's a fair point, and chat bhi agree kari. And Rook C7 played on the board. Rook C7 is on the board. Beautiful move by Harikrishna, and I think opponent को सदमा लगने वाला है कि भाई ये क्या खेल दिया भाई इसने. So we'll see how he replies back. Lekin chat. So Magnus के against you rest Gukesh. So next challenge is China, जहाँ पे we have Ding Liren on board 1 and Wei Yi on board 2. Now who are you resting, chat and Sahaj? No, I think then it's a question of who are they resting, because if they're resting Wei Yi for just so Gukesh can play against, they are going to play. They're going to have the same team, so it's Ding on board 1. Then I think it doesn't matter. I think we field our best team. I think in that case we just don't do anything crazy. We just field the best team, and which it depends also कौन सा player form में नहीं है. I mean, from the looks of it, Hari is playing, I think, a really, really good chess as well. So I would also consider putting Hari in that team. It depends, which player is not feeling the best. I think the only kind of thing is that I would not want Gukesh to play Ding. And I think if they are, because I think that won't be good for the World Championship. Because I think if something doesn't go his way, then it can hamper his confidence in some way, perhaps. But that is a match likely to happen, right? Because they are both on board 1. So, yeah, they are both on board 1, right? So it's likely to happen. I thought Wei Yi was board 1. No, Ding is board 1. Bhai. I thought Wei Yi was board 1 and Ding was board 2. This Ding whole time I've been thinking Ding was board 1, by the way. Ding was board 2. Ding is board 1. And that means ki unless some side, kind of doesn't, they rest somebody, that's the match that will happen. And I guess that is settled. It will be Gukesh versus Ding. Let's go, bhai. So rivalries chalti rahengi. Magnus, Prag, Gukesh, Ding, and Rook B7 played by Harikrishna. What do you think about this? Do you think that Gukesh should play Ding, or do you know? I think he should play. Do you think there is no downside to it or anything like that? I mean, if he loses, it's a wake-up call that it's not an easy match. So he should work. Would you want a wake-up? But would you want a wake-up call this close to the match? No, but it's 2 months away. He has enough time. I think if it was 20 days prior to the match, I would say no. But it's 2 months away is enough time. Yeah, it's but exactly 2 months. But this is also the last. But also, it's the last event most likely that he's going to play. It doesn't matter. I think 2 months is a long enough time for either he crushes Ding
and that is a psychological ledge going to the World Championship. Or he draws, nothing changes, or he loses, and that's a wake-up call. So I would say I think it's a great match to watch, and it'll be amazing because it'll be a rivalry, and people can make predictions based on that match. So I am all in for a Gukesh Ding match. I'm not scared. I don't think Gukesh would be scared either. He would be ready. Bishop c5, rook b7 apparently wasn't the best move, Sahaj. Rook d7 was the best move, and he played rook b7 and bishop c5, and black is back in the game because bishop c5, there's queen f3 check. So maybe black just tricked Harikrishna here. Ooh. Did he just blunder this? Yeah, he did, I think. He did blunder this. Oh, that's sad. Bishop c5 was the only move in that position. Now I think Hari is going to spend some time evaluating everything again, because this was not what he wanted. Because chat, you have to take, and once you take queen f3 check, king g1 I guess is the only move, and once you take back, there is this e pawn running, and honestly you have to be very cautious, because let's say you waste a move. I don't know how you waste a move. Let's say you play rook c7, a complete waste, e3, and I don't want to be white. I mean, this could go really bad for white. Suddenly knight could come to e. Oh, this is, I move the king somewhere. Okay, I can't move the king actually, but still, I mean, this pawn should ensure at least equality, if not just a win. This is very dangerous. I think Hari has to be careful. For sure. I think this is something he missed most likely, or he missed the old e3 e2 idea. This point here, bishop c5 b5 ke baad, even if I go queen f3 e3, your d6 pawn is also left hanging. So I'm not sure what the story is here. I think Hari now realizes that he's probably made a mistake. Yeah, most likely. And chat, we have covered we've covered Norway, we have covered Uzbekistan. No, we've not covered with China and US. Which other team would you consider as a strong competition? I think बहुत teams हैं, but ऐसी कौन सी टीम है जो इंडिया को challenge देती है साज? Armenia, I think, is a very big one. Armenia, I I'm think not too worried actually, because Armenia. Yeah, they're very dangerous. I'm telling you, that team is insanely dangerous. Each one of them is very dangerous. There is a very big chess culture in that country, and I think most players, whenever you play against Armenian players, it doesn't feel like if you're playing at 2600, it doesn't feel like you're playing at 2600. It feels like you're playing someone stronger always. At least that's my personal experience with them. So I think we should definitely watch out there. By the way, is Harika winning? Oh, her opponent blood, and we have Harika's camera quickly. The tables have turned. Hari is no longer winning and Harika is. So after king e3, ये कैसे हो? क्या हो रहा है भाई ये? She could have gone for knight d4. She could have gone for f5, king e8, all these moves. She played bishop d6, and apparently b7 was winning. What do you mean was winning? Means she didn't play it? She didn't play it. And if you play something like bishop b8, then bishop e5. But how did she miss that? That she doesn't played seem actually very... king d3, which still retains a good number of winning chances. And now black has to play knight d4 as the only move. I mean, that's an obvious one though, because king is coming up close. Knight d4, king d4, and then what? Knight d4, king d4. I don't know actually. Knight d4, king d4. Then what does black do? Because I'm actually... What am I threatening though? Is my plan... King e8 maybe? King e8? Is my plan knight d3, knight f5? Is my plan king c4, king b5? I think king c4, king b5, based on instinct, वही लग रहा है मुझे. The bar doesn't like it though. What's the move then? The bar never likes my instincts. Knight d3, there is bishop c5 check, yeah? I think there is. If I go knight d3, there is bishop c5 check. Sideways. मेरा लैपटॉप क्यों अटक गया भाई? हाँ, 93. हाँ, अभी कैसे अटक गया आपका लैपटॉप? अब तो आप वो OBS भी नहीं हैंडल कर रहे. कितने प्रोसेसर का इंजन लगाया हुआ भाई? Knight d2 is apparently the move, Saj. Knight d2 is the winning. Bishop c5, king c4.
Actually, now it works. Yeah, takes on Bishop b6, king b5. b5. By the way, she just made a move. What did she play? She did not play anything. Oh, Yeah, she did. f6. I just saw it. That's a Yeah. blunder. That's a blunder. That's a blunder. 100%. Is it? Yeah, it should be. It should be. Do we just wait? How do we win this though? How do we Yeah, convert let's this? quickly check what the where the game is. I'm also putting it up now. Because look at the bar, Sahaj. It just went up like crazy. Because No, I I was mean I see thinking we that. move the bishop back and then we play king c4. But there's knight b2 Just check. when knight d4 nahi hai na, हाँ. Knight b2 there is king c2, no? Knight c4, king b3. Oh. And knight c5, king c4. Baap re. No, knight c5, just bishop c5, king Take c4 king also. c4. Yeah. Wait, yeah. she's touching her knight. She's touching the f1 knight. Oh, move that's the not good. bishop, Harika. Move the bishop. She plays knight e3. Come on. Arre, yeah, she gave black another chance to take on d4. Is Harikrishna winning? He was, but he made a mistake. Now it's tiny bit better for him. Okay, but I think she's still winning though. I think it's still winning, yeah. Let's hope for the best, bhai. Let's hope But for the best. slowly win है, but लेकिन win तो है ये, win लग रही है मुझे. So I think India, the women's team is going to be 3.5 now. साज भाई, आप याद है सर्बिया की विनिंग की प्रेडिक्शन करी थी आपने? Yes, I did. एस्टोनिया से हार रही है भाई. Really? साज भाई आप प्रेडिक्शन कर दो कि यार मेरे को कल कुछ पैसे घूमने वाले हैं मेरे, तो क्या पता कुछ मिल जाए भाई. I mean, I still think Serbia. How are they losing? How is this team losing to Estonia? How is this possible? ये सवाल भी उनकी हार के चला गया भाई. हार गए हैं या हार रहे हैं? हार रहे हैं. Please show Harikrishna. Ow, bhai, my legs are tired from sitting in one place, bhai. जल्दी से भाई. Go ahead. हरिकृष्णा की गेम नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा भाई, मैं हरिकृष्णा की गेम पे जा रहा हूँ. Oh, अच्छा. I thought you were gonna go and stretch your legs. You can do that if you want. हाँ, of course भाई. And by the way, chat, bishop c5 played, queen f3 check, and king to g1 played. तो हरिकृष्णा is facing some last minute blues here. देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे इसको. Arjun has crossed 2780. If he wins like 7 games in a row, 6 games in a row, he will be at 250 भाई. ज़्यादा मुश्किल नहीं है अब. बिल्कुल भी नहीं. Okay, so we're back to the Hari game. Bishop 1 takes c5 and queen f2 is not a blunder but a huge mistake apparently. And now it is actually equal. He has to just play queen d3 or Did queen he just d1 play check. it? Did he play queen f2? Played queen f2. Oh, that's not And good. now it's supposed to be equal, either queen d3 or queen d1 check. Both are equal. And let's say queen d1 check, king g2 khelna padega. And you just kind of hold on. You play queen d3 threatening e3. And that is apparently just equal. Wow. But Sahaj, it makes sense because white can't progress. How can white progress? I mean, of course, yeah, I don't think there is a way to progress anymore. But also, like for black to play queen d3 is not unbelievable, right? Yeah. Like you're not going to exchange your queens, of course. And to be honest, not even queen d3, even c4 works apparently. And that is a much more logical move and has a clear plan. Yeah, c4, c3, c2 just. I think white can play queen a7 though, but there will be a repetition there. I think Hari को समझ आ गया होगा यहाँ पे कि कुछ गड़बड़ हुई है. Bhai, this I think by now he realizes probably that it is not as winning as it was. Look at this variation, yeah. By the way, so we have like, okay, queen d1 check, which is very likely, the most likely move in the position. King g2 forced, c4. Now b6, c3, takes, rook c7, queen d2. If you take, then the pawn queens. Oh, there is e3, yeah, e3, b7, e3.
Yeah, so now you play. Okay, now the only move for white, apparently, at least the best one, is just taking on f7. Oh wow. Even if you go b7, I think the idea is, let's say you take, rook takes b7, e3, rook f7 check, king f7, queen d2, e d2, v8 queens, d1 queens, and then white is the one who has to force a perpetual. And to be honest, that is not making me happy, because I think it is possible black just finds this. Yeah, I think queen d1 and c4 is not unbelievable. Queen d3 is also not unbelievable. Because these are moves, of course, as black, agar aapne queen exchange kar liya yahan pe, you will go into the rook pawn end, the king pawn ending most likely, because black ka knight pinned hai. And hamara b pawn will just move forward, just for b6, b7, b8, nothing can stop it. So I think from black's perspective, black knows the queen trade is not going to work. So he's going to play queen d3 or queen d1 or something like that, and then it's going to be, yeah, I think we are going into that position by force. बिल्कुल भाई. And you can see Sheena sitting there, सोच रहे हैं कि यार ये शायद आधा पॉइंट यहाँ से छूट जाएगा हमारे हाथ से. You think Sheena is worried कि आधा पॉइंट जाने वाला है, और he's like ठीक है यार, कोई बड़ी बात नहीं है. I think he must be a bit sad though about this. Harikrishna, and chat, usually it's not even about the half point, it's more about you feel कि यार I am the only one. जैसे कल वंतिका का हुआ ना, I'm the only one who kind of drew, so that puts pressure on you for the future games. You don't want to be that guy again. So Harika's winning again. Levi Osman, how is your day on a scale from 2 to 9? Wow. ये कब हुआ भाई? Harika's winning. Can we go to her game then? Let's check out. I think if she's winning, let's have a look. And I think we saw knight d2, king e8, knight c4. Now this looks comfortable. And Sahaj, b7 is the only move now. b7, bishop b8. She has to play it now. Bishop after bishop b8, you simply take the a5 pawn. And the king can't approach. Yeah, I don't think that's very hard to find. I think maybe she will. But b7, Nidhi, can we have Harika on the screen, please? The camera. Would love to see how she's feeling. She does feel confident, but b7 is apparently the only move to win the game. She needs to push the pawn now. Helge, I'm the only one who drew. Hari, I'm the only one who drew. Wesley drew half point. I got a... Why Wesley? Wesley drew yesterday, I think. Yeah, whatever. And he slipped out of the world top 10, and Vishy is now world number 10 again. He's again into the top 10. Oh, wow. And chat, you can play him. You can actually play Vishy Anand. There's a pinned link. Bhai, jao, click karo. She just played b7. Oh, sorry, bhai. Sorry, I interrupted you, but b7, yeah. Nice. That's amazing, bhai. भाई अच्छी न्यूज के लिए इंटरप्ट करने में कोई शर्म नहीं है. Imagine हम दोनों बात कर रहे हैं, and then I'm saying, साज भाई यार क्या कितने बज गए? Like, रुको साज भाई, I am just going to give you $1 million. I'm like, कोई ना भाई यार, कर लो इंटरप्ट यार, कोई ना भाई, दे दो, ट्रांसफर कर देना, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये वो है, तो it's okay to give you good news and interrupt. I mean, that's an amazing news. Yeah. Vishy keeps getting in and top. Yeah, because he has other responsibilities, right? So he's playing more of a mentor role. He also, FIDE में भी है वो, he's working there. So बहुत सारी responsibilities हैं. He tries to play whenever he can. So his rating is pretty much constant. It's like, I think 2751. And then people who kind of drop out of world top 10 come into world top 10, and yeah. And to that point, एक pinned link है भाई, जाओ यार उसमें जाके भाई, मतलब विशी आनंद से खेलने का मौका है यार, मतलब सपना होता है मतलब हर किसी का विशी आनंद से खेलना. You have a chance. The match starts on 30th September. आप जा सकते हो pinned link पे. You can click on that link, join the match. अब तक already साज भाई 10,200 लोग join कर चुके हो match. So wow, it's going to be the crazy entire world versus Vishy Anand. It will be crazy.
एंड अभी तो 3 हफ्ते दूर मैच स्टार्टिंग डेट है, सो इमेजिन कितने लोग हैं, you'll be part of the world who will play Vishy. That's fantastic, yeah. What a time. That's amazing. And Shahaj, what's your rating? What's your score against Harikrishna and Vishy sir? If you, I've never played against Hari before. I have played against Vishy sir, but in a simul. Like I never played him face to face or like one on one before. Simul उन्होंने एक बार दिया था. Then I managed to make a draw against him. But I think against Hari, I have never played him before. But this is also kind of a, not a simul exactly, but it's like a, yeah. No, I don't think it's a simul. In simul, you have to think about different boards at the same time. Your attention is diverted. I don't think he's True. only playing one match now with the world. Yeah. It will be amazing though यार. I think 10,000 लोग तो है. I assume कि जब तक मैच स्टार्ट होगा तो लगभग 25,000, 20-25,000 हो जाएंगे. Kasparov का 50,000 people he played. So very likely by the time the match ends, that number is crossed. And by the way, chat, you can see pawn मार दिया हरिका ने. It is looking amazing. Saj bhai, I'll be back in like a couple of minutes, है ना? तब तक के लिए let's just watch Harika win the match. मैं आता हूँ. For sure. Yo, chat. I'm actually surprised that you haven't played against Hari. Actually, that's probably because when I was growing up, Hari was not living in India, so I didn't get a lot of opportunities to play him. I think he lives in Czech Republic permanently. So probably that could be one of the reasons. And also Hari was already an established player by the time I started playing. Okay, knight takes a5 हो चुका है board पे. Harika is thinking. Why is Harika thinking? It's her opponent's move, no? Or maybe we haven't seen the thing come up yet. Simul का मतलब होता है कि when one player, it's called a simultaneous exhibition. There, it means when one player plays against 20 different or 30 different players at the same time. Like you go around, you basically go around the room and you play 30 different chess matches at the same time. Are they getting paid for playing Olympiad? I would hope so, but I don't know what it is, or yeah, but I would hope so, yes. Says, why did you play against Harshit Raja? No, I did not actually. Harshit is, he's much younger. So I don't think I think I must have seen him previously in some tournaments, but I have not played him, in a one-on match. Not as far as I can remember. I don't think I have. That's very funny. When I started playing chess, it was at the age of 4 years old. That's when I started playing. Is there a camera delay? Yes, there is. There is about, I think it's not very, very long though. So I think it's about a minute or so, something like that. So yep, knight a5 ho chuka hai board pe, and her opponent is thinking. I think she's completely winning in this position. I don't think there is like much that black is able to do, because b7 ka pawn is way too ahead. And I think black's knights are also a bit awkwardly placed. The bishop on b8 is just an absolutely bad piece. Have you ever played GM Anirudh? I don't know who that is. I don't think I know a grandmaster with that name. Mod bana liya new? I don't think so. I think we did the membership challenge, and mod ka challenge abhi tak hua nahi hai. I beg you, please let me know good coaching center in Bangalore. And I have told you many times, Firearm, that you must text me not in between the streams. You must text me on Discord afterwards to let me know or to remind me, and then I can ask someone for you. If you ask me in the stream, I will tell you yes, but then, let's say in half an hour time or in 1 hour time, that thing slips my mind and I'm not going to be able to remember. So either remind me tomorrow before the stream, or remind me tonight. That way I can do it. Okay, by the way, King D6 has been played by her opponent, and now it is Harika to think. Her knight on D5 is attacked at the moment. Oh, she plays knight B4.
Oh, I think that is very simple. No, knight b4. Idea knight to a6 भाई सीधा bishop b8 पे गए हो. Bishop b8 का गए हो and you will just promote to a queen. Isn't that just immediately winning? If I'm not mistaken. Oh, by the way यार हरी के गेम में कुछ बहुत crazy हो रहा है यार. अरे यार साहिल भाई को बुलाना चाहिए था. बहुत हरी के गेम में something crazy just happened. His opponent just blundered. His opponent just blundered in a very yeah. Look at this position by after queen e1. Now white can play bishop f7. I don't have the access to the screen, but white का जो bishop दिख रहा है आपको वो knight को मार सकता है. And उसके बाद there is a sequence of variation which is a +6 winning advantage for white. How crazy is that? Can we say that the Indian team that has gone this year is by far the strongest team from India? You mean strongest on paper? Yes, I would say so. But again, we don't have Vishy sir, so we don't have the GOAT of Indian chess. साज भाई जितवा दिया हरिका को कि नहीं? अरे हरी भी जीत रहा है भाई. आ जाओ. क्या बात कर रहे हो? बोर्ड चाहिए यार, बोर्ड चाहिए. वो पोजीशन लगाओ यार, पोजीशन लगाओ. नीरी भाई बोर्ड चेंज कर दो यार प्लीज. हाँ, कैसे look हुआ at this भाई? bishop he played king h3. Just go there. यार Oh, वो wait, दिख नहीं रहा अभी. so हाँ, it's the exact same variation, yeah? yeah, exact same variation. b6 जो हमने E3. पहले देख रहे थे. Yeah. Oh, he didn't go for c4 idea. He went for queen d3. Yeah, he went for e3 instead. You'll see. e3, queen f3, queen d2 check. King h3 was a blunder apparently. Why? Why was it a blunder? e2 and black was winning. What? Bishop f7? Chat, look at this. Look at this variation. It is insane. This is absolutely insane. Look at this. e2. Bishop f7 मारोगे ना साज भाई? हाँ, bishop f7. King to h8. Bishop g6. साज भाई निकालो मूव, क्या लगता है? यार 5.5 घंटे हो गए भाई. चैट आप निकालोगे? मेरे को आपको नहीं मौका दिखे. देता हूं. So first of all, let me g4 point. g4 Yes, g4 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 queen check. h6 check e1 queen. Queen g4, queen Queen h6 h6. check, king g2, and you know what? Black has 2 queens now. So yeah. प्रॉब्लम ये थी भाई कि अगर आप g4 ना खेलते ना, let's say let me just show that e2 bishop f7 king h8 bishop g6. If you let's say you play e1 queen, अभी भी 2 queen आपके पास, but I have rook h7 king g8 rook h8 check perpetual. Oh wow, you can't take because queen h5 is mate. Oh, Exactly. This is beautiful. Wow, It's a nice. very beautiful. But he played queen e1. That's a blunder. Why would he play queen e1? I played- can't even justify. I don't even know how to justify this move. Like, why would he not just go e2? What is queen f2? The queen e1. It makes no sense. वही तो मैं कह रहा हूँ. पॉइंट क्या है queen e1 का? भाई 4-0 यार, वो इंडिया का रिकॉर्ड परफेक्ट रहना चाहिए ना. So अच्छा वो he's a very Helgi is looking out. हाँ, he's just ख्याल कर रहा है हम लोगों का यार. And now I think chat we are completely winning, and the winning move is actually bishop f7. That is the winning move, and it is apparently game over. Rook f7 मारते हो, rook f7, king f7, b7, and ये प्यादे को कोई नहीं रोक सकता भाई. And if I play e2? अपने सपनों को पूरा करेगा. e2 आप खेल दोगे, लेकिन now there is queen h5 check, king g7, b8 queens, queen f1, king g4. Bhai, this is a very hard line to see. Very hard line to see. Not easy, and that's what he missed. Yeah, that's what he likely missed. So Harikrishna has to calculate. He has time. He has time. अपने पास बिल्कुल time नहीं है. Nice. Come on, By the way, इंडिया में कोई GM अनिरुद्ध है क्या? कोई ग्रैंडमास्टर है क्या अनिरुद्ध के? कोई मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं है भाई. I don't remember any GM Anirudh there. Really don't. मुझे तो एक ही अनिरुद्ध पता है, is like a 2300 player. But yeah, I don't think there is a GM from there. अगर आप ट्रोल कर रहे हो तो भाई come on. मत करो यार ट्रोल यार, मत करो रे. अभी मत करो यार, अभी मत करो. स्ट्रीम के शुरुआत में किया करो, तो हमें भी मजा आता है. Norway is going to tie 2-2. क्या बात कर रहे हो? Is Norway going to tie? I will not switch the games because Hari is about to win.
but I will verify that claim, that huge claim कि नॉर्वे का टाई होने वाला है. Carlsen will, you know, kick himself for not playing today if that happens. नहीं यार, oh, Norway is actually winning 2-0, but they are worse on both boards. So a possibility, but I don't think they will lose though. I think first board they will draw. So it will not be 2-0. I think 2.5 तो बनेगा उनका. Come on, Hari, let's finish him off. Bishop f7. Let's go. Winning move on the board. Let's go. I think he will find it. भाई कोई जीएम हो सकता है जिसका नाम ना सुनना हो भाई, बट आई डोंट थिंक सो. जीएम का नाम ना, आईएम का यू कैन मिस, जीएम का तो भाई कभी नहीं मिस करते भाई, बिकॉज इट्स It's ऑल not ओवर द न्यूज. possible. इंडिया हैज इस 88th 89th जीएम, लाइक ये तो कितना तब से चल रहा है रे, जब से 60 Exactly. हरी वो हर्षित राज से तो ज्यादा ही पॉपुलर हो गया था ये, तो तब से तो भाई वी नेवर मिस अ सिंगल जीएम. आई थिंक इट्स वेरी अनलाइकली वी मिस्ड वन. हर्षित राजा की वजह से, you mean? हाँ, बिकॉज ही वाज आई थिंक 69th जीएम, कुछ था पता नहीं क्या क्रेज था उस नंबर के बारे में. I remember that. I don't know what's the craze behind it, you know? Yeah, really no idea actually. No idea. समझ से सभी लूजिंग यूएस का जीएम है भाई. यूएस का जीएम हो सकता है भाई. अब मैंने दुनिया भर का डेटाबेस के जीएम्स तो नहीं देखा है, तो यूएस का हो सकता है भाई. और इंडियन ओरिजिन लोग क्या है भाई, कंपनी के सीईओ बन रहे हैं, तो भाई जीएम तो बन ही सकते हैं. No, I don't think there is a GM in US called Anirudh. Come on, I would know that. Harika lost. There's no way she can lose that. He's completely winning, yaar. He's completely winning. So we'll come back to Harika because I think I really want to see this move. मेरा screen hang हो रहा है for some reason बार-बार. And Actually, he has मेरा भी हो taken रहा था. Sahaj. He has taken. Nice. He goes Rook F7. I think he has calculated the whole thing, yeah? Yeah, Chad, it is about to be over. Harikrishna is about to win the final game in the open section for Team India. We are about to see a 4-0 score. That will be amazing. 2.5 minutes for his opponents. Our time to nahi hai unke paas. This is amazing. By the way, 69 is a strobogrammatic. No, I don't even know what that means. But come on. I think, Let's go, Harikrishna. I think that makes sense. Yeah, Anisha ji mod banane kyun bol rahe? I thought you didn't want to be a. I thought you didn't want to be a mod. What GM number is Sahaj? I was 28, I think, or 29. 28 or 29. Sahaj, when Manisha wants to be a mod, do it now. I don't think Sahaj bhai bana sakte bhai. No, I can't do it, bhai. I can't do it. It has to be Sahil bhai. Also, Anisha, when it was my turn to root for a mod, it was you. And now Sahil bhai will never trust me again. So thank you. ये क्या है भाई? Because just dropped a video analyzing iShow speed playing chess. Of course he will, भाई. The comment link is not working. क्या बात कर रहे हो भाई? It is working, यार. It is indeed working. तुमने गलत लिंक किया है भाई. It is. You will have to log into Chesscom to access it. बस यही है. You have to be logged in, I think. So login करोगे तो you will reach a chessboard, and yeah, you can then join the match. I just tested, by it's working. Come on, Nice. let's go. 1 minute है opponent के पास. It's about to be over soon. Okay, his opponent has what? Less than a minute on the clock. So I think he will play very, very fast now. He has had enough time to think. Oh, we have Amruta in the back. I missed her. Was she like recording? I think so, yeah. I think so. अच्छा. By the way, chat, not to forget, Levi, do check कि यार कल से वो cams का अगर कोई तरीका है क्या कि we can sync it with the board. That would be amazing. Like we can just ask the team there कि वो delayed क्यों आ रहा है. Friday से होगा most likely, but as expected. But just good to just ask that question. Pinned comment is not showing it as a hyperlink. भाई hyperlink की तरह नहीं है भाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई तुम क्लिक नहीं कर सकते. रुको, मैं तुम्हें लिंक की तरह भेजता हूँ भाई. रुको. This is the link, भाई. This is where. And now I think he pushes b7. ये लिंक ही है ना भाई. वो लिंक बैठा नहीं यार. हाँ, लिंक बैठ नहीं रहा है भाई. नहीं, वो नहीं है. It doesn't start with www actually.
It will only start with go, not to. You This is only the- gave Niribai's tournament links to basically roast him. Now you can see it as a link, chat. Now you can see it as a link. So that's the link, bhai. Yeah. Now I've replaced the pinned message. You can go there and register for the match. And by the way, chat, Harikrishna is converting the game with flawless accuracy after bishop f7, rook f7, rook f7, king f7, pawn to b7. And I think it's time for resignation pretty soon, Sahaj. By e2, let's just give a check and queen. Queen h5 check. Yeah, that is normal. King g7 and queen. I think that's just a win. You know, also, by the way, if you queen first, I'm guessing there is queen f1 check. And yeah, because that kind king of is g4 pe, yeah. by king g4 pe h5 mate ho rahi hai. That's a mate in 3. Yeah. So if you take I queen with check, and black is the first who checks, and then black is better. And if Black king is g4, winning. Black is winning. black is h5 winning. queen. And इस पे h5 check, king यहाँ पे, and I don't even take the queen. I can just mate you. So Hari will not draw this. He will lose if he doesn't play queen h5. There's one drawing move, king g2, but I think queen h5 should be played. Let's go, Hari. And he plays it. He plays it. The game is winning now. On the board. Nicely done. Nicely done. Easy. Harika won, by the way. Can we go to Harika's camp quickly? I think then we'll go to Hari's camp. Let's go to Harika's camp because she has won the game after b7, bishop a7 check, king e4, g6, stopping king f5, knight c6, and that is the end of the game. And the women's team ends up winning 3.5 half, Sahaj, by pretty convincing score. I think 3.5 half here, na? I think Tania was the only one who drew. Yeah, 3.5 half is a lot of time, bhai. That is crazy. That is crazy. I think that is exactly what we thought, no? In the women's section at least. 3.5 half was our prediction. So that's completely spot on. Great win by Harika there. Amazing victory there. At one point it was close, but she converted it smoothly at the end, and that is 3.5 half in the women's section. The chat, time to go to Hari's game, the final game, and Hari has also won the game. Let's go and capture that moment because video late होने के फायदे तो हैं कि भाई कई बार extra capture कर लेते हैं. And that is the women's section, 3.5 half. Great performance there, by all players. And there it is. And I think we'll just see the resignation incoming very, very soon. Okay, he plays e2, and now queen h5 check is going to happen. Okay, I'll tell you, he will make the move at 5:35 on the clock. Chat, मैं आपको बता रहा हूँ. Chat, look at Hari's clock. He will make the move at 5:35. How crazy it is that I already know this number. Watch, it will be 5:35. But chat में किसी को नहीं पता हो ना कि if no one knows how I'm doing this, then उनका दिमाग will be like, wow, I can't believe you that you're able to predict it so well. Look, chat, 5:35. साज भाई अपनी दुनिया में आप हीरो हो ना? नहीं भाई, अपनी दुनिया में हर कोई हीरो होता है भाई. लव यू भाई. Of course, भाई. By the way, I think Queen h5 check on the board, and it's time to resign for his opponent. And I can tell you, he will resign at 0:56. भाई पहले ही कर दिया. ये क्या हो गया भाई? Clock चल रही है. And that is victory for Harikrishna there. He wins the final game in the open section. And that means the Indian team has won 4-0 against, well, a pretty strong Iceland team, I would say. Tough competition there. At one point, it was not clear कि हम जीतेंगे भी नहीं जीतेंगे, but at the end, smooth conversion by the Indian team. And इसके साथ ही 4-0 in the open section, 3.5 half in the open section. Same as yesterday, Sahaj, 7.5 out of 8. Wow, what a performance! Only we have dropped just half a point. I mean, that's just insane to think about alone. Yeah, and Harikrishna analyzing the game with his opponent there. And Sahaj bhai, क्या ही मस्त था. And US का मैं एक बार update जरूर दूंगा कि US के तीनों board top 3 जीत चुके हैं, and somehow Dominguez won that pawn end game. Wow, he won it. Yeah, he won it. Ooh, and this is the final position. And Ray Robson is still playing. I would say this one will probably be a draw though. इसके साथ ही chat, I think this is day 2 of the FIDE Chess Olympiad coming to an end. And India is in great form. बहुत बढ़िया चल रहा है सब. Open section, women's section. In fact, open section तो half a point भी drop नहीं किया. And this is amazing news. You can see 4-0 against Iceland. And कल हमारा पहला जो top seed होगा उसकी क्या rating होगी, साज भाई, क्या लग रहा है?
I think 26-30. No, 26-60. So that means Saj bhai, tomorrow we will already reach a stage जहां पे top seed का जो second player जो opponent होगा, he'll only be like 100 points rated below him, right? Yeah, basically. So tomorrow is going to be a tough match, I think, for the Indian Yeah. team, because now, if you thought round 2 was easy, then just wait. And Sahil bhai correctly mentioned last time that Olympiad एक ऐसा tournament है जो हर round के साथ it gets more and more and more difficult. Yeah, So it will get we difficult. have to stay tuned for that. And Chad, not to forget, I don't know कल हमारा नॉर्वे टाइप से पड़ेगा कि नहीं, but कल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होगी एंड परसों से तो वी विल स्टार्ट फेसिंग दीज टॉप टीम्स, चाहे वो नॉर्वे हो, नेदरलैंड्स हो, तो इट विल गेट टफर एंड बड़ा मजा आने वाला है. सो वी आर गोइंग टू बी देयर स्ट्रीमिंग लाइव द एंटायर मैच. एंड चैट, हम मिलेंगे कल सेम टाइम 6:15 PM के आसपास. तो कल का ओपोनेंट आज रात को पेयरिंग आएगी चैट, सो यू कैन चेक आवर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे हम बता देंगे हर जगह किससे मैच है, एंड एग्जैक्ट बोर्ड पेयरिंग्स, मैन टू मैन मार्किंग क्या है वो कल आपको पता रहेगा. प्लेयर्स को भी नहीं पता होता कि उनका ओपोनेंट कौन होगा अंटिल 3 hours बिफोर द गेम. साज भाई, इट वाज प्लेजर स्ट्रीमिंग विद यू अगेन, एंड हम मिलेंगे. जो किंग्स खड़े हैं व्हाइट स्क्वायर्स पे भाई, कल भी ऐसे ही इंडियन प्लेयर्स के किंग्स साथ में विनिंग पोजीशन पे हो. मिलते हैं कल चैट, सेम टाइम सेम प्लेस. Take care. Good night. What's the best way to follow any chess event, from the World Chess Championship to the candidates, the Speed Chess Championship, Title Tuesday, and so much more? Chess.com/events has all of the top chess tournaments played both over the board and online. Analyze and review games from the world's greatest players with live commentary, cloud analysis, Opening Explorer, and table bases. Find all the key event information, including schedules,